like a fucking word. I know how to show my work. My homies sliding back and forth. We dropping hits back to back like we on a tennis court. You can hang when we riding now, cause your height too short. Curtis with the AK-47, put him in the dirt. Mad disrespectful, slide on you with the block that hurts. Make you drop your colors, fuck a gang. Mine came in first. Money longer than the rope. Serving yoke for the low. Put a bag on your head and buy your bitch a Gucci purse. Pull up to your hood like what's good, yeah it's demon time. Always have a two, act the fool, yeah it's demon time. I shoot faster than Lucky Luke, yeah it's demon time. Leave your man shook when it's demon time. Why you even talk too much? You know I ain't trying. You know that I keep it real, I ain't lying. It's okay to be scared, man, I'm terrifying. I'm a bad guy, I leave your family Man, crying. these wanna be rappers and all these wanna be gangsters. I'm the realest in the game and I swear it ain't changing. I got my brothers on my back and now I'm taking them places. They've always been there for me when I was down, going through changes. You can't never tell me shit cause I've been dragged through the mud. I've seen and done a lot of shit and it was off of my blood. I came a very long way, man, I didn't know who I was till I jumped off the porch and introduced to them guns, mills. Pull up to your hood like what's good, yeah it's demon time. Always have a two, act the fool, yeah it's demon time. I shoot faster than Lucky Luke, yeah it's demon time. Leave your man shook when it's demon time. Why you even talk too much? You know I ain't trying. You know that I keep it real, I ain't lying. It's okay to be scared, man, I'm terrifying. I'm a bad guy, I leave your family crying. Hello guys, good evening. कैसे हो आप लोग? नमस्कार everyone. How are things with you all? Hope everything is good and fine. And you all are doing good. बहुत लोग हैं आज. साला मसाला नहीं मिलेगा. RP होगी. Good RP of DOJ happened. Really nice one. So कैसे हो आप लोग? How are things? Hope you all are doing fine and fine. Good. Life is good. How's life? Guys, I'm sorry I was late because I forgot I was supposed to stream because I was talking to Keg and we spoke, I think I at least take 1 hour, 1.5 hours we spoke. We were just discussing about the RP and all these things and we were having fun. Understanding क्या चल रहा है सिटी में और क्या करते हैं, कितना छोटा इमोशंस लेके बैठे. We were like laughing on the things for last 11 months में क्या क्या हो रहा है और why civilians are also not feeling to do RP, understanding that and maybe भूल गया streaming है बोल के. So just now I told Kega that I have to stream and that's the reason I'm sorry I was late for that. इसलिए मैं थोड़ा late हुआ. But I really tell you we came up with a lot of things of 4.0 में कैसा होना मांगता है. And he's right, he's very much right. What he said and everything and all those things. But we really had fun. मैं बोलता ऐसे हंसे हम लोग on the basis of what people, how they react, how they get upset, how you know छोटे छोटे चीज़ों पे ये करने का वो सब कुछ. We were like just like we were having a good fun on that. क्या करते हो and why what can be the reason why क्यों करते हो and all these things and it was great, it was nice. So I'm sorry we were late for that. So what's going on guys? और क्या चल रहा है? So actually 4.0 should be very different guys. उसके लिए हम लोग को I am thinking it should be more RP oriented from the management side. There is time for it. अभी भी बहुत time है height and bold. उसके लिए टाइम है बट इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट कि वो कैसे होना मांगता है, कौन लोग खेलने मांगते हैं 4.0 पे, कितने like who should be deserving to play that RP of 4.0 later after all the experience of 3. गैंग्स कैसे होना मांगता है, उनका बिहेवियर कैसे होना मांगता है,
And all those things, you know, are very important to be spoken in the next 4 months, like before going forward. And it's already started. Guys have already started. Even admins have started talking about it, like how to, like, you know, do things. These last 3-4 months will be fun. उस पे हम लोग अभी बहुत fun करने वाले हैं. वो तो हम लोग ने plan किया है. We will have racings. I have told you all that customized racings होंगे अभी. RKD will be pushing customized jobs for each gang. So each civilian कोई भी अच्छा दिख रहा है उसको एक mission देगा कि आपको अभी एक कार boost करके लाना है. He'll organize the race as puppet master, and that guy has to initiate that race. And all those things, and some events, singers. We want to attract some singers from outside city to get them to make some, you know, things entertaining for others, to reform in some businesses, give them more bow and all this. So things on that we are working for the next 4 months. Or new update bhi aayega, so we want to do those things. But yes, we have already decided, guys. Let me tell you straight. After the last meeting, what happened with me and all those things, after that, I am also not feeling that well. आज मेरे को थोड़ा एक मन है बात करने का. For last 2 days, I was feeling very sad on things. My mood was not okay. What happened that time? I was still, you know, upset with what I said. क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं कहने के लिए. मैं नहीं कहता हूँ चीज़, पर मैंने उस दिन किया वो चीज़. So I was very upset in what I said. कि ऐसा नेक्स्ट टाइम और टेम्परमेंट मांगता है, पेशेंस और पेशेंस रखना मांगता है. उस चीज़ पे मैं थोड़ा ध्यान डाल रहा था. So after that, anyway, most of the people have decided from admin side, like, you know, better we will, next 3 months we will judge people on all the gangs or whoever it is, that do they deserve to be in 4.0. Everything. We will not take much tension now. हम लोग टेंशन वेंशन नहीं लेंगे. हम लोग उनके बिहेवियर को देखेंगे. अगर उसका बिहेवियर, अगर सब कुछ इतना हम लोग सिखाया, इतना हम लोग बोला है, वो हिसाब से वो लोग उनका बिहेवियर अपने आप चेंज करते हैं, वो लोग थोड़ा मेहनत लेते हैं कम्युनिटी को अच्छा बनाने के लिए, नो पिक्सल की सर्वर को अच्छा लेने के लिए, देन पॉसिबली दे डिजर्व टू प्ले ऑन 4.0. So all these things we will be looking into. That's what we will go ahead with most of the things, because we don't want to fall in the same category of those things. We don't want to repeat the same mistakes what we did here now. No, see, guys, they don't deserve, and that is not the main thing. A human being should understand that to his own character. Hi, Ratsi, thank you very much. Shubhu, thank you very much for joining. For me, it is important that I have to understand that am I the character like that? What I said. वो मेरे को पहला देखना है. उसके बारे में मेरे को नहीं सोचना है वो क्या है, वो क्या नहीं. वो मेरे को सोचना है कि मैं ऐसा हूँ, जो मैंने किया वो सही है. That is that my character? Do I want that character to be? Do I want to be like this in my life? वो पहला करेक्ट करना है. So that's the reason I can't accept it. मैं ऐसा नहीं हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ मैं, और नहीं करना मांगता था मेरे को. तो उसको पहला करेक्ट करना पड़ता है. सामने वाले को मैं करेक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो उसका वे है देखने के लिए, वो नहीं कर सकता. बट दैट इज द मेन थिंग व्हाट आई एम लाइक, यू नो, आई एम ट्राइंग टू टेल टू फोकस, लाइक, यू नो. So let's not think on what they did, who did everything. No, HOA, guys, is not left us. HOA is a gang of NoPixel. वो गैंग और किधर का नहीं, वो नाम NoPixel का है. HOA, हॉक्स ऑफ अनार्की. तो वो तो उधर ही होगा, उनका कस्टमाइज चीज़ें हैं बहुत उधर. वो माइट अभी राइट नाउ बॉस बोलता है, वो पुराना प्लेयर, वो लीड कर रहा है उनका. बट ही इज स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच एज वीकनेसेस वट एवर इट इज. नाउ इफ ही कैन अचीव that HOAs, these people, whoever will be the new guys of theirs will be good. वो सही आरपी करेंगे, वो उनके आरपी के हिसाब से लोगों को कंटेंट. अभी मेन चीज़ हम लोग देखने वाले कि कौन आदमी सामने वाले को ज़्यादा का, हम लोग वो नहीं देखने कि वो खुद के लिए कंटेंट कितना निकाल रहे हैं. नहीं, हम लोग अभी ये देखने वाले वो सामने वाले को कितना कंटेंट दे रहा है, उस पर हम लोग जज करेंगे. So even this HOA guys are doing that and all this, that team might be there in next 4.0. But people who don't do that, they will be not given the chance of again to be a gang in this server or something. Main चीज़ ये वो है.
TLMC, I don't know how you all know they are leaving. Harsh might be. How you know they are leaving? Harsh, that's what I want to know. आपको कैसे पता चला TLMC are leaving? No, I just wanted to know how you know that TLMC is leaving because I don't. I know I've been told now that they don't want to because their problem is their people are not coming or something like that, and they have less people and they don't want to do on that RP. So I told them that's a good thing, and you can't do this. You just go, doesn't stick with it. You take a break. You finish that this because you have to. Might be another person who wants to real TLMC RP. He can take over these things. So समझा पर आपको कैसे पता चला वो नहीं बताए. Is there some TLMC streamer who told openly why? या वॉकर ने बताया. अच्छा अच्छा अच्छा. तो वॉकर ने रीजन दिया होगा ना, क्यों रीजन क्या दिया था वॉकर ने? इट्स नॉट अबाउट लिविंग. टीएलएमसी में ज़्यादातर एडमिन ही है, और कौन है वो लोग. वो लिविंग का बात नहीं है उनका. दे वांट टू नो टेक अ ब्रेक बिकॉज दे कैन नॉट, दे आर बिजी विद देयर थिंग्स, दे कांट ऑर्गेनाइज. हाँ उनका वही प्रॉब्लम है इसलिए वो दैट्स बेटर. हाँ ईश्वर के लिए रहते हैं एंड ऑल दिस एंड दे आर बिजी. यार मैं वो बताता था उनको, मोस्ट ऑफ उनके लोग बिजी होते हैं क्योंकि वो लोग एडमिन का काम कर रहे हैं और थोड़े पुलिस भी है, तो उनको फोकस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़ों पे. एनीवे और एक न्यूज़ बताता हूँ. मेन न्यूज़ आई विल मेक नेक्स्ट 3 मंथ मोस्टली आई विल बी नॉट. डीओजे अभी रेस भी है, आज केस है देखो. डीओजे में वो लोग जज होंगे कौन है, अहमद और ये करेगा. मैं नया कैरेक्टर ला रहा हूँ. आई थिंक पुलिस रिक्वायर्स अ लीडरशिप. तो मैं अभी एसएएसपी का कैरेक्टर ला रहा हूँ नया वाला. बस पुलिस को लीडरशिप कम हुई है, पुलिस को लीडरशिप करना है क्यों, और ये गलती मेरी है. आई थिंक आई शुड हैव मेड अ कैरेक्टर ऑफ द स्टार्ट ऑफ नो पिक्सल अ पुलिस कैरेक्टर and started reforming the whole city through that character. If I had done that, by now most of the police would have understood what RP we expect from them in NoPixel. वो मैं सबसे गलती है मेरी वो बड़ी, वो पहले दिन ही करना था पुलिस के, बिकॉज ऑल द सर्वर एडमिन्स व्हाटएवर मेन दे अंडरस्टैंड द आरपी सर्वर्स एंड कैन हैंडल द एवरी आरआर थ्रू द पुलिस कैरेक्टर्स. वो मिस्टेक हुआ है मेरे से बहुत बड़ा. So this is what we have to. I have to do now. Like today, all will understand on RP what exactly went wrong in yesterday's raid or whatever in the DOJ. Oh, what went right? You all will understand that on RP today, like normally, if you go to see, because इसका उनको they require that a good direction. I'm making it this week only. I'll stream when I make it. I'm making it now. I have to sit with Hans and learn most of the things to put everything in frame guide. And then Hans also is little busy with EFT. तो उसको बुलाना है और बाद में मैं I will do it this week only guys. एमजी और स्कॉर्पियंस का रिव्यू करने का जरूरत भी नहीं मौलिक, because they both have said together they are doing the now no more review nothing. Anyway, Raz is looking now. बट नाउ नो मोर रिव्यूज. नाउ उनको बैठना है, उनको सॉल्व करना है. हम लोग सिर्फ जज करेंगे कि कौन आदमी क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे अभी. क्या आवाज है? ओ
CG, I was saying in Mazak Mazak, it's not about Indians don't deserve. Indian deserves everything. Indians also good, like, have invested in RP for so many. They deserve NoPixel also. But yes, RP players had their own problems. That's the reason. But it's not because of NoPixel, because of the understanding of RP and understanding themselves. That are they doing acting or are the real person of theirs in the city? When you know you are doing acting, nothing offends you. When you know that you are really in the city as what you are, then everything offends you. What happens? No jumping back, Aditya. No jumping back in 4.0. It's a simple thing. 4.0 is we have already decided only those people who have now shown in coming 4 months what is the RP and how they have given RP more to other guy, फ्रंट गाय, वो एक डिजर्विंग है और नए लोग जो आरपी नहीं खेलते थे, जो नए लोगों को आरपी खेलना है आगे, माइट बी सम पीपल न्यू गाय व्हाटएवर, उनके लिए जगह है. गए वो डिफरेंट बात है, वो गए हो गया, दैट इज ओवर. उनके लिए हम लोग वापस ओपन नहीं ये नहीं कर रहे टाइम वेस्ट. उनको आना है वो आएंगे, वो करेंगे, बट उनके लिए वो नहीं. अभी आगे से देखना है, अभी आगे नए लोग जो आएंगे उनको सिखाना है नो पिक्सल क्या करना है, क्या करने का है. हमको मालूम है, अभी एक्सपीरियंस है एडमिन्स को कैसे करना है, और जो लोग हैं उनको अभी आगे से दिखाना है कि दे डिजर्व टू बी इन नो पिक्सल 4.0. वो चीज़ें हैं. ओके, वी आर इन द सिटी गाइस. गाइस, उसी को कुछ कोई हेट नहीं देगा इधर. प्लीज कोई भी होने दो, आप लोग किसी को इधर से जाने के लिए नहीं बोलेंगे और आप लोग किसी को गाली नहीं मारेंगे. कीप दैट फॉर योर सेल्फ. एंड आई डोंट वांट टू गेट एंग्री टुडे. आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय थ्रोट. आल्सो इज पेनिंग. आई एम गेटिंग सो थ्रोट, सो आई हैव अ प्रॉब्लम. आई डोंट वांट टू गेट एंग्री ऑन एनीथिंग ऑफ योर. आई वांट डू आरपी टुडे. नाउ डोंट डिस्टर्ब माय आरपी टुडे. I don't want you all to anyone talk about anyone else and tell anybody to get off. And I don't want you all to tell me situations which I don't want to get interested. मेरे को RP करना है आज. You all enjoy the RP if you all want to watch. Otherwise, please don't watch. अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरे को कुछ करने को बोलेंगे ना, आज मैं उसका ऑपोजिट करेगा. मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग. हेलो. यस, तो रेसिंग करना है क्या? आपको big subscriber.
मेरे स्प्रे मेरे मैप पे स्प्रेज नहीं थी जज क्या करें Redline where Redline didn't leave the server James. Redline is playing well. They are doing really good RP. BSK उनका spray. They are doing the RP because they don't have much streamer. उनके पास एक ही streamer है इसलिए आपको उतना नहीं दिखाई देते पर वो लोग अच्छा RP कर रहे हैं उनका stream ये कर रहे hacking कर रहे bank robberies कर रहे but they are doing really good RP. They don't have one ticket opened on them. I'll tell you that. Redline has never opened ticket. Neither people ever opened ticket on them. But they are doing good RP inside. MS is doing good now. MS is now doing good, I think. Cosmic is looking after Cosmic and Days. Days and Cosmic, both of them are keeping very good eye on the EMS. And it's going well. EMS also is coming. I don't know if they are coming. I think they are coming in the city. They are coming in the city also, and people are also those. They are getting. Oh, on the way, Uwu Cafe will come now. We'll buy food at Uwu Cafe. रास्ता सही है ना? ओ फक हम लोग ऑपोजिट जा रहे हैं इस बताना होता ना गाइस रोड इधर है हम लोग जा रहे हैं कहाँ देखो S plus like no meta okay. Guys, don't ask me who left the server. Oh fuck. Sorry ladies. Sorry. Cycle is don't get the bunchy, okay? Like हाँ guys, कोई सर्वर लीव कर रहा है मेरे से मत पूछो वो उससे पूछो वो लीव कर रहा है तो why all asking me? Don't ask me. It doesn't make any sense. You are wasting your time. Mostly Keg, Daddy I have to speak to Keg I spoke to, it's like 4.0, we are coming with a good RP of Cerberus, we will be launching Cerberus RP from the day one, powerful Cerberus RP. Yeah, I can do cycle fast too. Yeah. I have 4.0 not this month. 4.0 is a good time. 4-5 महीना है अभी और एक अपडेट आएगा इसमें 4.0 is a new server guys. The new NoPixels complete everything changes. Features will be there but the server whole thing will be different. Hello, sir. Hello. It will be a complete different. Like a cartel, massive cartel. We'll keep a checkpoint on gangs.
जो बचते हैं ना, गाड़ी ठोका तो बचते, ए मेरी गाड़ी कैसे ठोका आप, कम ऑन, बैकअप आ जाओ, उनको संभालने के लिए सबरेस इस पर। हाय गाइस, गिव मी अ मील एंड समथिंग टू ड्रिंक। भाई साइकिल लॉक रियलिस्टिक, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक है मेरे साइकिल पे। या हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी तो आ रही है। सर आपको इनकी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरे को तो आ रही है। आपको नहीं आ रही आवाज़? हाँ अभी आई। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हाय। हाँ, हो एक गया मेरा। बेवरेज और खाने के लिए मैंने- कुछ एक इसमें डालो आपके बॉक्स में। मतलब क्या लेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक लॉक है मैम मेन्यू मिलेगा क्या? सर और आप कुछ भी दे दो, समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग, आई हैव टू लीव फास्ट, गिव मी समथिंग टू ईट एंड समथिंग टू ड्रिंक। मेरा Sir, ले can लो I आप। make a ये लो। meal for you? या प्लीज डू इट। Yeah, sure. चलो इन जनाब के लिए मैं पे करूंगा। मैंने यहाँ पे रखा, आप ले लो। Sir, there you go in the Sir. tray. या हाउ मच? मैन इन द जैकेट आई विल। हाँ क्या हुआ? पीछे मत रखो यहाँ कुछ भी, मैंने रखा है कुछ, आप ले सकते हो। Excuse हाँ, me, वो sir. चलो, मेरे आपके को लिए जाना यहाँ पे है। एक मील रख दिया। हाँ कितना है वो, चार्ज करो मेरे को, हाउ मच इज द प्राइस? It would be 350 per meal. You charge अरे me ये already? जज हैं शहर के। Oh, nice to meet. No, there's no active purchase. Yeah, nice to meet you also. सर मेरे को कर, ठीक है मैं कर दूंगा पे आपके लिए। नहीं, आप क्यों पे करेंगे? नहीं सर, हम पे करेंगे, आप हमारे लिए इतना काम करते हैं। आप कुछ काम नहीं Thank करते you, आप sir. लोगों के लिए, मैं सिर्फ मेरा काम करता हूँ जो गवर्नमेंट ने बताया नहीं मेरे नहीं को करने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट का काम हमारा काम। लेट्स गो। हो No, गया। there's no active purchase guys. इधर नहीं डाला है आप लोग ने, प्राइस डालो। आप शायद उन्होंने आपके भी हाफ पे कर दिया, आपकी मील यहाँ पे है। नहीं, वो नहीं पे कर सकता है, मैं नहीं अलाउ कर सकता हूँ किसी को पे करने के लिए, मेरे को पे करना पड़ता है, वो करप्शन में आता है बाद में। Yes, exactly. मैं आपके लिए दूसरा बिल बना देती हूँ। आप ये आपकी मील ले लीजिए, फिर मैं आपके लिए और एक पेमेंट दे देती हूँ। हाँ प्लीज। कोई इतने सिद्धांतवादी किसी को देखा तुमने कभी जिंदगी में? I think RP need mature people who doesn't mix OC and RP rather than carry mature. अभी देखा ना। There you हाँ, we are go. coming with I'll go another get thing it. guys. Get your सुनना meal है, fast. मैं और क्या नहीं दिया। तुम जैसे ID चिंदी कार्ड लोग की वजह से जिसको भी गैंग में आना है वो रियल आधार कार्ड देगा आपका, उसका एज होना मांगता है 24 एंड अबव, 23 24 अबव। अबे चिंदी लोग, तुम हो साले हमारा खाना लेके भाग जाते हो। आओ आप भी हमारी जॉब के बीच में आ रहे हो। Guys relax। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट्स द गुड नेम, यहाँ पे ट्री पे सर। अच्छा नो ए डालो पहला, पुट प्राइस ना, मैं पे करता हूँ और बाद में खाना लेता हूँ। मैंने एक तो दे दिया आपको वापस। क्या दे देती। नहीं इधर ये वाले मेक पेमेंट पे आपने प्राइस नहीं डाला इतना मेरे को। ना Forgive me, today is my first day. नो इश्यूज, उसको मालूम होगा ना। हेलो हीरो, सर आप दिया अभी। सर आप यहाँ पे करते नहीं पे नहीं किया मैंने। हाँ। क्या हुआ? यहाँ पे करते रुक जाओ यहाँ पे। इधर भी एक्टिव परचेस नहीं है। हाँ सर अभी करिए। अब आएगा। टैक्स बहुत है ना, 20%, वी रिक्वायर मेयर टू रिड्यूस द टैक्सेस। खाना कहाँ है? यहाँ पे ये ट्रे में सर। Thank you very much guys, see you all later. Okay, I have to go for a court case. Yeah. Have a good time. Have a good day. गाइस एक ही जगह पेमेंट लगाया करो, एक ही जगह वो लगाया करो। क्या है? Way of life. You guys. Hello. कैसे पहचाना तुमने मुझे? हेलो सर। मैंने तुम्हें मास में पहचाना। बताओ, पहचान नहीं सकते हम मिस गुड्डी कुमारी को मास में? मिस गुड्डी कुमारी को तो पहचान सकते हैं मास में। कैसे पहचाना बताओ? आधार कार्ड होना। हाँ आधार कार्ड होना, वेरी रियलिस्टिक। बताओ, मेच्योरिटी नहीं है तो।
नहीं था ना वो। क्या हुआ? बड़ा रेस्ट। देखो आपने मेटा करके बताया मेरे को, कैप्स लॉक बताओ, फास्ट ड्राइव कर सकते, बट देन यू गेट टायर्ड ऑल्सो वेरी फास्ट। Link Aadhaar card to Discord for gang rule. इधर नहीं हो, और 5 साल के बाद 6 साल के बाद 30 पे पहुंचेगा। That time they'll be married, they'll be having kids, they'll be working. आरपी बोल के चीज़ उनको नज़दीक भी सुनने को नहीं मिलेगा। Also with a selfie with Aadhaar. मुँह अच्छा पूरा। No, you can jump. Cycling, you can do a lot of things, I think. You can do stunts on cycling. Hi guys, good evening. देखो गाइस, किसको देखना था वो लॉक? ये देखो देखो, वो चेन के पीछे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है, वो ऑटोमेटिकली लॉक होता है। हेलो की भाई ठीक, ये कभी उधर भी कर लिया होता कि आप यहाँ ना खड़े होते। ओए आईडी, गुड इवनिंग। कुछ बताया था जॉय भाई ने। तुम्हारा मैसेज ही नहीं आया मुझे। नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है पंकज, क्योंकि वो छोटा होता है ना लॉक, साइकिल का लॉक है ना, गाड़ी का लॉक थोड़ी है, छोटा है बहुत, वेरी स्मॉल, आपको इसलिए नहीं दिखाई देता। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक लॉक। और एंगल चेक करो किस तरफ, समझ रहे हो? एग्जैक्ट। वो आज मेरे को ये भी, अरे एलएसबीएन में मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है, कर रहे हैं क्या वो लोग इंटरव्यू आज? Listen, Chief Justice. Why you're blocking my road? Yeah. So listen, I actually wanted to get a Class 2 license. Is that possible? No. Class 2 license for what? For security firms? Yeah, it's for my security because I'm being hunted by a lot of people right now, and I roam off. You didn't understand what is a security firm and a self-defense. Self-defense, you get your gun. Security firm is a company which sets up a security for state. Oh, security firm. I thought you said it's it for your security. Like that, everybody will come tomorrow and ask for a class to sing security. Yeah, that's true. That's true. It's normally for people who are forming a security firm who will give security for, might be mayors, all those people. Them it is. Got it. I just wanted to confirm that. You can, according to the 4th Amendment of the Constitution, you are allowed to use only the weapon which you can buy at the armory. The MRPD, yeah. Got it. Not MRPD. At ammunition shop. When you are on duty, you can use your MRPD guns, but when you are off duty, you are only allowed to self-defense with a gun which you buy from a gun store. Got it. MRPD gun. Yeah. Arey, Deepak! But isn't there California law that says, we can use them for duty? California laws might be saying that, but our state law also says that. Because we work on the 4th Amendment of the Constitution of this country. Yeah. Hey Deepak. पाजी, आई तो लौट है। मैं पहले भी आता रहा हूँ, आप आते नहीं थे। कैसे हो? अभी ठीक है जी। कहाँ गया था? गाँव गया था क्या? मैं सदमे में था जी। मैं दुबई गया था। दुबई मैं में आपको गया? बताया था ना, वो मेरा खड़ा नहीं ना होता था, तो उधर डॉक्टर इलाज। क्या इलाज?
हुआ नहीं, फिर भी ऐसा ही है, ऐसा ही है अभी भी। ऐसा ही है। मैंने सुना था कुछ कोई एक बाबा घूम रहा है सिटी में जो चूरन चूरन कुछ होते हैं वो खिलाता है और लोगों का बाद में वो ठीक ये बीमारी ठीक होती है। नहीं तो नो प्रॉब्लम, मैं ईएमएस को बुला के आपको कुछ देता हूँ बोलने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ईएमएस को बुला के मैं पूछ सकता हूँ कुछ दवा है तो आपको करने का कुछ। रुको सर, बाद जी में। इधर एक मिनट, इधर देखना, हाँ। पाए लागू है जी। अरे अरे अरे, बहुत दिन के बाद। मिस्टी अच्छा, जी। केस खत्म होने के बाद हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ओके और ये ओके। सर 2 मिनट बात कर, आप अगर इसके फ्री हो। रीट वाला देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सर इधर एक चेम्बर में आ जाओ। वी कम टू द चेम्बर। अरे हेलो, पहली वाली फील आई ना एसवीआरपी की बागा को देख के। या बताओ, बैठो मैं ये कह रहा था, मैंने एक बैठो बैठो। थैंक यू सर, मैं ये कह रहा था मैंने एक रेट पिटीशन फाइल करी है सर। वो ना आज एक केस हुआ था जिसमें एक बंदे पे बेफालतू में गोली वो चली मेरे को थी। क्यों बता रहा है? आप डीए को बताओ ना। नहीं सर, वो मैंने, आप भी हो सर तो आप अगर केस अगर देख लेते तो सर अभी सही मैं नहीं रहता। होगा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ अभी। और दूसरे जज होंगे, अहमद बोल के एक लड़की भी ओके आई नया जज, और एक जज है, अभी वो लोग देखेंगे। एनीवे आप डालो पिटिशन उधर, वो लोग आपका ये करेंगे। एनीवे इज इट अ रीट पिटिशन अगेंस्ट द पुलिस? यस यस। हाँ तो वो डीए देखेगा ना, वो डीए को लिस्ट करना है। अगर वो आईए में जाएगा तो आईए में जाएगा, अगर वो डायरेक्ट लिस्टिंग पे आएगा तो लिस्टिंग पे आएगा डायरेक्टली। वो देखो डीए आई ओके सर, है। वी एक वी हैव और अ सीट। सर एक और रिक्वेस्ट है कि कभी भी जब स्टेट की साइड से जब भी केस होता है ना, तो स्टेट की साइड से कोई भी फाइल नहीं मिलती हमें, ना एविडेंस, थोड़ा जब तक वो लाउड हो जाओ। बिल्कुल लिस्टेड नहीं वो हो। आप पुलिस को अभी ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग परसों कि हाई उनका हाई कमांड आपको रिक्वेस्ट करना है, आपके लिए ईमेल का चैनल खोला है, उधर रिक्वेस्ट करो। वो हाई कमांड डालेगा, नहीं डालेगा तो आप आपके डीए को बताओ ऐसी ऐसी चीज़ें, नहीं तो जज को बताओ, बाद में वो एक्शन लेगा उस पर। हाँ जी सर, कि मतलब पूरी उनकी तरफ से भी फाइल आए ताकि हम भी पढ़ सके ना, क्योंकि हमसे तो वो मांग लेते हैं और जब उनके नंबर अरे आता है तो उनकी तरफ से कोई टेंशन फाइल वो नहीं बताने का ज़रूरत नहीं मेरे को मालूम है, वो आपका अधिकार आता। है। ओके सर, नो वो अधिकार आप इस्तेमाल करो। हमको मालूम ओके है ना सर, कहाँ थैंक लेना है यू वो। वेरी मच फॉर। हाँ डू यू जी नो सर, वे हाँ जी। एग्जैक्टली यू हैव टू रिक्वेस्ट दिस थिंग्स? यस सर, यस। हाँ उधर रिक्वेस्ट करो आप। Vivi, ओके he सर, has some थैंक यू read वेरी मच petition or फॉर। something. They want to list it. It's against the state. So you can tell. He just sent it, so I'll list it as soon as this case is done. Sound इतना slow क्यों आता है? Okay, हाँ do वीवी that मैम, and see you अगर can. आज ही हो जाता। आज नहीं, हाँ आज तो नहीं, मैंने आज वही आज बड़ा ट्रायल है। पहला ट्रायल वो बड़ा है। ओके आज टाइम नहीं होगा उसका। वो लोग देखेंगे कल एटलीस्ट। Vivi, you see if you can call that other woman judge or something, or you can call another judge. You can list the case and tell your junior to take the case. all right, sir. I'll do that. ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। No issues. So the officers, I shall we begin the trial? The officers are this the The lawyers accused, come for sorry. the other side. This what you call Yeah, I defense. see him on the DOJ. He is फोन भी available, नहीं sir. किया मेरे पास। I think he's outside in the reception area. इसका वॉइस इतना क्यों लो आ रहा है? मोबाइल फोन। Can you be little loud? Your voice was little low. What did you say? Yeah, the defense lawyer is here. He's in the reception area with the accused. Okay, let's start the trial. It's almost late. All I'll right, put sir. the state announcement. Okay. Yes. पुरानी फीलिंग्स गाइस, SVRP फीलिंग। मसाला नहीं, एजुकेशन। स्पेलिंग रॉन्ग कर दिखा। सही है ना?
अरे मेरा यू नहीं चल रहा है क्या? मेरा इसका केस है इस आई थिंक इट्स कौन है वो लोग, वॉलॉक्स का रेड पड़ा था ना, उनका है स्टेट वर्सेस वॉलॉक्स कल का रेड। आज एक मस्त केस है, यू जस्ट वॉच हाउ एक्चुअली पीपल शुड डू आरपी। आई विल टीच ऑल इन थ्रू डीओजे। आज थोड़ा आरपी को कैसे मज़ेदार बना सकते हैं पुलिस वाले और सब लोग। आ गया है, अहमद आ गया। या कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बैठो अहमद। You can join me for the trial to watch how things happen, okay? सर आपकी आवाज़ थोड़ा ऊंचा बोलिए। थोड़ा लाउड हो जाओ। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? ये लिटिल लाउड। आवाज। सर मैं करीब आ जाता हूँ आपके। सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आपका आवाज़ थोड़ा कम आ रहा था। आज आप यू कैन जॉइन मी फॉर द ट्रायल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन ऑन दिस काइंड ट्रायल्स। जी सर। सर मैं ज़्यादा देर मतलब आपके कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊँगा क्योंकि वो सोने जाना मेरे को और कुछ काम है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर दूँगा। जितना टाइम है आप रुको। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, वो थोड़ा एक काम करो, दीपक बोल के कोई होगा कोर्टरूम में, उसको थोड़ा बुलाओ अंदर। सर कॉल करता हूँ ना, नंबर होगा। हाँ, कॉल करो उसको। क्लार्क है वो, क्लार्क। जी सर। सर कॉल नहीं उठा रहे, मैं बाहर जाता हूँ। रीक्स हो जाएगी। सही है। No, I'm not a law student, guys. Okay. अब मैं पानी पी के आता हूँ, guys. थोड़ा पानी लेके आता हूँ। Yeah, it's raining. It's like a monsoon, real monsoon after many years in Goa. Yeah, beautiful monsoon. Heavy raining, everything is green. वो बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस आया है। I need to put a filter actually for the mic. Guys, I should become a professional streamer, right? What do you think? Professional streamer with proper good mic and all these things. मजाक कर रहा था। सर वो बाहर नहीं है, कॉल भी नहीं उठा रहा, पता नहीं किधर गया। अच्छा थोड़ा अच्छा, मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है सर। जाएगा वो, आवाज जाएगा वो। बारिश थोड़े टाइम के लिए आता है और जाता है बाद में। ओके, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट आवर ट्रायल। हाँ नेस बताओ। नेस बताओ।
अभी जो लॉयर आए हैं रणविजय सिंह, उनको वो एम्प्लॉयमेंट ऐप में डालना है क्या? तो वो करो ना बीए को मिलके। ये ना नेस भी सब चीज़ें मेरे से पूछने को आता है। दीपक इधर आ जाओ। दीपक हाँ जी। बाहर जाओ और सबको जो आज के केस के लिए इन्वॉल्व है सबको बुलाओ, बोलो केस स्टार्ट हो रहा है, कोर्ट हाउस में आ जाओ जल्दी। ओके। कोर्ट रूम में सबको बुलाओ। हाँ नहीं मच्छर मैं नहीं मार रहा हूँ श्रेया। देयर इज दैट दिस राइट दैट पर्पल लाइट दैट थिंग नाइट दिस दैट इज देयर सो दैट किल्स नॉट द मॉस्किटोज फ्लाइज एवरीथिंग इट किल्स। तो वो आवाज आ रहा है आप लोगों को। आई एम फ्रॉम गोवा भूषण। मैंने बोल दिया। अच्छा इधर आ। हाँ जी। वो थोड़ा एक काम करो, पानी बानी रखा है ना सबका? हाँ जी। ओके। और आपको याद है वो पुरानी ओथ कैसे लेते थे, वो याद है आपको? ओथ मैं वही पूछने वाला था जी, पर मेरे से डिलीट हो गई तो आजा आजा। आप प्लीज। हाँ जी। हाँ जी। आई माय नेम स्वेयर टू सिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ही था जी मेरे को याद। अभी उसको बोलना है आपको कि हाँ जी। आपको ओथ लेना है और ओथ के टाइम आपको बोलना है उनको, हिंदी में ही बताओ ना उनको। मैं ओके। आप बोलेंगे मैं, वो एक बोलेगा मिनट। नाम लेगा उसका। मैं क्या है? शपथ मैं। लेता हूँ संविधान के ऊपर अच्छा। कि जो भी कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ बकवास नहीं करेगा। बकवास नहीं बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। तो शुरू से बताना जी, सॉरी। मैं। बाद में वो उसका नाम लेगा उस साइड। अच्छा। शहर के संविधान के ऊपर शपथ लेता हूँ। शहर शहर के संविधान संविधान पे ऊपर। ऊपर नहीं, संविधान पे। अच्छा। हाँ संविधान पे संविधान। ऊपर बोला तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। हाँ, संविधान पे शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यस। है ना जी? सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ जी। आपको ओथ लेना है। नेम उनका। ठीक है जी। नेम आप अच्छा क्यों नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं। मैं उसका नाम। ठीक है जी। हाँ। शहर के संविधान पर शपथ लेता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। है जी? यस। है जी। मैं लिख और दी। देखो मेरे पास ना एक दवा है जो ना वो अच्छा दवा जी। से होता है कभी कभी खड़ा, वो मेरे उधर ड्रॉअर में हो सकता है। हाँ मैं देता हूँ आपको, ट्राई आपका भी नहीं करेंगे होता था? नहीं नहीं नहीं। आपके पास क्या है ड्रॉर? वो दवा ना क्या हुआ, कोई आया था इंडिया से, उसने ला के दिया था। वो क्या होता है, वो मिलता है कभी कभी। वो क्या समझो बात, वो इलीगल उसने इमिग्रेशन से लाया था ना, उसका वो पकड़ा था तभी वो लाया था। मैं बाद में बात मेरे करेगा को आपसे। चाहिए। केस खत्म होने दो, वो होगा, मेरे को ढूंढ के देना पड़ेगा आपको। अगर उससे दो दिन नहीं होता है तो बाद में हम लोग ना एक जगह है, वो उधर कहाँ है जानता है? एरिया कौन सी वो पीछे वो देखो नॉर्थ साइड में हो, जहाँ सैंडी शोर के साइड में ही हो, उधर एक थोड़ी एक जगह है। उधर एक ना बाबा के जैसा एक आदमी रहता है, पर उसके पास ना ऐसा मेटल के चीज़ें हैं। वो क्या करता है, गरम गरम लोहे में ना आपका वो
लाइक योर ऑर्गन जो है ना उसको गरम गरम लोहे में डालता है अंदर और उसको शॉक देता है और वो शॉक से कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, आपका ब्लड फ्लो होने लगता है वापस। देखेंगे नहीं बाद नहीं में, मैं हाँ जी बाद में देखेंगे, आ जाओ। बिल्कुल सर सब लोग आ गए। ओके छोटू को कहाँ से आ गया? छोटू गुड इवनिंग गाइस। The accused, please come and sit into that box. The suspects. आवाज नहीं आ रही है। बीवी, जो भी सस्पेक्ट है आपके इसमें ट्रायल में उनको उधर बैठने को बोलो। Correct. चार बंदे दो स्पीकर। All the suspects, can you please come ahead and sit in there? उनके दर्द हुआ इधर पी होने वाली है आज के साथ। यार हटो। अबे निकलो भाई उधर से। माइक्रोफोन यूज कर सकते क्या है? नहीं, दिस माइक्रोफोन यूज। नहीं, वो माइक इधर नहीं है, माइक डालना पड़ेगा दूसरा वाला। नहीं, I it was low, now they can hear. All the suspects are present in the courthouse? Except one win mark. Okay, everyone have a seat and discipline in the courthouse. Today is a very important trial. I want discipline in the courthouse. I don't want anything which will shift our attention away from the hearing or all the things which are happening in the court. So please be disciplined and do not interfere. If anybody wants to talk, they need to come in the witness box and talk. Please do not talk otherwise and make disturbances in the courthouse. So we will open up this courtroom for a trial. The trial which is listed for, it's a bench trial listed for what exactly it is listed for? What are the crimes? Can the prosecution please tell the court what are the charges which they have framed on these people? Yes, sir. वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो बड़ा बड़ा मेगाफोन इधर लगा है। Just a minute while I refer to the case file. Just be loud. Yeah. All the concerned people, lawyers and everybody, just be loud. Your Honor, you can refer to the incident number 5731 for the reference of all the charges. I repeat. 5731. What is? What is this? The incident doesn't even have a name. It says detailed list of items found on each of their properties. I didn't get it. What is the actual title of the incident? Sir, it's a raid regarding Marion, specifically controlled substances. Raid? I understand it's a raid, whatever it is, but where are the charges? Which charges are put on them? Sir, the charge Okay. sheet is attached to the Okay. MDW. Okay. So the raids actually all happened and the charges are framed on Bean Marcus, Damon Bigmas, Ganesh Gaitonde, Liam Parker, Usman Rajput, Raga Jones, Jagesh Kumar. Right? Prosecution? Yes, sir. Next time tell the officers to write a better title. You understand? Then writing this detailed list of items, it doesn't even make any sense.
Title also has to be properly framed in the charge sheet. What is the actual thing? It's a drug trafficking, then right there, drug trafficking, whatever this. Anyway, so one more clarification I require. Did the suspects go through the this? They already faced the sentence, so they are on a bailout. They haven't been processed yet. They are not at process. Okay. So private lawyer, Rangvijay Singh, right? Hello. Defense lawyer. Hello. Yeah. Rangvijay Singh, right? Yes, Your Defense Honor. lawyer. Yes, Your Honor. Good evening, Rangvijay Singh. How are you? Good evening, sir. I am totally fine. Okay, so let's go ahead with the case. Let's open up the first the opening statements. Prosecution, you can go ahead and give your opening statements. So this case is actually built up of previous raids and accusations and arrests that were made on these individuals that are present in the court today. This is not a single event that has happened. It has led up in the court trial today. In the process of trial today, we'll be proving and stating the facts that have led to this raid and the items that were captured, and the charges will be proved accordingly. Okay. Rangvijay Singh, you can go ahead and give your opening statement. Yes, Your Honor. Sir, मेरी opening statement, I'll keep it very short and brief. जो भी अभी इनका नाम मिस वीवी है, राइट? हाँ, जो भी ये चार्जेस अभी बोल के गई हैं कि ये प्रूफ करेंगे. I'm just gonna disprove them. केस याद है ना वो वाला. That's all. That's all gonna be my opening statement. Okay. Prosecution, you can go ahead and tell the court how exactly get your witnesses and the evidences. But wait 1 minute. I am not getting the charge sheet. Where's the charge? Sir, if possible, I would also request a copy of the charge sheet. Where's the charge sheet? What? So the charges are listed on the MDW itself. No, charges are listed. That's a different thing. Where's the charge sheet? How we will know what is the story behind the arrest or what is the actual thing? How will you describe your whole incident? That has uploaded in the sections. No, that is uploading your lab, but why it is not listed in the MDW? The MDW should have had the whole charge sheet, right? What will you give the private lawyer what he requires? Where's the charge sheet? And please upload it. You have 5 minutes. Please do that. Tell your officers to do that. All right, sir. Sorry about. Yeah. Yeah, Malika's case was taken by Razer. That was a very good case. But this is more interesting case. This is a really interesting case because you guys today will watch what exactly RP can explore. How much RP player can explore things to do a great police robbers RP. How they can explore. तुम बाद में बोलना, शांत रहो. अबे फाइट इधर उसमें. बैठे रहे. Deepak, get me a glass of water. भाई वो कनिष्ठ बताएगा, अंदर जाएगा तू बैठ. हाँ जी. पानी लेके आओ एक पानी glass. मांग रहे हैं पानी. अच्छा जी. बैठे रहे. अबे गणेश बताएगा. बता दिया बस. बैठ तू बैठ. अभी कुछ मत. अबे तो सबको बोलने का चांस मिलेगा, शांत रहे.
एक और चाहिए पाजी? नहीं नहीं हाँ नहीं, जी, बस थैंक यू वेरी अच्छा मच। जी। तब जी खाने के आपको, लिए कुछ है तो हाँ, खाने के लिए कुछ हाँ है तो जी, दे दो। आलू आलू। थैंक यू। And she's in the suspect area, sitting there, I think so. Hmm? Yeah, he can sit with a lawyer also. That's not an issue. देखो ये मूवी में देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट अमेरिका में कोर्ट में आपको उनको सूट पहन के प्रॉपर ड्रेस पहन के लाना पड़ता है। ऐसा बेड़ी बेड़ी डाल के नहीं, वो नहीं होता है कुछ। दे ऑल्सो आर रेप्यूटेबल टिल दे आर प्लीडेड लाइक इन हाँ, कोर्ट, सॉरी पूछता हूँ। टिल दे आर कन्विक्टेड। नहीं, इधर बैठ नहीं सकते यार। अरे कुछ खाएंगे आप? रुक जाओ, आरएस सर की बेटी आई है शायद। You don't have to know US laws. You need to know how laws can interpret any part of the world. Simple thing. US का laws आपको थोड़े थोड़े knowledge होना मांगता है। वो तो very small knowledge है, वो rare knowledge हो। That is okay, but mostly you need to understand how you interpret them. वो important चीज़ होती है। ये जिमी के अगेंस्ट नहीं था वो, मेरे को अभी भी डिफेंस याद लॉयर है प्लीज क्लोज योर फोन। अगर आप अपना फोन साइलेंट पे लगा लीजिए। ड्यूरिंग ट्रायल यू आर नॉट अलाउड टू यूज द फोन। No, don't worry. There are metal detector doesn't allow them to get the phone. The lawyers are allowed to get. यस सर। Don't think so, everyone. And the सर cops. सिक्योरिटी गार्ड सब ले लिया। पुलिस ले सकते दिखता है यहाँ। यस सर। I remember that case. That case was that they tased him when he was climbing something. Oh, no, एक vehicle में कुछ था, याद नहीं आ रहा है. But no, it was not Jimmy. They were different police officers, other police officers. And defending was one Nirav Modi, one lawyer was good, and Frosty. How Frosty? Article for that, Aryan, that is knowledge. That is, you have to have knowledge on that. Difference in jury is in America there is jury. Jury decides the judgment. Judge only pronounces the judgment in America. The guilty or non-guilty is decided by the jury. So the lawyers have to convince the jury in America, not the judge. But not in RP. RP we keep judge. Officer leader Russia. Yeah, Russia was involved, I remember. Russia gave up. Russia said no, fuck it. मिस्टेक किया वो लोग, राशन नहीं दिया था वो। हाँ अभी याद है, मतलब राशन गिव द दिस व्हाट यू कॉल इट दैट टीज एंड देन या राशन वाज इन्वॉल्वड ना, करेक्ट द केस that time. Imran also used to come with his, right? Imran was good. Rez is come, I like that. Rez and Imran are like fire in RP. Hope the case goes in that mood. We should not lose the, like, leave the hopes first only. They should do heavy RP. हाँ गन नहीं था और पुलिस
Your Honor, is it gonna take more time? Like, I think 5 these minutes से people, बहुत I don't understand why they didn't even write the charge sheet. But without charge sheet, you know, Ranvijay Singh, that we can't even interpret what is actually the case. सर चार्जशीट के नाम पे मेरे पास सिर्फ कुछ डिटेल्स हैं जिस पे लिखा हुआ है कि ये सामान मिला है, वो सामान मिला है. It seems like a police shopping list, to be honest. वो सिर्फ एविडेंसेस का लिस्ट किया है वो लोगों ने. Vichan, DA? Yes, sir. Will it take time? No, sir. The report that we're talking about that lead up to the raid is 571, sir. You can refer to it. I will make sure one copy is sent to the defense lawyer as well. Yeah, please do that. Please do that. Yes, sir. Should have done before because then it's a waste of time for a lot of people. But tell them to do it now. Quick. Yes, sir. No, they never had a case opposite each other. Savio, Imran and this one, Rez never had a case against each other. And they should not also, I feel. Because do what they are good in their own way. Good lawyers don't argue in front of each other in real life also. They try to keep their this. हार्ले का 2 केस हुए थे, वो 1 केस और एक हुआ था उसका, I don't remember, but this one I remember. Which Reyes had won the case. SVRP we had some epic cases. Hi Naman. My throat is getting fucked, guys. I'm getting a sore throat. I need to take a Strepsil. Come back. Back. दीपक, हाँ जी. वो नेज अकाउंटेंट है तो चेक करो और देखो किसी को पानी कुछ मांगता है तो उसको बोलो थोड़ा अच्छा कोई एक रेस्टोरेंट को बोलो कि ला के दे दो बोल के इधर. किसको? नेज 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 है, देखो वो देखो वो पीछे बैठ के नेज पुलिस के साइड में, उसको पूछो नेज कम है नेज. नेज भी ट्रैफिकिंग था एक केस याद नहीं था. आपको बुला रहे. They withdrew the case, Ishan. Hopkins withdrew the case. Next, do one thing. Tell any one restaurant to come and give some food and all this because this thing, I think this case will go for a long time. तो लोगों के लिए थोड़ा खाना और पानी रखो. कोई रेस्टोरेंट हो, दीपक को बताओ, ला के दीपक के पास रखो. दीपक, whoever wants water or food, then you give it to them, okay? डन है जी. अच्छा. Rosti is busy in real life, guys. He'll come in August end or something. SVRP 1 में मैंने मारने का केस नहीं हुआ. SVRP हाँ 1 में, हाँ सही है, 1 और 2, राइट, यू आर राइट. 1 and 2, correct. But we had another good case was in Legacy. First case of the whole Indian RPGs. एसिड कोर्ट है कोर्ट. तुम यहाँ एल शब्द उड़ा रहे हो, इधर उधर सब सुन रहे हैं.
ऑफिसर हाउ क्या बोल रहे? हाँ हम हमारी मैं तो चुपचाप अपना वीडियो बना Yeah, Tony struck. MJ was there. गलती हो गई सर सॉरी And Baga knows, no, we did RP together. Baga knows that RP. We do. No. This is how RP is done. You're right. You don't have ego. You do what your character has to be done. Be doing. Ah, एक Chuchu was snitch on him, right? Correct. That was another case. And another case was about this or what? They killed Monica something. वो भी एक केस था याद नहीं मेरे को No, I'm not दत्ता भाई सेकंड केस के टाइम मालिका को कैसीनो मिला था अच्छा हाँ उसको बोला था ना मालिका को कि डोंट डू क्राइम थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स करेक्ट गाइस हो गए आप लोगों का Yes, sir. Yeah, yes, Your Honor. The incident number is 5717. That led up to the raid. The y'all charge sheet has gave been the updated. copy to the private lawyer Yes, sir. We have okay done that. Yeah you can start your witnesses and evidences if you all are ready now All right. First, I will like to put some facts in front of the case that led up to the raid. okay On 12th of June, the PD found suspicious packages which were transported by Mr. Kane Austin to one of the people who lives in Cougar Avenue 30. All right, there was illegal trade of drugs happening in Cougar Avenue 30, the property that is in the question in this case as Manav, you have not seen the Rez suspicious arguing. package Listen to him. is Also good. weed boxes because these boxes contain marijuana. This case can be referred to is the number incident number for this is 5286. Then again, when these boxes were opened, we found a strain of there was a investigation done on it. The forensic reports showed that the strain of the specific strain is OG Fam Kush. What was the number of the cases? And after during the 2 months, the incident I'm speaking about is happened on June. After that, multiple arrests were made on Cougar Avenue 30, where in every case the police found out that weed boxes, the strain that was found was OG Fam Kush. The report is attached in the document. Also, Mr. Vin Marcus, who is one of the suspects today, was arrested with large amount of marijuana seeds, which come back to the strain OG Famkush. Also, all the plants that were caught in yesterday's raid were the strain of OG Famkush. Also, all of these guys were arrested together. They live in this small compound together. They share the keys of each other house, and all the weed that was captured was the same strain OG Famkush. Relax. All right. This is the report that actually led up to the moment of the raid. While doing a surveillance, the PD found they got a call for suspicious activity. To which they respond. They reached incident that is on Cougar Avenue 30 again, and they were some surveillance where, from the helicopters itself, and they found out that there was a huge farm of weed again. So which they found, and they tried to talk to these people who lived in this compound to find out of what kind of plantation this.
while this was happening, before the conversation happened, even before the Give me a conversation second. led up Wait. yes sir. They have pleaded guilty because the pleaded guilty is ticked mark. That's the reason. So they have you, not been processed. yeah, The but first just so tell the officers to remove the tick mark of pleaded guilty, okay? the first incident that happened, the shootout that which I'm leading up to, while these police officers were talking to these guys to check, go and have a surveillance on these weed plants itself. While that happened, this conversation turned into a shoot where these 7 suspects that we have in the courthouse today were neutralized, and then they were captured. To which these guys already pleaded guilty. They just have not been processed, but they have already pleaded guilty to their crimes. They have been fined for it, and but they haven't been processed yet. They have pleaded guilty. Let me ask them now. Yes. Accused, all the accused who are present here, please one by one, please tell me if you are pleading guilty. Just tell me your name and if you are pleading guilty or if you are pleading guilty, which charges you are pleading guilty. Just let's clarify that. Yeah. Let's start with the guys. Start everyone. Okay, I'll read out the charges for Mr. Ganesh Gaitonde for. Yeah, please start with that. Am I audible, sir? Yes, Yeah. Mr. Ganesh. वो कल जो मानी है वो उस चीज के लिए नहीं है. नहीं वैसा नहीं बात नहीं हाँ तो फर्स्ट सिचुएशन की बारे में बात. She will tell you the charges and you accept if you have pleaded guilty or not pleading guilty. You say you have to say plead guilty. Oh no, I'm not pleading guilty. Only this much only. Okay, start. Which one? Possession of stolen goods. I will read out all the charges. Felony possession of controlled dangerous substances, oxy and meth or meth. In this, the meth was capped. Criminal possession of firearm class 1, cultivation of marijuana, criminal use of firearm, attempted murder of government employee. Do you plead guilty? No, sir. Okay. Ask the next guy. Right, sir. Mr. Damon Bigham, attempted murder of a government employee, criminal possession of firearm class 2, possession of stolen goods, cultivation of marijuana, criminal possession of firearm class 1, misdemeanor possession of controlled dangerous. आवाज नहीं आ रहा आपका. आवाज नहीं आ रहा. देवर आप लोगों को आवाज आ रहा है उसका? नहीं. We can't also hear him. Nope. Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear. Yeah. I did not plead guilty for that. Okay. Third guy. Mr. Vin Mark, criminal use of not firearm. Present. He is not present at the moment. Okay. Fourth guy. Raga Joe. 2 counts of criminal possession of firearm class 1, attempted murder of government employee, criminal possession of government issued equipment, possession of drug paraphernalia, cultivation of misdemeanor possession of controlled dangerous substances, oxymeth. No, sir, I did not. You don't plead guilty, right? I don't plead guilty. Hello? Can you hear me? Hello? Next one, maybe. Liam Parker, misdemeanor possession of controlled dangerous substances, oxymeth, criminal possession of firearm class 1, criminal possession of firearm class 2, cultivation of marijuana, attempted murder of government employee. Do you plead guilty? Well, No, sir, I don't plead guilty, sir. Okay, next one. Stephen Carlton, cultivation of marijuana, attempted murder of a government employee, assault with deadly weapon, criminal possession of firearm class 2, criminal sale of firearm. I'll have to check this one again. Possession of stolen good, felony possession of marijuana. no, I don't plead guilty. Okay, next one. Usman Rajput, cultivation of marijuana, attempted murder of a government employee, misdemeanor possession of marijuana, criminal possession of firearm, possession of stolen goods, violating a court order.
Not guilty. Okay. Any more? No, that's it, sir. Okay. So you can start with your witnesses and evidences. All right, sir. I would like to call Mr. Ganesh Gaitonde to the witness box. Ganesh Kaidoni, please come to the witness box. Yes. कहाँ जाना है? इधर है। इधर। अच्छा, अरे हमारे उधर थोड़ा इधर उधर सामने सामने होता है ना। आपको ओथ लेनी है? हाँ ठीक है, ले लेंगे। आपको ओथ। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ओके, आप उधर ही खड़े रहो ना, मेरे पीछे बोलो। अच्छा, बोलो मैं आपका नाम? गणेश गैतोंडे। शहर के संविधान पे शहर के सभी धन पे शपथ लेता हूँ। शपथ लेता हूँ। मैं जो भी कहूँगा। सर अब रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं जी, आप बोलो। नहीं, आप सिर्फ वो जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो। वो रोता है नहीं रोता, वो आपका काम नहीं है देखने का। ओके सर। मैं जो भी कहूँगा। मैं जो भी कहूँगा। सच कहूँगा। सच कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ जी। Prosecution, you can continue. All right, yeah. Just a minute while I get these documents together. Yes, Mr. Ganesh Gaitonde, आपने अभी बोला कि सबसे पहले before your interrupted, you said that you plead guilty to the first situation, right? हाँ, बिल्कुल। तो आप बोल रहे हो कि आप प्लीड गिल्टी करते हो उन मैडम सारी आपका आवाज कट रहा है। इज माय वॉइस फाइन? कैन यू प्लीज एक बार टैबलेट खा लीजिए। नहीं अभी सही हुआ है उसका। मिडिल में होता है थोड़ा। ओके, सो मिस्टर गणेश गायतोंडे, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने अभी प्लीड गिल्टी किया था पहले ही, और बिफोर अभी भी हम जब भी बात कर रहे थे तभी आपने बोला कि यस यू प्लीड गिल्टी टू द चार्जेस जो आप पे पहले डाले गए थे, राइट? रेड के पहले? हाँ। 2 बार रेड हुई थी ना वैसे। सर मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ, जैसे शूट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस हैज ऑलरेडी बीन गणेश ऑलरेडी बता चुका है कि वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है चार्जेस के। So I don't know what the prosecution is trying to. Sir, he did already plead guilty. I'm just making sure that why did he change? आरएस सर से बात कर रहा था। What you are saying? You keep Ganesh, you keep quiet bit. Yes. What are you saying that कहाँ plead guilty किया था उसने भी? सर मैं जैसे कर रही हूँ, हम लोग आपने एक क्वेश्चन पूछा था, have these guys already pleaded guilty? तो Ganesh made the statement, yes, we have pleaded guilty to the first charge. Objection, so Your I Honor. am just making sure if my client told clearly he pleaded not guilty. I don't know prosecution के शायद It's okay. I don't know. Rangvir Singh, it's okay. If you're so good at listen, prosecution, listen. You are just getting upset on pleading guilty. Not. He has told in front of the open court when I asked him pleading guilty. He said no. So continue with that. Okay, sir. I just was making sure about this again. Okay. तो आपकी पॉकेट से जैसे एविडेंसेस स्पेसिफाई करते हैं, आपके पॉकेट से मिली गई है AK-70, एक कोल्ड पाइथन ऑक्सी मिली गई है आपकी पॉकेट से। आपके पॉकेट के जॉइंट्स मिले हैं जो कि इलीगल स्ट्रेन है, which is not approved by the DOJ. मेरे पास तो क्या आपने जो गन के बारे में बोल रहे हो वो तो मेरे पास थी नहीं। आपके पॉकेट से ये मिली गई है सारी सर। This evidence, there are evidences that are attached to the MDW report that I would like to refer to, Your Honor. But ma'am,
अगर आपके ऑफिसर से अगर आप कंफर्म करना चाहते थे, एक और बार कंफर्म कर लीजिए, I बट मेरे put पास ऐसा कुछ था नहीं 5800X मेरी 3D जेब में, only. Why do I change जो आप it? बता रहे हैं. Okay. You have Ganesh Gaitonde. You had an Oxy. You had a diamond back in your pocket. You had a phone dongle in your pocket, which is violating court order as well. It's just for namesake. You have joints, 5 joints, which belong to the illegal strain. You are still not pleading guilty because we have बट clear मैम evidences आपने of तो your. क्लॉड पाइथन बोला. I'm sorry, I referred to the wrong evidences, I suppose. But yeah, I will like to retract that statement. I'll repeat the evidences that we found from your pocket. Again, Oxy, that to 10 quantities of that, 5 joints of illegal strain, a diamond back, that is class 1 firearm, illegal class 1 firearm, and a phone dong, again, violating a court order. मैम मेरे पास फोन डोंगल थी और डीबी थी और बस, बाकी पता. आपके पास ऑक्सी भी है सर? अरे वो तो पैरासिटामोल है, वो थोड़ा स्ट्रेस होता रहता है ना, कभी कभार टेंशन हो नहीं जाता सर, है वो पुलिस के साथ. पैरासिटामोल नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन है। यस मैम, वो डिब्बी तो तो ऑक्सी की आप थी, बट वो एक्सेप्ट कर अंदर रहे हो गोली कि रखी ये थी आप मैंने, एक्सेप्ट कर रहे हो दवाई. कि ये आप सब आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो रहा कि है? ये नहीं सारी चीजें बोलो, आपके पास. आपका लॉयर करेगा वो फाइट. डीबी के आप बारे में नहीं पता, बोलो. और मैम बाकी तो याद नहीं आ रहा मेरे को इतना कुछ खास. Your Honor, he just accepted the fact that yes, he देखो. did have those oxytocin in his pockets. He accepted the fact that he had this illegal firearm in his pocket. He also accepted the fact that he had that those joints in his pocket as well. So he's वीडियो. basically pleading to the charges that have been put on him. अरे क्या कर रहा है गायतंडे, पहली बार आया कोर्ट हाँ, में, गन नहीं के बताया लिए तो इसको. ऑब्वियस, तो मैम हवाई फायर तो किया नहीं है. सर आप फायर किया है, we also have evidences for that. आपकी जो गन, उसकी बुलेट जो है, उसके एविडेंसेस भी साइट से, जो शूट आउट की साइट है वहां से मिले गए हैं. अच्छा. Yes. Your Honor, objection. Yes. मेरा client जो है, he is not very familiar with the court procedures, and I think it's his first time. You can take a side bench What for my 5 client? minutes. Yeah, thank you so much. Yes, yes. Since you gave the PD 10-15 minutes, Yeah, I yeah, would please, request no 5 issues, minutes. no issues. I also can see him is immature. Thank you so much. In his I would. answering this. I promise I won't take as long as Ms. No Vivi did. problem, no problem. Side bench allowed. Court is in recess, guys. रेस को पता चला ये अगने वाला है, पूरी केस को उड़ाएगा. But कुछ नहीं महेश, everything good. How are you doing? Comedy. है आशीष. उसको सिर्फ क्या करना है, उसको डिनाई करना है चीज़ों को थोड़े ना. है मेरे को मालूम नहीं कैसे क्या, नहीं नहीं ऐसे वो बाद में उसका लॉयर घुमाएगा. वो लॉयर कुछ भी करेगा. वो लॉयर बोल सकता है कि आप लोगों ने प्लान किया है, आप लोग का और किसी का एविडेंस देगा, कुछ भी करेगा वो. राइट टू स्टे साइलेंट कोर्ट में नहीं है दक्ष. राइट टू स्टे साइलेंट आपको है, पर राइट टू स्टे साइलेंट आपके ऊपर हावी पड़ सकता है, क्योंकि द कोर्ट बिलीव्स दैट वट एवर द क्वेश्चन इज पुट इज ट्रू व्हेन यू कीप क्वाइट. हाँ, जितना कम बोला उतना अच्छा है. हाँ और ना में जवाब देना मांगता है ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट में क्या होता है, सामने वाला आपके मुंह से निकालता है सब कुछ, और आपके मुंह से निकालता है और वही चीज़ आपके ऊपर यूज़ करती है.
लॉयर्स बताते हैं कि आप हाँ और ना में जवाब दिया तो अच्छा है, ज़्यादा बात मत करो। तो करना मांगता है। Let's go right. Vivi is fire today. Vivi has got understanding things better. खाना आ रहा है 5 मिनट में। फोकस। ओके ओके। No. Who says according to law? According to law वैसा कुछ नहीं। जज का डिस्क्रिशन है वो। जैसे तो आप पूरे केस में चुप रुकेंगे तो नहीं होता है। मीन्स इनडायरेक्टली क्योंकि पुलिस एविडेंस दिखाएगा ना। फिर से लेनी है क्या? Sorry for this, Your Honor. मेरे clients जो हैं first time they are in this courthouse. Okay. So no issues. Sorry for that. No issues. Yeah, please go ahead. So basically मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे clients को जो charges जो बोले गए थे वो exactly since they are not familiar with how the court works and how the charges works and since ये charge sheet बिल्कुल हमें court शुरू होने के 5 मिनट बाद ही मिली है, इस वजह से थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई है। इसके लिए मैं पीडी को भी जिम्मेदार बोलूंगा कि इन्होंने पहले ही चार्जशीट नहीं बनाई और हमें नहीं दी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एक बार और इनको चार्जेस ठीक से बताया जाए और जिन चार्जेस के लिए प्लीड गिल्टी कर रहे हैं और जिनके लिए नहीं कर रहे हैं वो एक बार कोर्ट को अच्छे से पता चल जाए। हाँ, so we will have to go through it again. Now you can tell Ganesh his charges again and let's see if he pleading for some or not. मैम आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, थोड़ा जोर से। sorry, am I audible now? Yes. Yeah. Mr. Ganesh Gaitonde, you've been charged for possession of stolen goods, felony possession of controlled dangerous substances. रुको, ऐसा मत जाओ। पहला चार्ज बताओ उसको और हिंदी में भी समझाओ उसको चार्ज किस लिए हो। हाँ। Sir, I'm not comfortable with Hindi, sorry. मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन सर। अच्छा उसका आप सिर्फ पहला चार्ज बताओ, उसका लॉयर उसको बताएगा और वो बाद में बताएगा प्लीडिंग गिल्टी और नॉट। Alright. Possession of stolen goods. गणेश तुम्हारे पास जो भी कोई गुड्स वगैरह फोन डोंगल ये सब था तो बता दो अगर। हाँ वो फोन डोंगल उसके लिए तुम प्लीड गिल्टी करते हो हाँ या नहीं, बस हाँ या हाँ। Felony possession of felony possession of controlled dangerous substances, oxy. गणेश तुम्हारे पास ऑक्सी थी हाँ, उसके लिए तुम प्लीड गिल्टी करते हो हाँ या ना? हाँ डब में डोलो 650 यस। हाँ नेक्स्ट चार्ज। Okay. Criminal possession of firearm class 1. आपके पास कोई हैंड पिस्टल वगैरह कुछ भी थी आपके पास, उसके लिए आप प्लीड गिल्टी करते हो हाँ या ना? हाँ डायमंड बैग या। ओके। Criminal use of firearm. क्या आपने वो गन किसी गलत मतलब से या इलीगल तरीके से चलाने की कोशिश की? नहीं सर। ठीक है आप उसके लिए प्लीड किसी को मारा वारा कुछ नहीं किया। यप। So he's not pleading for this charge, okay? Remember that. Yes. This. Yeah. All right. Cultivation of marijuana. क्या आप मैरिजुआना जो कि गांजा होता है हिंदी में उसकी खेती करते हैं? आप उसके लिए प्लीड गिल्टी कर रहे हैं हाँ या नहीं? ना। ओके। Attempted murder of a government employee. आपने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे पीडी हैं उनकी जान लेने के मकसद से जान लेने की कोशिश की हाँ या नहीं? ना। Okay. Next. That's it. These are all the charges on Mr. Ganesh. So yeah, you prosecute him on the charges which is not pleading guilty now. All right. First, I'll come to the charge that he denied, that is criminal use of firearm. Mr. Ganesh Gaitonde's GSR was tested positive on. So
him denying the fact that he never used the firearm is That's okay. You can completely tell us wrong. that in the way of final statements. Now you can take cross question him, right? Okay, right. So Mr. Ganesh Gaitonde, आप का Yeah. GSR अब बोल रहे हो कि आपने कभी भी वो गन यूज ही नहीं की, तो आपका GSR पॉजिटिव क्यों आया? मैं बताता हूँ बात ऐसी थी, मैं और मेरा दोस्त स्टेफन, हम दोनों सुबह प्रेशर की वजह से हम गए थे जंगलों में। अभी सुनो उसका बात। क्योंकि चौकअप हो गई थी हमारी गटर, तो वो पानी बाहर फेंक रही थी, तो हम लोग सुबह वहां गए थे, तो वहां जंगली जानवर उन्होंने हम पे अटैक कर दिया था। तो उस सेल्फ डिफेंस में मैंने चलाई थी उनको भगाने के लिए हवा में। कौन सी मतलब कौन सी गन चलाई थी? डायमंड बैग। Sir, he's actually in front of the whole court. He's accepting the fact that he has used the fire on. हाँ तो डिफेंस में चलाई थी वो जानवर को डराने के लिए। I'm just making a I understand what you're saying, but you all have not added that and he's charge, also accepting right? the fact. He's accepting the fact that he did use that firearm. Yeah. He accepted it before, also saying that he never used it for illegal purpose or any wrong use. Now he's accepting that. रुको आप चुप रुको. Now he's accepting that he fired it on an animal, whatever it is. अभी वो हो सकता था उसका गलती, क्योंकि you can't use that weapon on animal, but you all have not charged him with that. So वो मैं Okay, sir. I am just making a point again. Using this weapon to kill an animal also is a criminal use, but it is a it's a criminal use, but there's no charge of Yes, it sir. right now. We are proceeding. All right, sir. I will go ahead again. GSR test. So the GSR testing, it works like from what I have been explained by the high commands of the police. GSR is tested positive only for a small window after the gun is fired. Mr. Ganesh Gaitonde over here is saying for the fact that... Wait. This is what High Command said, because according to us, that this should be said by any forensics expert. Oh, those people only can tell us how long a residue can remain on a person's fingers or whatever. I think High Command is not a authorized person to say that. Did they send a gun for forensic report? All right, sir. I will have a forensic expert on the witness stand later. Yeah, you can continue. We'll talk about that. All right. Second, Mr. Ganesh Gaitonde, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बोल रहे हो कि you were injured heavily, right? When the police came and you were found by the police, when you were all of this stuff was found in your pockets. Yes, ma'am. I was injured. Exactly situation क्या हुई थी? What happened? मैं बताता हूँ. मैं अपनी गाड़ी कारा लेके मैं साउथ साइड में कुछ शॉपिंग कर रहा था अपने दोस्तों के लिए. सोचा उनको टी शर्ट गिफ्ट करूँ. वो खरीद के जैसे मैं वापस आया तो वहाँ मैंने सुना, वहाँ जाते पहुँचते ही सुना धुड़ुम धड़ाम हो रहा. तो मैं हमारे घर के सामने येलो बिल्डिंग पे चढ़ गया. उसके बाद मैं एसी वेंट पे वेट करके देख रहा था क्या हो रहा है. उतने में एक ऑफिसर ने मेरे को पीछे से थप्पी कर दी और मैं वहाँ बेहोश हो गया. फिर मुझे याद नहीं आ रहा कुछ. Okay, so you did see a shootout going in there? No. मैं तो दूर था, फार दूर. हाँ. और एसी वेंट पे चढ़ा. ऑफिसर राजेंद्र ने पीछे से मुझ पे गोली खोल दी. Okay. नहीं. देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको. I'll just rectify your thing. अगर इधर दो गलतियां कर रहे हैं आप. किसी पुलिस ऑफिसर का नाम लेंगे तो बाद में आपको ही तकलीफ होगा, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में आके उसने बोला वो नहीं था, तो आपका गलती हो जाएगा. तो याद रखो इस चीज़ को. और एक चीज़ है कि आपको पीछे से मारा तो आपको पीछे आंक नहीं होता है कौन पुलिस ऑफिसर. नहीं सर, वो आए मेरे को लेके गए और फिर उन्होंने मेरा इलाज कराया और उन्होंने ही बताया. अच्छा, आप बेहोश हो गए थे, आपको कैसे पता चला कि वो वही लेके गए? अस्पताल लेके गए, उन्होंने इलाज कराने के बाद बताया मैडम कि मैं था जिसने तुम्हें पेल दी. Are you sure about it? Yes. He said that. कसम से. Okay. So that would be it from my side for Mr. Ganesh Gaitonde. Yeah. Defense, you can go ahead and cross, Ganesh. हाँ सर, बिल्कुल. गणेश बैठे रहो वहीं पे, बैठे रहो, रिलैक्स.
यस सर। हाँ, सो सबसे पहले एक बहुत जरूरी पॉइंट मैं आई वांट टू आस्क द ऑनरेबल कोर्ट अलोंगसाइड जितने भी यहाँ पे पुलिस के दिग्गज बैठे हैं यहाँ पे, इनमें से सबसे हाईएस्ट कमांडिंग ऑफिसर छोड़िए, अभी रहने देते हैं, यहाँ पे जीएसआर का एक बात हुई थी, करेक्ट योर ऑनर? यस सर। सो जीएसआर मुझे बताया गया था कि एग्जैक्टली आई मीन योर ऑनर, इफ यू डोंट माइंड, आपको काफी नॉलेज होगी बिकॉज आपके पास तो ऐसे काफी सारे केसेस आए होंगे, राइट? सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जीएसआर एग्जैक्टली बताता क्या है, एक बार इफ यू कैन टेल द कोर्ट। It's normally a gun residue it shows, and if there is a forensic expert, if they have sent that gun to the forensic expert, he can know exactly if that the same gun and the residue of that gun which is found on his hand and the ammunition, बिल्कुल, that is the has to match. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सिंपल भाषा में ये बता देता हूँ, ये जो जीएसआर टेस्ट है बेसिकली ये बताता है कि इस बंदे ने फायर आर्म चलाया है या नहीं। Am I right, Your Honor? Yeah. Now the charge coming into picture is wait. It also इसने गन वो गन चलाया है, वो बिल्कुल बिल्कुल वो फोरेंसिक एक्सपर्ट को बताना है। We totally agree. जिस गन से चलाया है और जो गन चलाई है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये इन्होंने गन चलाई है, और कौन सी गन चलाई है ये भी पता लग जाता है भाई। That is correct. Totally correct. Now coming on to the big picture, criminal use of a firearm. All right. Okay. The best part about this is क्या गनशॉट रेजिड्यू हमें ये बताता है कि ये जो भी गन चलाई है या जिस बंदे ने चलाई वो क्रिमिनल इंटेंशंस की वजह से चलाई है? क्या वो टेस्ट ये बता सकता है योर ऑनर? नहीं, वो नहीं बता सकता। राइट, वो उनको प्रूव करना पड़ेगा। श्योर। कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर गणेश। यस सर। ये जो पूरा जो भी दुर्घटना हुई है, मैं दुर्घटना ही बोलूंगा इसे, ये कहाँ पे हुई है? हमारे घर के बाहर से हो रही थी, घर के अंदर तक। ऑलराइट। सो बेसिकली आपके घर पे कोई आपकी परमिशन या आप जहां पे जितने भी लोग रहते हैं वहां पे आपकी परमिशन के बिना कोई घुस रहा था, करेक्ट? यस सर। और जब हमने वार्तालाप की तो ऑफिसर ने हमें बोला कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, और हर हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो अंदर आ गए, हमारे दोस्त को कफ कर दिया। थैंक यू सो मच सर। योर ऑनर, आई मीन टू द कोर्ट एज वेल, एक्चुअली हम ह्यूमंस की एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, जिस घर में हम काफी टाइम से रहते हैं। 1 minute. Objection, please. Yeah, please tell me. Sir, he's contradicting his statement. He clearly mentioned the fact that he heard the gunshots. He went on the rooftop of the building. And he was shot. Wait. He never mentioned the fact that he had a conversation with any of the officers. Okay. And now he's contradicting himself. नहीं, रुको। I'm just talking about जो पूरी दुर्घटना हुई है वहां पे। मैं गणेश से बस ये पूछ रहा हूँ, जो वहां पे पूरी दुर्घटना हुई वो किस जगह पे हुई? That's all. No, you proceed. Relax. I don't know the object. This is Yes. objection. We normally objection is something you the line of argument, whatever it is. If it's contradicting, you can take over after. Where's Vivi? Yeah. When Rangjit Singh finishes his statement, you can go ahead and cross him again. You can find a contradiction that time. There's no issue. Yeah. Sorry. Yes. हाँ, so मैं ये बता रहा था, हम जैसे हम ह्यूमंस की काफी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। I mean, जहाँ पे भी हम रहते हैं, not even humans, we can see this in every living being. जिस जगह पे वो रहते हैं, उस जगह पे अगर कोई घुसपैठिया या कोई अनवांटेड पर्सन आ जाए, तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट जो उस जगह पे रहते हैं बंदे, उनका हॉस्टाइल ही होता है, बिकॉज वो उनकी परमिशन के बिना वहां आ रहा है, बी इट ह्यूमंस, बी इट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्रिमिनल यूज ऑफ फायर आर्म है, आई डोंट थिंक सो इट वाज यूज्ड विद एनी क्रिमिनल इंटेंशंस। It was used basically to defend a place where the police was entering without their permission. So you are telling me to refer to his constitutional right of self-defense in his private property? Absolutely, sir. In the meaning of trespassing. Okay, I'll refer that. Yes. Yeah. ठीक है।
That's all from my side for this charge, Your Honor. Okay. Vivi, you want to cross again? Sir? You want to cross anything? Any contradiction you No, want to sir. cross? I just wanted to make this point, like I made it previous, कि गणेश ने पहले ही स्टेटमेंट में जो बोला, जो इंसिडेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया, उसमें उन्होंने कहा कि he heard the fire shots fired. Okay, he went above the building to see what exactly was happening, and पीछे से उनको धप्पा कर दिया गया, and he was unconscious. So any further statement coming from him that he had a Yes, conversation. ma'am, can I speak? Wait. Okay, sir. Let her tell. Yeah, continue. Anything else should be considered as a contradiction, and he's perjuring himself over here. No, see, let's come to this basic point. You have to understand, Vivi, that his lawyer, who is representing him, is already saying that they is not denying that he fired bullet. Oh, he or other guys, they are not denying. There was a self-defense, which was, they are trying to show that there was a self-defense, and constitutional right allows them, if trespassing is there, then they can protect it with the weapon which is used for self-defense. But the problem here also is that in self-defense they have used a weapon which is not legal. So there's an issue there. But otherwise they are going towards the issue of self-defense thing. So if he was present there, not So present again, there, a contradiction again, sir. His lawyer, if his lawyer is accept the fact that these guys actually did, Mr. Ganesh Gaitonde denied the fact that he never shot a bullet. No, he never. Had a His chance lawyer to shot. never. No, his lawyer never said about Ganesh Gaitonde. He is trying to say that the civilians who stay there, who have been right now been prosecuted, he's talking about them. On that basis, he gave Sir, the so statement. then every statement that Mr. Ranvijay said, that it would be a hearsay because he is not specifically mentioning the fact that who did and who did not. Listen, Yes, sir, listen. it would be Listen. definitely hearsay, sir. Listen to one This very is basic. if a general statement is not a statement that a court should be accepting, Your Honor, I feel. You understand one basic factor, Vivi. Constitutional rights have been for every citizen of the state. A lawyer can tell the court which constitutional right has been violated. Now that right you can't take over from them. You understand that? He's being only referring to the court to just look into that right. He has till now not said, not even gone to it, that it has been violated or whatever it is. He just told us to refer to that right. As we go ahead, we'll come to know exactly what he's actually going through. So you don't have to worry about it. Case is not over. He's just trying to this. Okay. I am not worrying about anything, sir. I'm just saying that a statement It looks like that a is worry made in that you are trying to tell me to expunge his statement. Sir, if it's made in general and where yes, if a constitutional right. Constitutional right Sir, is every civilian right, even the person who is sitting here and even your right. बिल्कुल सर, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बात ही नहीं आ रही है कि मिस्टर गणेश सेड दैट ही नेवर शॉट द बुलेट, एंड यहाँ पे तो फिर ये स्टेटमेंट बनाने का, अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में शूट किया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रेफर करने का पॉइंट आता है. बट अगर कोई बात ही नहीं हो रही है उस बारे में कि गणेश, उसने गणेश आपने कहाँ भी सुना है उसने ये बोला है कि गणेश डिड यू शूट, और गणेश ने बोला है हाँ मैंने शूट किया है. कुछ हुआ है ऐसा? Constitutional right. Constitutional right is no always. No problem, sir. I take back my back my objection. It is your right also. You can also refer to a constitutional right to us in the trial. We will take down, we'll note it down, and then we'll see where it can be applied. Absolutely, sir. Absolutely, I will do that in future. Any more questions? No, sir. Absolutely. It's okay. Ganesh, you can go and rest. So your next witness is Vivi. Just a minute. नहीं, वो होता है आर्ग्यूमेंट, कोर्ट्स में भी होते हैं, लॉयर्स आर्ग्यू विद द जज आल्सो, बट दे आर आर्ग्यूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द केस. शी इज नॉट आर्ग्यूइंग समथिंग आउट ऑफ द केस. शी हैज द फुल राइट टू आर्ग्यू ऑन इट. शी इज नॉट ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. I would like Mr. Damon Biggums in the witness. Oh, sorry, sir. My bad. Before that, I would like Mr. Aaron Sage, who's a forensic expert from LSPD. I would like him. Aaron Sage, LSPD forensic expert, please come to the witness box. You guys!
हेलो दीपक, इसको Yes. बताओ, उसको बाद में बुलाएं, उसको बिठाओ उधर, फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाओ पहला इधर। फोरेंसिक पाजी, फोरेंसिक एक्सपर्ट कौन है? डिसिप्लिन इन द कोर्ट हाउस एवरीवन। दीपक, I'm over here. यस प्लीज उधर जाओ ना। मेरे साथ बोलो। हाय अभी। हाँ पीछे पीछे। अभी मेंशन। मैं आपका नाम क्या डॉक्टर है क्या? एरन सीज। डॉक्टर, इज इट यू? शहर के संविधान पे शहर के संविधान पे शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। Yeah, we can go ahead. How are you, doctor? Mr. At एक मिनट अंदर। and the duration of the time period जिसमें वो positive आता है या नहीं आता है वो। Sure, I can do that. GSR, that is gunshot residue. Well, you find that in the hands of the people who fire a firearm. That is when you fire from a pistol, the particles which Nice to see come you out after of the long muzzle time. stay on your hand for a period of time that is You 15 left to 30 RP long minutes. time back. We are still doing And, RP. even when the Abhi. person scratches his hand or his How hand, is your his life? pocket, How's your marriage or even goes days? to the doctor Already to three. treat How himself, many the years now? doctors 2 will years, wash right? their hand, 3 and years, in I which think. by which the GSR will go. But in Eyeshadow. 15 to 30 minutes of time, the GSR won't go away. So our officers, they have a kit where they can test the GSRs of the suspects, and when a GSR is positive, it is made sure that the suspect has shot from a pistol that has a muzzle in 15 to 30 minutes of duration. Right. So you're saying कि 15 अगर यहाँ पे आपने statement सुना होगा Mr. Ganesh Gaiton, right? He says that he shot that diamond bag that he was found in possession of. He shot it in the morning. And the incident where he was found and he was tested positive for the GS, that happened late at night. So do you think इस जो time period है, अगर वो सुबह shoot करते हैं तो उनका gun residue evening को positive आएगा? Ma'am, no ma'am, that won't work out because he also said कि वो उनको हल्का होने जाना था, and I'm pretty much sure he washed his hands also after he done उनका काम खत्म होने के बाद भी. So it's obvious that the particles which were out of the muzzle, that is pistol से जो निकला, that's the GSR we say over here, also got washed away by that. All right. And even if he hasn't washed his hand, जो रोजमर्रा के हम काम करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई भी exactly, ऑब्जेक्ट it will उठाते हैं, yep, it will vaporize and it will go away. धीरे धीरे it will go away. Yes, so you're saying totally. the only time period जिसमें वो positive आएगा is 30 to 15 minutes, right? Yes, correct. 15 to 30 minutes. All right. That would be it from my side, Your Honor. Okay. Tell me one thing, Miss Vivi. Yes, sir. Did you all find gun residue on Mr. Gaitonde? Yes, sir. We did. He was tested positive for GSR. Okay. And did Mr. Gaitonde said that he didn't use the firearm? Yes, sir. He said that he never got a chance to shoot. Okay. Defense, you can cross the witness. Sure. Yeah, Officer Aaron says, right? Yes, उसको बताना था एक बार आप अपनी like बुलेट if फायर you don't किया था mind, like can you आप like what is your rank in the police department? क्योंकि बुलेट फायर करके अभी आपको लॉयर केस को लेके जा रहा है Oh, सेल्फ डिफेंस के लिए. like you are a very well experienced रेड officer, वारंट नहीं correct? था उस टाइम. All right. So वो ये जो जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल दुर्घटना अमेंडमेंट हुई उसको प्रोटेक्ट करता है ट्रेसपासिंग को फायर करने के लिए. So ये गणेश भी लॉ भी कुछ मालूम नहीं. उसमें were you a part of पहला it? बैठना होता था लॉयर के साथ. No. You were just a forensics. Yep.
ओके एंड जो भी आपने बताया कि गन रेसिड्यू गन शॉट आई मीन ठीक है लाइक इट क्लियरली स्टेट्स दैट कि मिस्टर गणेश माइट हैव फायर्ड द फायर आर्म दैट्स ऑल बट रेज बोल रहे हैं इज might. देयर अभी लाइक रेज भी कुछ नहीं कर सकता, वहां पे इसने कोई मुंह भी हग लिया है ऑलरेडी. like were you able to tell that was it shot on like किसी पे भी like police officers या like, ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है राइट और इज लाइक forensics गणेश can ही tell the बोलते projectile थे. ये वगैरह नहीं like वो can गणेश you do नहीं, that? this is not that I'm just Ganesh trying अभी. to like The one which used to play with us in Legacy Fun for I'm police just वाला trying वो to नहीं है, ये I'm just trying different to है. ये understand गणेश that I just want to know like gangster apart गणेश from है. that fact It's not that Ganesh what ये you are thinking. I know you are thinking about Ganesh रेसिड्यू जो से police officer होता था. सिर्फ ये पता चला Two कि different है. गणेश गायतोंडे ने एक फायरआर्म चलाया जो फायरआर्म वो उनके मेरे को पास तो था पीपी है. इसके अलावा कैन वी फाइंड पिताजी एनी plays अदर दिखता है थिंग मेरे को. रिगार्डिंग दैट और दिस मच ओनली Guys, this Avi is the starting member like Pascal and everyone. वो जो They आपका are टेस्ट starting होता members है of Vaspucci. If you want to find Legacy first, starting Ganesh players had of Legacy. fired from a pistol or any firearm, then this is the way you will find if he has done a दैट्स इट मतलब इसके अलावा और कोई हमें इन्फो नहीं मिलती है जस्ट दैट कि उन्होंने एक फायरआर्म चलाया Yeah, yes, और वो फायरआर्म किस गन से चला इज दैट करेक्ट we get when he fires a bullet we वो get गणेश अभी वो shells gangster and, बना है. अभी the he is like projectiles fucking gangster which in will be Red involved Mafia. in everything. ओके वो वाज इट आल्सो रिकॉर्डेड I'm just ऐसा कुछ लाइक forensics, yeah. ओके ओके ठीक है दैट्स ऑल योर ऑनर Tell me From one Mr. thing. I Adams, just wanted some clarification from the forensic guys. Are you authorized forensic guy? Where's your lab actually? It's in our MRPD. MRPD. Okay, okay. I just. Yes. And the weapons were sent for forensics, right? The Diamondbacks and everything, yes, they usually come out to nowhere. And you have given a detailed report on that. Oh, a very brief report. Sir, I didn't. I'm not sure because I didn't do the forensics for this thing. For this. You case didn't do the specifically. forensics. You just came to give a expertise on the Yeah. forensics. Okay. Yeah, okay. exactly. Vivi, who did the forensics actually? So minutes of the forensics report, I'll have to refer. Just ask the officers later, okay? Just remind, then Yes, update sir. me on it. We'll do that. We'll do that. You can have a seat. You can have a seat. Can you call your next witness? Yes, sir. I would like to call Mr. Sahaj Gill, one of the officers who was shot down at the scene. I would like to call him to Please, the witness officer Sahaj Gill, please. The witness box. You can leave. You can leave. The forensics guy, you can leave. Thank you. No, not there is no shell. That RP. These people are not doing shell thing. They have this report, forensic report होता है जो PSR positive आता है. All guns, even non-lethal no. ones. It's okay. If it's in your holster, it's fine. It's very much secured in my holster. All right, it's fine. You can go ahead. Take the witness. Greetings, Your Honor. No, you can click suspect. It's up to her how. अप्पा जी ओथ लो मेरे पीछे पीछे बोलो मैं आपका नाम मैं सहज गिल शहर के संविधान पे शपथ लेता हूँ शहर के संविधान पे शपथ लेता हूँ मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा Can I proceed, Your Honor? Yeah, you can proceed. Thank you so much. So, Mr. Sahaj, you went to this raid scene, right? Avi, we did this RP in SVRP also. Alright. Did some RP of this in SVRP. How did were you there when this conversation apparently escalated into a shootout? Were you present there, or did you join in late? I was present there. I was ordered to be secured on a building, just in case things go south and we hope that things did not escalate, but that occurred actually. All right. So, Mr. Sahaj, according to your report, I can see that you were one of the officers along with Ash Yeager
who was shot down. You went unconscious, right? Yes, ma'am. Chetu, And you Deepak were है वो later Deepak. treated in the EMS by the EMS. Yes, ma'am. Okay. So, and before you were shot, did you saw the suspect who shot you? Yeah, it's really good, Abhi. I did see the suspect, ma'am. Can you identify that person? Identify that person later. I identified the person later when I went through the mugshots, ma'am. Okay. So, what was this person wearing? The person was essentially topless, but had cargo shorts, yellow cargo shorts, I believe those are called, or bicycle shorts. Okay. Basically, the half pants, the yellow half pants, and had a big tattoo on their chest. Happy birthday, belated happy birthday. Sorry. And No, आज है through आपका the birthday. Wish you mugshots, happy you birthday. identify it as whom? Who was this person? Legacy is still going on. I think Ravi It is was running it again. Ganesh Katoni. It was Mr. Ganesh Gaiton. Right. Yes, He when he was caught, and his Vivichan. mugshots were taken. It did match out with the person who shot you, right? Yes, ma'am. So, Your Honor, we have a witness, a live witness who was actually shot down, who was on brink of death. Here, giving a statement that he did identify, and he did not identify him right up, sir. He said he identified this person as Ganesh Gaitonde later. So we have a witness again to prove the charge that Mr. Ganesh Gaitonde indeed attempted murder of a government employee. Okay. Mr. Sage, do you have anything else to add on to the about the shooter? No, ma'am. All right, so that would be it from my side. Okay. Defense lawyer, you can cross-examine the officer. Officer Sahaj, क्या हाल Yes, है? sir. I'm doing well, sir. हाँ, so आप ये जो दुर्घटना हुई थी, so आप वहाँ पे थे, right? Yes, I was. हाँ, so clearly एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए ये जो पूरा डिजास्टर हुआ है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई when we got a call that units needs to be. I can switch between Hindi and English. Was that बिल्कुल. अरे so बिल्कुल. it started that we were called as a backup to assist in raids. Before going into the raid, we were all grouped up into the PD, and our objectives were assigned. Once those objectives were assigned, we were asked to go to our objectives. So my objective was with me and another officer would secure a building just one block off where the scene occurred. Once we were secured the building, one of our officers went for interrogation. Okay. Okay, sorry, my word. मतलब बातचीत करने के लिए, so in order to clear out the area and we can get out of. Sure. हाँ, जैसे बातचीत करने के लिए पूरी पीढ़ी पूरे हथियारों से लैस हो गए. No, sir. I think only one of them went बताया forward. मुझे that you got a call for a backup and आप लोग पीडी में एकदम तैयार हो रहे थे full. The reason for that, sir, yes, sir. The reason for that was that area was highly, very high chances of officers getting shot, and there have been multiple reports in the past, multiple incidents in the past where officers have बताएंगे वो been shot. incidents please एक बार. But a lot of incidents. Really sorry to interrupt, Your Honor. Just to save the time of the court, I have already mentioned these incidents in the beginning of the trial. No, the officer. कितने incidents हैं? Wait. Vivichan, see, what you have said, okay, that's okay, everything good, incidents, everything. Now the officer says multiple incidents. So whenever you speak in the court, you should know that people will ask you for evidences for that, any word of it. So that's what the law is asking him. So he might be knowing some incidents, right? To be confident enough to say that multiple incidents happen.
तो वो उसका है, so don't worry about that. You can go ahead, Ramji Singh. या प्लीज सहज गिल फिर सो आपका कहना है कि बहुत मल्टीपल इंसिडेंसेस हुए हैं वहां पे कि वहां पे ऑफिसर्स जाते हैं उनको गोली मार दी जाती है करेक्ट दैट इज व्हाट यू आर सेइंग It's the same server. Yes, that is one of my points. Yeah, Yes, but now it's very far. और गोली Same किनके thing, द्वारा same मारी got गई it in India. the people who live and are around that. नहीं एग्जैक्टली बताइए Well, the group that lives in that area. नहीं ग्रुप मैं एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ कौन लोग पीपल मतलब क्या पीपल कौन Objection, Your Honor. Relevance to the case. अरे relevance I think he only brought up the point. That's what I'm telling you, lawyer, prosecution. It's officer what he's saying is asking him to clarify those things. I'm just trying to get to the bottom of this जो आपका जो होनर ऑफिसर है पॉइंट लेके आया बड़ा मैं लाइक अचंभित हूँ लाइक आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि इतना हॉस्टाइल एरिया इन्होंने पहले ही उसको डिक्लेयर दिया था तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस हाँ प्लीज कंटिन्यू सहज गिल डोंट वरी Well, a lot of people who are currently present in the courtroom, a lot of people and their associates. Can you name few? Well, as of right now, the ones which have filed a case, the ones. A lot of people में सहज गिल जज साहब भी आते हैं मैं भी आता हूँ मिस वीवी चैन भी आती है. The ones which you are representing, sir. Okay, उन्हीं में से you know exactly you for sure. क्योंकि इसको मैं पकड़ूंगा बाद में सहज गिल ठीक है कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत ही हॉस्टाइल टेरिटरी में आप एंटर कर रहे थे तो इसलिए फुल हथियारों के साथ लैस वैस होके आया वहां पे पहुंचे और फिर क्या किया आपने आई मीन बातचीत करने गए थे हाँ फिर well we hope that you know we would have more friendly conversation and we would actually finish our objective without firing any single shot. That was one of our hopes. What was this objective? इतना बड़ा आपको जिम्मेदारी दी गई objective तो So there were wheat plants planted inside and those all wheat plants were illegal. All right. Point to be noted, Your Honor. Coming on to the one of the major important points. Let's look at the charge sheet that was submitted to the court. Okay. Okay, अब इस लाइन के बारे में थोड़ा let's talk about it. Your Honor, if you don't mind, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा यहाँ पे. Can you see जो वहाँ पे can you see a plant which is towards the right side of the chalkboard? Yeah. Can you जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि वो प्लांट कौन सा है? नहीं अंदाजा से कुछ भी बोल सकता हूँ मैं but I can't say that that plant is that plant only till I might be close to it and really to be make it a evidence or something then I'll require. Sure. Yeah, for sure. Thank you. I mean your power of observations are like tremendous. Thanks a lot for sharing your insight. तो अगर like roughly मैं ballpark भी बताऊँ तो ये distance कितना होगा? Maximum 20 feet. हाँ. 20 और एक चॉपर रोड के ऊपर से कम 500 फीट ऊपर उड़ता है एटलीस्ट 500 फीट एंड हमारे चील की आंखों वाले ऑफिसर्स ने 500 फीट की ऊंचाइयों से एयरवन पेट्रोल करते करते इन्होंने पता लगा लिया कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर वीट प्लांटेशन लगे हुए हैं. ओके. टैलेंट तो है. ऐसे ऑफिसर्स आई थिंक अगर ओलंपिक्स में जाए तो लाइक शूटिंग में काफी अच्छे मेडल्स ला सकते हैं. Yeah, you can continue. So let's coming on to the point. So objective था वीट प्लांटेशन का. So ये जो ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि वीट प्लांटेशन इनको पहले से ही पता थी कि वहां पे वीट प्लांटेशन था और जो चार्जशीट में लिखा गया है कि officers were doing a air one patrol in their chopper while they spotted weed plants.
इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ऑलराइट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद बताइए सहज जी। क्या होता है Danish? It's not like Well, that. You in during the court it's evidence. conversation We are was blind. happening. We don't see that. आप कैमरा से वीड प्लांट को देख सकते हो, Go ahead. पर वो रियली वीड प्लांट है तो उसके लिए आपको उसका So क्लोज during the एविडेंस बनता है with the conversations were plant. happening, Now you can, our officer who was if you want to engaging go to in that weed conversation, plant Shaker, in a private property, he you got need to shot ask down. for a permission. That's a And you need that to is tell when all DOJ the that we people require inside a who were in the area, they arrest all warrant gathered or a up raid and in that took area. vantage points already Then you with their can go weapons, with that raid team. So ready before the officer. conversation you and told, enter the area. आप जो बता रहे हैं कि आपको जब ये जो ऑफिसर था बात करने गया था उससे पहले यू सेड दैट पुलिस वर ऑलरेडी वहां पे काफी वेपन्स के साथ ऑलरेडी मौजूद थी, करेक्ट? And we were, yes, लाइक we दे वर were ऑलरेडी there. सेटिंग अप, आप जो कह रहे हैं। We did set up, yes, we did set up हाँ, just you in did case, set you up. know, just in case Just in this case. all नहीं, उनके escalates photos भी into नहीं a नहीं shootout. guys, you don't understand. ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फिर? शूट आउट कौन सा था केस में बोलो? जो Well, ऑफिसर the बातचीत shootout करने गया था। was, well, the officer, Shaker, he was shot down. And that is when all the other officers who कौन सा were था वो report? covering the area, basically, they were also getting fired at. So we all had to return our fire to save our officer Okay. and to save our lives as well. What was the During number? the Alright, so वहाँ firefighter पे- also got down. सो बेसिकली मुद्दा ये था कि आप जो जो यू नो लाइक ऑफिसर्स जिनकी लाइक आंखें, पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इतनी तेज हैं कि मैं क्या ही बताऊं, उन्होंने जो वीट प्लांटेशंस देखे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, वो आप लोगों को वही ऑब्जेक्टिव था आपका, करेक्ट? जो कि एमडीडब्ल्यू जो चार्जशीट है उसमें भी लिखा हुआ है। Mm-hmm. Yeah, yes, that was. वीट प्लांटेशन एट कुगर एवेन्यू 13, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, सो इसी प्लांटेशन के लिए द मेन रीजन टू एंटर इनटू दैट प्रॉपर्टी वाज टू गेट होल्ड ऑफ दिस वीट प्लांटेशन, करेक्ट? Yeah, Kaushal, what is it? Yes, Am I sir. right? So this was your major objective, to enter a private property to get the wheat plantation, correct, Sergio? Yes, sir. All right, all right. Thank you so much. That's all, Your Honor. Yeah. Vichan, you want to ask any question? Any more questions? Sir, I just want to answer one question or concerns that our Mr. Digvijay Singh here brought. So, No, that's not your job to answer. That is the officer's job to answer. of course, sir, but I'm just making a point that he questioned the helicopters. Helicopters are equipped with high-tech technology, So cameras. tell me one thing, Vichan, this video. Yes, sir. Your officer doesn't know that? Pardon, sir? Your officer doesn't know it. He was there, right, in that heli? He never said that he was the one who was inside. Okay, he was not there, but still he gave a witness in a court saying that through the heli they found out. So he could have told a lawyer, right, that the heli is equipped with a camera and there's a photograph. उसको मालूम भी है कि फोटोग्राफ है नहीं है, क्या कुछ एविडेंस मालूम भी है उसको? Sir, it's Mr. Sehaj's first time in the court as a First time in the court, I understand that I can take that he forgot, but he could have told what. Intimidated, sir. So you are telling me you all have evidence. You are telling me you all have evidence from a helicopter which shows the cultivation. Yes, sir. Then you produce it later. Photos are That's it. already attached. Yes, sir. Yeah, you just okay, Mr. Whatever officer, you can rest. Thank you, sir. You can point out that evidence after in your evidence period time. Yeah. Your witnesses, no witnesses, anyone? No, sir. That was my last place for prosecuting Today, I would like to call in the next suspect. I can't hear because of the rain. Nothing, no, guys. This officer is teasing me in the court. I was sitting here. You be loud, okay? I can't hear now much. Whom you are calling now? Mr. Damon Biggums. Yep. Okay, he's come. Okay. Baga. Deepak. हाँ जी, हाँ जी। डेमन भाई, मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं आपका नाम
Damon begins. अच्छा शहर के संविधान पे शपथ लेता हूँ शहर संविधान शपथ लेता हूँ मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा थैंक यू Can I sit? You can proceed. Thank you so much, Your Honor. So the charge is again that Mr. Damon Biggs. I will. Yeah, you read it can out come again. close. You can come close near this, and you can ask the charges. Mr. Damon, I'm going to read out your charges again. And Yeah, sure. please think carefully before pleading guilty or not, because we have Okay. attempted murder of a government employee, No. criminal possession of firearm class 2, Yes. possession of stolen goods, No. cultivation of marijuana, No. criminal possession of firearm class 1, Yes. misdemeanor possession of controlled dangerous substances, oxy. Yes. Alright. So you are not pleading guilty to the possession of stolen goods. No. Mr. Damon, Your Honor. So again, like the fact that there was a court order that was passed in previous, where a phone dong is considered as a stolen good. What? If phone dongle, sir, phone dongle, it's considered to be a stolen good. It's a marked for police seizure. It's marked for police seizure. That's right. Okay, yeah. And we have the evidence that this phone dongle was found Objection, in the Your possession of Honor. Mr. Damon. Yes. Objection. Yeah. When the charge was told to Mr. Damon, it was said possession of stolen goods. I mean, stolen to, I think, Damon, since he doesn't know very well, he doesn't have any more knowledge about the court orders. So I would suggest if we could There's no explain court him order. what the stolen There goods is no are. court order on this. It is actually directly said that marked for police seizure. Okay, let me explain that properly to people. I think police also doesn't know this. When you get something marked for seizure, it doesn't mean it is illegal. It means it's marked for seizure for further investigation. Now you need to prove to the court how he used that thing in the crime. That you have to explain to court. So remember these things, guys. Yeah, we can Please continue. do explain what stolen items are you talking about? The phone dongle specifically that is marked for police seizure. It looks normal to me. No, it becomes stolen when there is. See, the whole idea is, I'll be very straight to you. It was marked for seizure to investigate it was stolen. So I hope you have the evidences to say it was stolen from someone. Is a court order that was passed by Danny Gibb regarding the phone dongles. No. The court order is passed on the basis of marked for seizure, and it's written there. Now the whole doubt is why it is marked for seizure is that the law and order thinks that it is a stolen product. It thinks it is a stolen product. Today we are having trial for it. I hope you have the evidence to prove that it is a stolen product. So, but that's exactly what you're saying. It, in the court order, it clearly mentions that if a phone dongle is found in possession of a person outside the premises of his own house, Okay. it will be considered as a stolen good. Yes, it is considered as a stolen good. I know that and I agree with you. But it doesn't mean that a stolen good is been in the judgment. It will be called a stolen good till you don't prove it in the court that it was stolen from someone. That's what I'm trying to say. The marked goods are for you, to your police to investigate from whom it was stolen, from where it was stolen, for what purposes it was used. Right, sir, I would like to ask Mr. Damon begin. Where did you find this phone dongle? I just bought it from the store, mobile store where I get my mobile. Which one? Which store did you buy it? Digital then. Do you have any receipt to that? Any transaction receipt? Might be like I bought it like I was 1.5 months ago, I guess. Correct. I have to check. All right. Sir, if you check the
I'm pretty aware of the inventory that Digital 10 carry, and the phone dongle is not on the inventory that they have submitted to the court. It is the phone dongle itself is not sold in Digital 10. That is what I would, and which is why I think Mr. Dave. He doesn't I have a would like to receipt say, for Mr. it Dave, also. Okay. yeah, and he also doesn't have a receipt to that. Okay. Continue. Plus, we have the probable evidence, probable cause to consider it stolen good because already marked for police seizure. Yeah. Continue. Another Mr. Be smart here. Damon, you This is what you need to said prove. you Now he had to be you ready did with not it. fire उसने the पहला प्लान करना मांगता था. gun. Stolen That's what goods you're saying. उसको मैं डिजिटल डेन से एक रिसिप्ट ला के I रखेगा. fired them, but not एक फेक रिसिप्ट करके रखेगा कि ये लोग डिजिटल डेन के तो विटनेस नहीं लाएंगे पुलिस for वाले. self-defense. तक करके फेक Self-defense रिसिप्ट against दिया what? कोर्ट में. इसलिए प्लान करना पड़ता है. Against the officer. Okay, so you did shoot it in order to hurt the police officer. That's what you're saying, right? Not to She hurt, doesn't but just know, guys. for my life to be And safe. he might Yeah, say I that shoot in my precedents self-defense. cannot be upheld. I know these But things what did you very expect well, how it is as an used. outcome of that shooting? Why You it is shot a written bullet to marked some, for on seizures for somebody. police to What do you investigate to expect see the if it is outcome to be? illegal The or person legal. to be hurt, right? Otherwise, it would be written I the will say illegal. that. Then what do you expect Objection, the Your outcome Honor. to be? My client has already told he shot in self-defense. I'm just talking about the outcome. If you're Guys, shooting guys, self-defense, just wait. I had been very specific to the people in the beginning of the case that I don't want indiscipline today. Officer, please just get that green suit guy. Just detain him. Now he's running like a coward, thinking that there are no cameras here which has captured his face. I don't know what kind of citizens are living in this city. Crazy people. Anyway, continue. Yeah. yeah, that's what I'm saying, right? We'll come back to the fight. You shoot a bullet. You are expecting, you expect the outcome out of that, right? Whenever you do an action, you expect an outcome of it. So what did you expect this an outcome of shooting a bullet from this firearm? At that point, my only outcome was to kill my own life. That's it. And how will your life be saved? Of course, by my weapon. I pulled out my weapon just for my self-defense. Your Honor, he's not answering clearly. He's just I playing used around my the firearm words. for that. He said he uses firearm for self-defense. That's what he's saying. Self-defense, exactly. But what is the outcome? Like, he's shooting. Who did you shoot? The officer, obviously, because he was standing in front of me with his gun pulled out on me. Again, sir, the firearms that were found on this person is class 2 firearm. A class 2 firearm, not just a class 1. An illegal class 2 firearm at that, which Mr. Damon does not have a license. He intended for the officers to be hurt, and so even if he claims that he was doing it in self-defense, he is accepting the fact that he intended to hurt those officers, and these officers were indeed hurt. He's also accepting to the fact that he indeed shoot the bullets with this gun. So even if he does not apparently plead guilty, he's just accepting to all these charges. No, he's not accepting. Objection. The he's not accepting to the charges. There is a difference. He's saying self-defense, right? Yes, sir, but he is accepting to the fact that he shot a bullet, he hurt a police officer, and using. He's saying he's agreeing to that, but he's telling you that it's self-defense, Sir, that not is criminal intent. Sir, the interpretation of his statement is up to you completely, but I have just. No, it's not interpretation. It's a simple idea. It is interpretation, sir. What is your section? What is the section? Criminal use of a fire. So what is a criminal use of a fire? To hurt somebody with a fire. That is the criminal use of fire. The intent is to hurt somebody with a firearm, okay, a loss of life or whatever it is. Now for him, he's trying to tell us that he has shot the firearm in self-defense. Objection. Criminal use of a firearm is using a firearm to abet a felony or a crime.
यहाँ पे he was To not hurt abetting someone. any felony or crime. In short words, He to was hurt someone with an intent. Yes. So he is making his intent clear that he was No, intended self-defense definition is something. That's what I'm trying to say. You can more caution him and try to get to this. Right now, what he's saying is self-defense is simple. The fear of his, on the basis of the fear that his life is under threat, he is self-defending it. That's what he's saying. You can talk more and try to remove more things out of him. Things will get clear for you, might be. Okay. So you shot this class 2 fire. Isn't that too heavy? I mean, where did you you don't have a definite license to this gun? That's right, Mr. Damon. You don't have a Yes, license to हिंदी class में नहीं 2 होती firearm. उतना. No, I don't have it. Mostly it's. Do you have a हिंदी में भी weapon करते हैं license? पर सब ये लोग इंग्लिश में Yeah, बात कर रहे हैं ना तो I इंग्लिश was में having, करना but it पड़ता है. got removed from me. Yeah, I was having We before. can't use. We don't know all the Why was words it in revoked? Hindi to use for criminal purposes. After this incident, they revoked it. All right. objection, relevant, sir. My client has already pleaded guilty to the criminal possession of firearm charge. What is I Miss am- Weaver trying to I am not establish talking here? about. I am not talking about that. I'm still talking about the fact that he used the weapon in a criminal. So criminal. In a criminal? Yeah. In a In crime. a criminal way. Okay. A crime. Yeah, that's what. So you're not arguing. the- You are actually not trying to ask the question on basis of possession of a way this because that he has pleaded guilty. Yeah. Yes, sir. So Okay. again, I'm saying that this person has fired a class 2 and as the evidence states that this person had a minute, sir. Yep, which is SMG, a submachine gun, which has a huge fire rate, and again, so when you say that you are using a weapon to self-defense, this person had a weapon license. This person was issued a legal weapon to use for self-defense. But no, he did not use a government issued weapon. He used a criminal weapon over here, sir. In illegal weapon. Objection, sir. Relevance. My client has already pleaded guilty to the criminal possession of class 2 weapon on him. Sir, I think. No, wait. Mr. Ranvijay Singh, I know what she's. I'll clarify her. Miss Vivi, you are trying to tell me that he was using a illegal gun. That means it was not for a self-defense. Yes, Your Honor, exactly. No. You are mistaken here. There are two different sections. That's the reason for that. Class 2 weapon section, possession is accepted. Self-defense, just because you are using a gun which is not legally given to you, doesn't take away your right of self-defense. Remember this, Miss Vivi. It doesn't take that right. It doesn't mean. ऐसे मैं एक example देता हूँ आपको. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है इधर हमको सेल्फ डिफेंस करने के लिए दो राइट्स देता है. एक वेपन को, एक हैंड गन को आप लेके घूम सकते हैं सिटी में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और दूसरा राइट देता है कि कोई भी ट्रेसपासिंग करेगा मेरे प्रॉपर्टी में तो मैं उसको फायर कर सकता हूं, ओके, विथ गिविंग अ वार्निंग और विदाउट गिविंग अ वार्निंग. दैट अलाउज हिम टू फायर थिंकिंग दे आर ट्रेसपासिंग. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं. अभी उसमें वो एक I'll give you an example, like समझो ये बंदा कोई बंदा रास्ते पे चल के जा रहा है, वो घर पे है आपने, और एक चोर घुसता है उसके घर पे. उस टाइम पे might be he had a weapon which is not legalized by the state department or the law department. वो सोच के अगर उसने सेल्फ डिफेंस नहीं किया तो उसकी जान जाएगी. So that cannot apply. You understand that? That period of time he has to do his self defense. He will face consequences for using a wrong weapon. That is agreed. But self defense का उसका right आप नहीं ले सकते on that basis. Okay, you can continue. All right. But again, we'll come back to the fact that the mens rea of this whole situation. All right. Mr. Damon pointed out the fact You can't that do self the cops defense with were PD. pointing guns. He's That's talking right, wrong. Mr. Damon. Cops pointed guns. But there is another it thing was. which might be Rez will touch, but he doesn't even know what he's Was talking. that a threat enough for you to shoot Because first? he has to use his head. Why did I mean, he as need far self as defense? He doesn't just even know it now. came out of my house, I saw some PD chopper holding up on my block, and I went to the gate to see what's happening.
Also, that was my friend Because with Marcus, who was cuffed PD's over problem there. is here The is they officer had to and the have a officer raid. was I don't know, pointing they have to have and a search fully warrant. automatic So SMG that on search me. warrant So allows PD in to the go case of inside. self-defense, I That take out time my your gun self-defense is and not there. If you done my that time fire self-defense. bullet, then you're criminal. Intent of Sir, killing. you see, But he if there is was no raid accepting warrant, that he saw his friend get arrested, and okay. he was actually defending himself against arrest. This is a criminal intention, sir, and not self-defense. He's accepting to the facts. देखो हगा I didn't हुआ accept बस. it. I said he was pointing the gun at me. I was barehanded. He was pointing gun at you. Yeah, I was totally barehanded. I just came to see what happened. And he was trying to point the gun at me from a long distance. He was pointing a gun at you from a long distance. How long of a distance? Currently where my defense law is at least that much. Okay. And Yep. you found that threatening, so you just shot him. Right? Yeah, sure. He's accepting to the fact that he is the person who shot. I again would like to come to the fact that this again American is not Constitution, self-defense. He was not shot. He was not at threat. Okay, if you consider being pointed a gun at, okay, it's a threat. But he shot the officer first without being in a grave danger. No, Okay? self-defense Objection, Miss is Vivi first shot. just told that pointing a gun is a threat. I mean, what is she trying to establish here? No, see, Vivi, Miss Vivi, what is self-defense? Self-defense is defending yourself before, mostly in this case, is before the front guy will hurt him. He defended himself. Now, again, I'm trying to tell you all, guys, listen to me properly. I don't know on what basis even he is answering, because you are also not asking him those questions, which I'm not understanding one basic fact here, that there is something which everybody should understand here, that police can point guns at any person if they found suspicious of, they can get attacked according to their SOPs, whatever. I don't want to explain those. They can do those things. Okay, but for that there is a process which they have to follow. Now, if they have followed those process and everything and all those things, then he pointing the gun at the police is not a self-defense. I'll be very straight on that. But court has to know all these things. For what reason the self-defense came and why the police also was pointing gun on him. So please go into that more. Yeah. And yeah, we asked for the search No, warrant I'm not asking and you. their ID cards. Why are you talking like the lawyer? I'm sorry. Yes, Bibi, you Sir, can ask I him. don't have any more questions. Thank you. Okay. Defense lawyer, please, you go ahead. Yes, for sure. Yeah, Mr. Damon, please continue. आप कुछ कह रहे थे, right? Yeah, please continue. We asked for the search warrant and their ID cards. They refused it, and they told us, "Please let us do our job." We just asked simply that we just want to see your ID cards, the search warrant. They denied for that, and I just went inside to. So none of the hold on. So you asked the police officers for their identification, correct? उसको मालूम नहीं पीडी सही नहीं And none of them showed you their badges or any identification. wrong है वो. Nope. All right. And when they were trying to, enter the property that you were in, so you asked them, like, do you have a warrant? Yeah, we asked them for any search warrant or something like that, any legal papers, but they didn't give anything. All right, and what did they say? They just refused it. They refused it, okay. Yeah. All right, point to be noted here on, clearly the cops, the police officers, मैं कभी भी police officers को, I'm sure they do an awesome job, but यहाँ पे the situation is something different. My client is already saying that, first of all, he and the guys who are living there, जो कि suspects हैं, मैं suspects तो नहीं बोलूँगा, I think I'll call them victims actually. जो victims हैं, मेरे clients हैं, they asked the police officers to show their badges, they declined. They asked, if you really want to enter this private property, you need to show us a warrant because this is a private property for sure. And they declined it, saying that it's our job and let them do our job.
this, along with the officers pointing gun at them, I mean, this clearly gives a total right for my client to, put up his firearms for self-defense. It gives the right actually to self-defense in that, but there is also a condition to that, is that you have to be having a government issued firearm, where they have little bit problem in that. But yes, it doesn't take away his right of self-defense. I do accept my client was carrying an illegal firearm, and he does plead guilty to that gravest charge, and he's ready to accept the punishments for it. But whatever happened back there, this is exactly But wait, why. we need to clarify from the DA. Do the police officers have anything as a raid search warrant, or they have they didn't have the badge with them, they didn't identify themselves to them when they enter their property? वो कुछ उस पे dispute है कुछ, there is something like that, Miss Vivi? Absolutely not. The officers went in their whole uniforms, in their Come closer. Sir, they did identify themselves. They were in uniform. They were in their cop vehicles, and they were announced that they have found evidences of an illegal cultivation inside the. But no. Evidence is why they told them. Objection. I'll to point out a fact. Yeah. I am not even making a question. Why? I'm trying to make a point. Clearing a point. Yeah. So मैं continue कर रहा हूँ whatever I was saying, since this has been brought up. So Miss Vivi Chan is saying that they were in all their uniforms and they were in all their cop cars, police cars. But sir, I have been pulled over, a couple of times, and जब भी मैं बोलता हूँ कि या मैं PD ऑफिसर, PD पुलिस स्टेशन में कई बार गया हूँ actually, and जब मैं बोलता हूँ कि I am Mr. Ranvijay Singh, I work as a lawyer, the first thing they ask is, can you show us your identity card? I say, भाई मेरे पास लॉ की डिग्री है, मैं लॉयर हूँ, मेरा नाम रणविजय सिंह है, देखो मेरी गाड़ी है, वहाँ पे उसको नंबर प्लेट चेक कर सकते हो. But they insisted बार कि can you please show us your identity card? Only then we'll be able to verify that you are Mr. Ranvijay Singh. So wearing uniforms, driving police cop cars is not a sign that they are police officers. If a citizen is asking for identification, it's the duty of the police officer to show the identification. Sir, this is all which is their that badge. Mr. Ranvijay is saying, because we never accepted to the fact that they did not identify themselves. You never denied never it even. been questioned. I never, because you never asked me, right? You never No, asked me. come on, I was it's not like that. submitting Are and you had an denying the objection, fact? right? You are denying the fact, right, Miss Vivi? Which fact? Yes, sir. You are denying the fact that Ranvijay Singh, whatever is saying, This is all that hearsay. Yes, hearsay. sir. This is You are all saying it's a hearsay. You are saying that your officers identified themselves, presented their cards, and entered the property, right? I am denying to the fact that Mr. Ranvijay Singh is making an assumption that the officers never identified themselves. So yes, I know, but you are accepting that the officers identify themselves. That's what you are saying. Yes, sir. Yeah. So to enter the property, you also must be knowing that the officer is required to enter the property with proper valid search warrant, or to even search something, or even an arrest warrant to arrest someone. Raid to is far away. That's another thing. But they have done that, right? Or they didn't do that? Get that. No, I'm asking. The Okay. No. I'll read. Permission to enter the company. No, I'll redefine the whole thing. You must have not got me well. Yes, sir. What I'm saying is, why did the officers actually enter the property first of all? To investigate on the evidences that they found, primarily from the helicopter images. Wait. Nobody investigates evidences. Evidence itself is, after investigating, you find evidence. Now, what you're saying, what prima facie evidence they found, they wanted to investigate them to convert them into proper charges, right? Yes, sir. Yeah. So they entered there for investigation. Did they tell those people that they have entered for investigations? Or did they took a prior permission from DOJ to go for any private place to investigate? They did not take a prior permission from the. Okay, no problem. There was a lapse on that. But otherwise, they have done everything you are saying. They have identified themselves. They have shown their ID cards, everything. Okay. Yes, sir. Absolutely, sir. Yeah, Mr. Ranvijay Singh, you have to say something on that. Yeah, we'll go. Yeah.
So Mr. Damon Begums ने बताया कि he asked for their identification, जो कि उन्हें नहीं दिया गया. Then he asked अगर आपको you really want, if you are police officers, then आपके पास search warrant या कोई warrant, any government issued document तो होगा, because you are trying to get into our private property. वो भी उनको deny कर दिया गया. And one of the suspects, I mean one of the victims actually was cuffed as well, right, Mr. Damon? You enter my he was property, I'll shoot forcefully you. cuffed. Because my law is For higher what than reason? yours. I have a gun They authorized by don't the tell a state reason. to They just fire on forcefully anyone. cuff All you. right, all right. पर वो law थोड़ा अभी कम हुआ है, different states. People understand now. But that's their constitutional right. Yes, Ranvir Singh. क्या हुआ? सब लोग चुप हैं. Guys, can you hear me? Yeah. Yes. Yes, sir, we can hear you. Loud and clear. Okay. All right. So as Mr. Damon said that he's one of the individuals, even after repeated requests to show us if they are police officers, please show us their badges, or if you have any, if you are government officials and you're actual police officers, please, show us any warrant that, you want to enter into this private property. And since ये सारी चीजें नहीं हुई वहां पे, and police tried to trespass, and they even arrested, I would say cuffed one of the suspects. And yes, that is all a caution that they have to show how if someone is trespassing into a private property, they have all the right to take necessary actions. हाँ, गन इलीगल हुआ तो क्या उसका सजा मिलेगा, उसको गन का तो मिलता ही है. इलीगल उसने एक्सेप्ट किया. Okay. You can go and relax. What's your name? Mine? Yeah, you can rest. You can go and sit in the witness. Yeah, this. Thank you, my lord. Yes, Miss Vivi, any officer you want to give who was a part of the, because see these things, you all both are speaking lawyers, but I'm not getting a clear-cut answer exactly what happened. But I'm not even sure that Mr. Ranvijay is a lawyer because, well, he is not in the DOJ app. He doesn't have an MDW. Might be he's a legal aid. What's the problem on that? That's not an issue. I think Miss Vivi needs to get her eyes checked actually. Anyway, that's not a question here. Why all are talking about lawyers? That thing is, you all talk to your bar counsel and fight there. I want to know exactly, because one side has put some allegation saying that police didn't identify themselves. I need to hear from the person police who was leading that operation to come to the witness box and clarify doubts for us. I think this case is getting on to Miss Vivi's head, actually. Hey, it's okay. Mr. Ranvijay Singh, relax. Please call the officer, please. Just I have to check if the officer who was in charge, he was here. I think he left. So I just go ahead and ask. He's sick. He is sick. He had a fever. So someone else will be there. I don't think so. One guy went there. Yeah. Yes, sir. Which is why I have to ask who was the second in command. So just give me. थ्री नॉट टू नहीं चलता है अभी तो, नहीं, इंडिया का लॉ नहीं है. आप जो बोल रहे हो इंडिया का सेक्शन से, ये अमेरिकन सिटी है अभी तो. 302 मर्डर चार्जेस ऑफ इंडिया. ए टाइम आउट मत दे दो. लाइट, जस्ट रिलैक्स. डोंट गिव एनी टाइम आउट्स. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. पीपल लर्न हियर पीपल आर नॉट टू बी पनिश्ड इन दैट टर्म्स. हाँ, एक समझता है नहीं उसको दे सकते बाद में, पर रोक सकते हैं इधर. Yeah, he admits he kills officers with self-defense. In America, self-defense is this. If you have not followed your procedures as an officer, you will be counted as self-defense only. Dead because of self-defense. Yes.
अरे पहले तबीन उनको पता कोर्ट को मालूम Your होना बनता Honor, है कि it seems पुलिस क्यों that गए the अंदर. officers who were involved in the situation are not here right now with us. Why? So I Because they would only request a love to second. go to people's houses and trouble them and not to come to courthouse for accountabilities. Not even one officer. How many officers were there? Many officers' names I can see were part of that situation. From that one officer cannot wait. This is not a good way of defending things. This has happened before also. The last you all have given a gun trafficking or gun this charge. None of the officers came here. The state had to pay money because of a wrong this for the civilian. This time the punishment will come on police. So please ask the High Command again that why exactly is those officers, one of them also not available? There's one officer, the helicopter, the guy there was one guy came before, right here. So, yeah, he was already called to the witness box. Yeah, but he was part of the this entering during the search operation of theirs or whatever investigating operation. Yes, the To call him. No, he will clarify our doubts. Just call him. We just want to have to clarify our doubts. Okay, all right, so I will do. Sahaj, can you? Hello, Sahaj. Can you hear me? Yeah, go to the witness box. Yeah. The officer you were is sick and we have them. अरे मत करो ये चीजें. Light, just relax. It's not law of law of Santos. Law Santos works on the basis of American law, not full American law. You have to take refer from the American law how to prosecute. So these police officers, all guidelines are based on American this. आपको क्या दिखता है कि आरपी सर्विस इंडियन नहीं करते? नहीं, वो तो अमेरिकन सिटी पे ही करना पड़ता है ना. It's already taken from other servers from America who are practicing. All the sections are also based on American law. Greetings, Your Honor. हम लोग कर सकते हैं इंडिया का भी, but it's very difficult. Yeah, good evening. Have a seat. Have a seat. Thank you, Your Honor. Just you're under the oath, so speak everything correct only. Don't speak anything false. Yes, just sir. clarify to the court one thing that did you all, when you all went to that place, you all were wearing your uniforms? Yes, sir. Okay. So you all have gone in your official vehicles, right? Yes, sir. Okay. Did you all show your ID cards and did you all show your ID cards? Tell me that first. Yes, sir. We did show our badges. You all showed your badges. Yes, sir. Did you all produce the written thing from the DOJ? For what reason you all have gone there? They did not, sir, because they didn't No, have. no, wait, That was before the raid. Wait, relax. So that was before the Answer. raid, right? Sorry? So that was before the raid occurred, right? The No, not before the raid occurred. I'm not even talking about a raid. I don't even know if you all went for a raid. I'm asking you, they all entered a property as per the defense, prosecution is the thing is you all entered a property on the basis of some evidences you all had collected, prima facie evidences you all collected from a helicopter regarding a cultivation Yes, sir, of illegal marijuana plants. Now you all had entered that property to do a further investigation on those bases so that you all get a proof to arrest them or to, to prosecute them. So that is what I'm asking about. When you all entered that property, you all said that uniform, you all wore, everything was perfect on that. You all even showed your ID cards to them to recognize yourself who you all are. But did you all have told them for what reason you all are come, in which the legal process is you have to have a written DOJ order that you are granted for this investigation or whatever, or to do any search or anything like that? Did you all give that to them or tell them that? So, as far as I believe, we identified that we are coming here to remove those plants. Okay. So you all told them If you're not sure about, so sorry, Your Honor. If you're not sure about a question, you can take your fifth. No, he has already stated that they came to remove the plants. Yes, They sir. sure To about remove the the fact plants, that but they we show. did not. Vivi, just relax. Don't feed your witness what you want to say. Relax, Just Miss Vivi. asking. So you all went there to actually destroy the plants, right? Yes, sir. We went to destroy the plants. Not to investigate. For the. So for, can I mark this, because as you said, investigate, and you needed a paper evidence, written evidence, or a written No, not agreement from evidence. the Written, DOJ, right? written permission.
written permission for DOJ. I am not sure about the written permission from the DOJ part. I was the You're not lead sure about that. investigator over there. I Yes, have I'm also not not sure. seen any permission. That's the reason I really wanted to know if you all have some. But okay, forget about that also. But what I'm asking is the purpose of yours to go there was to destroy the plants, right? The plant, sir. Yes. Not to investigate. Yes, sir. Yeah, so it means that you all had got a prima facie evidence and already convinced that that prima facie evidence is enough for you to go and destroy the plants, right? Could you repeat your statement, sir? I mean, you guys got a you are the guy only who came here. You are the officer only who came and told us from the you all got a evidence of those plants, right? From a helicopter. Yes, sir. Yeah, that turns into a prima facie evidence. Now, with that prima facie evidence, you all already believe that that evidence you all can go and destroy the plantation. Yes, sir. No, that's what you are saying, right? Yes, sir. Okay. So normally, whatever they are actually disputing on the fact you didn't even show the badge or something like that. They are that the other witness is disputing on that. So, defense lawyer, you have anything to say regarding it to cross him so that what he is saying right now is they did all those things. Only they didn't do is they didn't have the warrant to enter inside. Exactly. And they didn't have. But बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. So he Mr. Gill, right, officer? Sahaj Gill. So आपने बोला कि आप वहाँ पे पूरे मकसद से पूरा हौसले बुलंद करके गए थे वीट प्लांट्स डिस्ट्रॉय करने, करेक्ट? Yes, sir. एंड वो वीट प्लांट्स आपको हेलीकॉप्टर में जो 2 ऑफिसर्स बैठे थे उनको उड़ते उड़ते दिखे. अमेरिका में ये नहीं होगा Yes, sir. ये आरपी इसलिए हो रहा है. Do you have any ऐसा थोड़ी हो जाएंगे पुलिस report अफसर. that पुलिस अफसर those पूरा were रेड actual वारंट wheat सब plants? कुछ लेके जाएंगे अंदर. इनके जैसे आरपी Those इधर were कोई wheat कुछ plants, नहीं sir. करते We have forensics. आरपी है ना मजा है. Was the मैं forensic फिर transferred on the report? वो पुलिस ऑफिसर वैसा तो No, I'm just asking. Like forensic के लिए तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता ना उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. करेंगे पहला उतने कितना कितना. बट आप तो वहाँ पे फुल हौसले बुलंद करके उखाड़ने गए थे क्योंकि आपको पहले से ही पता था वो वीट प्लांट सामने से भी चलती है. इंडिया के जैसा नहीं है. Yes, तो sir. वही मैं पूछ रहा हूँ जब आपको पहले से ही पता था वो वीट प्लांट्स हैं. So that is what I'm asking. How did you get to know about it? There is a way of getting in Thakur. You don't know. There is a Uh, channel for them. Now what so, they did, I will tell you all. Now wait. I no, By made- power of mistake they did, I observation? didn't tell you all. I know the whole case well. Well, you can say yes. आपको बताएगा मैं वो लोग. All Let me right. Point clarify. to be noted, sir, Your Honor. sir, let me clarify. No, you Sir, no let me need to clarify. That's all I want to ask Sahaj Gill. It's Let okay. me I don't need elaborate clarification. more on this. Let Your let elaboration is give him all a right. chance. Give him a chance. Yeah. What do you want to Let say? me there? elaborate more on the point, sir. The primary officer, who is also lead ranger in the park ranges, and I'm also a sergeant in the park ranges, we have been trained and we mostly perform our duties in the wildlife, taking care of flora and fauna around Los Santos. So we have experience on what plants are what and what not. No. Your experience doesn't matter on those things. Court believes in the expertise of the person who is authorized for it. Yes, sir. Now let me tell you, in Los Santos, our city, the expertise for the knowing that it's really marijuana plant is given to the people such as the EMS, who will give a complete report to you. Okay, everything that this is a wheat plant and whatever it is, and even will tell you if this wheat plant is a male, female, what is the THC level of it, and all those things. They can expertise on that, Yes, sir. and the other person I who can understand, do it, which legally should police should not do it, but they can do it, is the dispensaries. Yeah, there are yes, two sir. people who actually does that. So your expertise is not important. You might be a wildlife guy, your expertise with animals and plants. You are not a botany guy, or neither your expertise in your officer. Your job is to prosecute people and to make crime less. That's it. Yeah, continue. So yes, sir. I believe I'm also a part of the forensics team. So we also deal with Mr. Sahaj Gill, forensics lab में होती है, एक पुलिस चॉपर में बैठे-बैठे नहीं. Sir, Get this चॉपर fact में straight. बैठे चॉपर में बैठे वो बोल रहा है नहीं, I understand वैसा that नहीं, वैसा chopper- no, you didn't get what he's saying. I'll tell you what he's trying to tell you. फोरेंसिक्स आप प्लांट को लेके फोरेंसिक्स कर सकते हैं. पुलिस चॉपर के फोटोग्राफ से आप फोरेंसिक्स नहीं कर सकते.
समझा क्या I बोल रहा है? also understand that part, sir. That is या that फोटो से the फॉरेंसिक नहीं होता है objective ना event. आपको। देखो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था इसलिए कि आप लोग इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, तो प्लांट को डिस्ट्रॉय क्यों करना था? प्लांट को कॉन्फिस्केट करना था ना। So we do both. We वही पूछ take रहा था मैं one or two आपसे। samples और and then we destroy the other ones. नो योर कलेक्टिंग ऑफ द सैंपल शुड बी एवरीथिंग। सी फर्स्ट गलती है आप लोगों की कि आपने परमिशन नहीं दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने के लिए। सेकंड, आप लोग का इन्वेस्टिगेशन में आपको वो चीज होनी मांगती है कि अच्छा हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं देखने के लिए ये रियली मारिवाना प्लांट है, तो आप तो माइट भी उसका सैंपल ले सकते थे, नहीं तो उसका उस टाइम पे क्लोज फोटो ले सकते थे प्रॉपर्ली, एंड ऑल दोस थिंग्स शुड हैव डन। डिड यू ऑल डू I दैट? think we do have a close photo. Yeah, you'll have a close photo, right? Now you'll Yes, sir, destroyed we the do have a plants. close photo. No, Yes, you'll sir. must be having some evidence, but y'all destroyed the plants. We took samples of 2-3 plants and we destroyed the other ones. Now let me ask you one thing: are you a judge? Yes, sir. No, sir. So how did you destroy the plant? Did you get a court order to destroy the plants? I'm not aware of the court order that was given to destroy. No. the I'm plants. asking you, how did you? How not you, but how did y'all think also to destroy plants when? अच्छा एक बात पूछता हूँ। इमेजिन वो डिस्पेंसरी का कल्टीवेशन था, लीगल कल्टीवेशन था, और आपने डिस्ट्रॉय किया तो बाद में वो तो कोर्ट ही बताएगा ना क्या इलीगल और लीगल है। वो आपको सिर्फ वो कोर्ट में दिखाना है कि हमको इस पे ये है, हमारे पास एविडेंस है कि ये इलीगल है, आप थोड़ा बताओ हमको कोर्ट जजमेंट कि ये लीगल है इलीगल है वो। पर इफ यू प्री डिफाइन दैट इट इज इलीगल एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, इट्स नॉट फेयर जस्टिस। You can confiscate the plants and keep it with you. If court tomorrow says they are legal plants, you give it back to them, whatever you removed or whatever, compensation will be paid to them. But court tomorrow says yes, it is illegal, then you will destroy it after that. Right? Right, sir. Yeah, so there is a lapse there, whatever it is. So that's okay. Ramesh Singh, you want to ask something more? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बारे में लाइक आई थिंक वी हैव हैड काफी ज्यादा बात हो चुकी है। आई थिंक दैट्स ऑल योर ऑनर फ्रॉम माय साइड। ओह या वन मोर थिंग, सिंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रह गए, मिस्टर सहज गिल। यस सर। यू जितने भी सस्पेक्ट्स थे जिन पे आपने लाइक दोज हु आर अक्यूज्ड, Yes, sir. उनके एक बार आप नाम बता सकते हैं मुझे? Not every single one of them, sir. Every single one or just a few? I mean, देख के ही बता दीजिए अपनी रिपोर्ट पर। So you want me to go through the report, sir? Yeah, please, go ahead. They have to have us. Your Honor, would that be fine? Oh yeah, please go ahead. हाँ, report is already submitted as an evidence. The charge sheet is already an evidence. No, you can go through it and let me. Exactly? I'm just, मैं बस, Your Honor, I'm just trying to know the name of suspects जिन पे Mr. सहज गिल ने रेड की, उनके नाम पूछ रहा हूँ मैं, Mr. I सहज गिल। believe you already have the report as well. I'm just trying. You can just open your I'll come to my and point. Read those names, right? Yeah, please, Mr. सहज गिल. I'll come to my point later on. Give me 1 second, sir. Reason है इसके बहुत tough है इधर, weak script है उसका। So we had 7 suspects, and I'll go over from All the right. top. Sure. We had Damon Bigums, Mr. Ganesh Gatonte, Mr. Vin Marcus, Reason escort Mr. start हो Raga जाएगा तो they can Jones, do that RP. Mr. Liam Parker, and start, Mr. Stephen Carlton, and Mr. Usman Rathi. Use So ये 7 Escort के सस्पेक्ट time आपने वहां पे अरेस्ट किए, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? So we charged them with the possessions that बिल्कुल, we found, बिल्कुल। and then उसके बाद
Raid warrant was pushed by Okay. lead ranger Any Yuvaraj. 7 suspects पे, correct? Any 7 suspects पे? Yes, sir. Are you sure about it? एक बार कोर्ट को अच्छे से बता दो Yeah, please. intercept account. क्योंकि जो मैं next बोलूँगा But फिर not आप meta करना मत. wise, RP wise. Yes, sir. Because we have those things. We have a lot of. Then meta why did the and police everything. conducted a raid on Mr. Wait. Jagesh Kumar. Why were the properties of Mr. Jagesh Kumar raided as well when he was not in one of the prime suspects that were caught? And Sir, I Your was Honor, not you in- can check. Sir, I was in not the... part of the raid. I cannot accept or deny those facts. Okay. All right. But yes, you can So- tell me about that. Yeah, Your Honor, if you can see the report that was first presented to the court, in which ये जो कोर्ट केस जिस चीज पे हो रहा है, like पहली जो रिपोर्ट इन्होंने रिपोर्ट तो मैं नहीं कहूंगा उसे, आई थिंक सो इट कुड बी एक रेड शॉपिंग लिस्ट बोलूंगा. जो पहली रिजेंट हुई थी उसमें देयर इज एक इनोसेंट बंदे का प्रॉपर्टी was breached and raided, Mr. Ganesh. Okay. Mr. Jagesh. And the report, the charge sheet that was presented to the court finally of all the जो दुर्घटना हुई थी, उसमें there is no mention of Mr. Jagesh Kumar. And Mr. Sehajgil clearly mentioned जो 7 suspects वहाँ down हुए थे and the 7 suspects जो वहाँ पे present थे, उसमें जगेश कुमार नहीं थे. Is it true, Miss Vivi? Is it true what defense law is saying? Miss Vivi? I think Miss Vivi cannot hear me or something. हाँ जी. दीपक जी. वो थोड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो डीए है उधर ना, उसको थोड़ा नज़दीक में जाके बोलो बुला रहा है बोल के. That guy who's come in the bag and all this, please get out from here, otherwise I'll put an arrest on you. हाँ जी. मैं लेके जा रहा, गालियाँ दे रहा है. Officer, please look at it. हाँ, आप दीपक उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाओ. अच्छा जी. Vivi ma'am. Yeah, sorry about Yeah, did you hear what the defense lawyer said? Yes, Your Honor, and Is it true? the DA office is really sorry all the blunders that police, the PD department Blunder? has created. Blunder, I said blunder. And Blunder. DA office would like to rest the case. We will no longer be representing the PD in this case. So that was true that they raided some other person's house? Absolutely, sir. His properties were raided, and he was not even. They didn't Sorry, this. the DA office will remove themselves from this case. No, the further questions can be answered by the police department themselves. The end of it, you are the department actually. You can't leave it on them. But end of it, yeah, if it's true, it's true. Then the PD went too ahead on I'm not things. aware of the facts, You can sir. rest, officer. Officer. Yes, sir. You can rest. You can rest. There are no more questions to you. So anyway, let's see. Thank you, Your Honor. So there is a raid also which has happened wrong. Okay. What I'll do is y'all can give your final statement and we can go ahead. I'll see what exactly can be done on these things. Officers, do you all want to say anything regarding this thing? Yeah, sure, sir. Be loud and come in front. And come in witness box and can tell also. Sure thing, sir. Blunder किया. Wrong person को raid मारा. May I have a seat? Yeah. Just tell us, you are under the oath anyway, but just tell us that is it true that officers raided a house which was not listed actually in the raid warrant? Sir, I was told by the officer, the primary investigating officer, Yuvraj, of the Rangers Department, that the properties that were listed, everything was already investigated upon and everything was listed properly. So the property is owned by Jagge. Yeah.
Yeah, the property owned by Jagesh, Mr. Jagesh Kumar, the warehouse on Orchardville. It was investigated upon by Yuvraj himself, and he had a report about it, according to which it was raided. The No. investigative Report report. about it is I understand, but was it listed in the raid warrant? I'm not pretty sure about that, sir, because Yuvraj is the one who What had that we need to information. know was, see, y'all asked for a raid warrant, and y'all have given some Yes, names sir. for raid warrants. Was this guy's name there in the raid warrant? Did y'all take permission So for the raid I'll have warrant from to the DOJ on that his name? I'll have to recheck, sir. Yeah, it's easy to I'll have check. to Check the recheck with wherever y'all are Yuvraj. asking raids, y'all can ask that, check that email, you'll come to know there. Sure thing, sir. Give me 1 second, sir. Common in IRL government also. Type. Light, relax. Yeah, go to sleep. Go to sleep. You have classes tomorrow 5 a.m. Yeah, good night. Light, you take care. Yes, sir. So, Officer Yuvraj, the investigative officer of this, had evidences of trucks being involved in transportation of marijuana to these said warehouses, and therefore they were mentioned in the raid request. No. In the raid report, when you asked the raid, and Justice Ahmed has given the grant, the raid grant, this I think approval. In that report, did you all Yes. put this guy's name? Yes, sir. The properties were listed. His property was listed. Yes, sir. Yeah, but now on what basis those properties was listed? On that same incident, sir, what they have asked the raid for? Yes, sir. It is related to it. It was investigation was taken upon it, and the trucks involved in that is okay. That you'll Yes, have sir. to explain actually, whatever it is. But the main thing is when you ask, see, when you ask a raid from a judge or something, you list on what basis you ask for raid on. Okay, what is the incident you are asking the raid on? Was it listed in that incident that because of this incident we are doing a raid? Yes, sir. In the report, Yuvraj mentioned all the evidences leading upon to the raid of these properties. Yuvraj mentioning is a different thing. I am asking, let's go in the raid, okay? Let me read it for possible if it is 1 minute. Give me 1 second, one. DOJ, कहाँ है DOJ? रेड पूछ ले DOJ PD. PD. ये चैनल है ना मेरे चैनल DOJ PD. Fuck. Can't find. Yeah, I found. Okay. Let's go in that piece. Okay. Which one? 1 minute. Huh? Can you guys tell me where exactly the raid warrants are issued? Which email? Yes, sir. Give me 1 second. I'll tag you. 1 second, sir. DA will know. DA on which channel it is that raids are issued? The Leo DA section, sir. Leo DA. Okay, 1 minute. Leo DA. Ah, yeah, I got it. Yeah, I got it.
Yes, sir. Yeah, there is a street crime unit has asked for a raid. There was a weed plantation inside a Cougar block. He got 12 officers to go to clear the weed plantation and try to talk to the people who were there in there. Situation escalated, they started shooting, the suspects were neutralized. Requesting a raid warrant on the properties and garages owned by 7 individuals who were arrested on the scene trying to protect the weed plantation. Okay, so this raid was on 7 individuals. So now the person which the defense lawyer has said, is that person involved in this 7? No, sir. These 7 were already at the compound, but the So property raid is asked listed for these in- 7 guys, right? Then how can you raid someone else? Yes, sir. Sir, it is mentioned in the document. That is No, that is a blunder now. I will be blowing the officers who made that document. That is telling lies to the judge. You are telling the judge that I want to raid 7 individuals, but you are listing properties of other people. That's a lie to the court. Why wasn't it written there that we are raiding 8 individuals? And why it should be defined there, no? That 7 individuals were arrested on the scene and 1 individual we were investigating. There's nothing mentioned Yes, there. it is mentioned, sir. It is mentioned in the document that the Request raid. narcotic. It was all Request- investigated upon the same. No. See, 1 minute. Let me open that document also, man. Okay, read that raid document. On 1st July, weed sir. plants were spotted inside the Cougar block random. And a photograph. No name of the 8th person. On second, detectives Asan Sage and placed followed a truck from the compound to the warehouse. No name mentioned of the 8th person. Some evidences of the incident. Vehicles which were involved. Vehicle photos. All this vehicle and trans were accessed just before the shootout. Right? No name of the person. Yes, sir. Yeah. After that, Bison, Damon Bingus, Ganesh Gaitone, Dean Marcus, Raga Jones, Lim Parker, Stephen Carlton, Usman Rajput. Is the name even listed sir. in this? No, sir. So where is the name listed? So the name of the owner was not listed, but the properties, like basically the No. properties were listed. We don't want to the- know the name of the owner. We want to know which people you are raiding, and those people have to own those houses or those warehouses. Are Yes, sir, there I get any? your point. Okay, let me ask you another thing. Are there now properties to be raided? Now in this there is list of properties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now just clarify this to court. Out of these 9 places, is there any other owner besides these 7 people who owns these properties? Yes, sir. I believe that the 3 properties, the Orchardville Avenue properties that are listed, they were owned by Jagesh Kumar. I'm not sure if all 3 were owned by him, but like some of them were definitely owned by him. But then why you all raided those places? You have told lies to the judge. Yes, sir, because you had to tell in the warrant the 8th person name also and why all are raiding his place. You all didn't tell that to the judge. Now the judge has given you Okay, sir, warrant or 7 people and their properties. How can you enter another property? It's a blunder. That's a lie towards the court. yes. Oh my god. Sir, but in total there was only so by the way, there was only 7 people were raided that day, by the way, because properties of Stephen Carlton weren't raided at all. So, No. but yes, but his name wasn't present there, the owner of the No, warehouse. So tell I me agree one on thing. that part. Out of the raid, all the raids you all already conducted, did you all conduct any raid on that person's property? On which person's property? Jagesh Kumar, right? Yeah, the guy whose name is not here. Yes, sir. Then a blunder has already taken place. Okay, sir, that's fine. I No, understand that's the not mistake. fine. No, sir. I mean, like, I understand the mistake. It's a grey mistake by the police. Big mistake. There was already one mistake which I could understand, that you all entered a property without asking the DOJ, assuming it's a public property.
Okay, that was a grave mistake first. In that, now the accused got a chance to say that it's a self-defense, which the constitutional right allows him. If any trespassers come inside the property, they can fire any on them. Thinking anything, that they are robbers or anything, that's their justification. There one blunder happened. Now, there's a second blunder which is happening here, is somebody else's house is getting raid who is not mentioned in the raid report. Even if your officer would have mentioned his name and said that on 2nd June, on the 1st June, whatever like that, he mentioned that we went to this person and this was the person the place belonged to. And mentioning that thing, how it is linking to these 7 people. That was enough. Sir, I agree that the person's name was not mentioned there, but we do have all the evidences supporting the you probable might be cause having that- evidences. You can't tell me now after doing the raid that your evidences are there. Those things only happen before you ask the raid, right? You have to show prima facie evidence to the judge and Sir, ask for a raid. Yes, sir, it is mentioned in the I'm talking about the evidences already mentioned in the report, sir. Yeah, your evidence those are the is ones that I'm whatever talking it is, that's okay, no problem. You showed evidences and everything. We don't give you, we give you evidence with these are prima facie evidences. On that basis, we give you chance to collect more evidences. Now you have taken and collected evidences of a person who was not mentioned in the raid. Now he can claim tomorrow you all planted dead things in his house. But sir, we didn't raid the sorry for that. We did not raid all the properties owned by Jagesh Kumar. We only raided the particular properties mentioned in this report. Yes, you don't have to So raid it was all. about the property. That's The property, any property it might be, till you are not given a permission. He might have AK-47s, he might have C4s, he might have fucking nuclear bomb there. The whole idea is till you get the permission to enter there, you can't enter his house. That's his civil So we liberty and asked- rights. Sir, but we did ask the permission, sir. His properties are listed. That we No, raided, his and properties it are was a listed by competitive- fake way. I think you are not even getting it. It's a crime by police. Your police should have been suspended by now. Because you have entered someone's property by telling lie to a judge. You have told, you have directly taken a raid warrant by showing wrong report. The report is not proper till you mention his name. Till you don't mention the person that whom you are raiding, the report is wrong. Here what has happened, the judge is thinking these properties belong to these 7 people. That's the reason he is issuing you the raid. Because judge doesn't have a time to go and check that whose house is what. He accepts that the police are faithful to him in a law and order. That's the reason with that faith he is accepting that raid. But it is a scrutinized. Raids are scrutinized in the court later on when the evidences come. But now when we are scrutinizing, we are coming to know that the police have taken a raid which they have not listed and the judge doesn't know about those things. He doesn't know these houses belong to someone else. Okay, sir, I understand your point. That's the whole point here. You can't do those things. That makes you all arrogant and the civilians then leave the faith on you all. They think you guys are also prosecuting and also the judging on the whole thing and deciding on their crime. In a democracy, it is not like that. Deciding of the crime is somebody else's job and prosecuting is somebody else's job. That happens might be in a dictatorship or autocracy, but not in a democracy. And you all have to show that to civilians so that they have more faith in you all. If you practice this kind of things, then they won't have faith in you all. Alright, sir. They lose We'll make faith on you sure all. this kind of blunders not. This should not repeat. This should not repeat. Okay, you can go now. It's not your mistake. Whoever has done that, you all next time do it proper. Understand. If you all don't understand, Sure thing, sir. you all ask the DA. Take some law advice from the DA. She will help you all with that, and you will be able to ask things properly. Okay, you can leave now. Alright, sir. Sure thing. Thank you. Yeah. Another blunder. Guys, DA, please come closer. I want to have a side bench with both the lawyers. Please come closer, both of you all. Yes, Your Honor. There's a blunder here. Even if you forget the first thing that you... Sir, Mr. Gaiton did hit me with a shoe and that is not acceptable, right? I can't, a little bit loud, I can't. Sir, I was just hit with a shoe by Mr. Gaiton and that's not acceptable right in front of the court. What? Yeah, I was just hit by a shoe. Yeah, to arrest that person, no? By whom?
Who has hit the shoe? I have. Hello? Yeah, Miss Bibi, who has hit the shoe on you? Sir, I don't know. It came from the back. I didn't see. Officers, what are you all doing? There is somebody using shoes to hit on someone. Just see, just check all the people who is not wearing shoes there. I think the camera should be checked. Did the officer find the person whom I had told to detain? आवाज आ रहा है क्या तुमको उनका? Officers, come here. Officers, I asked her to detain someone. Did you all detain that person? अरे किसी ने जूता मारा पीछे की तरफ से from the upper side. Yeah, from the upper side. Yes. Sir, there is someone like ऊपर से आया शायद. Come on, guys. हाँ, the guy is still there. जिसको detain करने के लिए बोला था. Dekho, guys, y'all are disturbing our proceedings. For you, it might be fun. Now, punishment also will come. And then don't cry for it. कौन मारा था जूता यहाँ से? The guy with the bag. The guy with the bag. Get that guy with a bag here. It's not me. I didn't do anything, bro. What Yeah, the it's okay. fuck? Come here. We'll do something for you now. Yeah. Guys, listen. There's a blunder here. There's a blunder. First one, even we forget the first one, saying that they entered for investigation, whatever it is. Still, he's saying that they went to destroy. They don't know about it. I agree to that. But this should have not happened. No, the raid on the wrong person is a wrong thing. Sir, I really don't want to, argue any further, but I will make the point that there in the report itself, in the read report, it is mentioned the fact that there was a truck that was followed from leaving from Cougar Avenue, which went to the warehouse of Mr. Jagesh Park, which is why they asked for the raid warrant on Mr. Jagesh Parker's. But they didn't. They should have always asked that raid warrant separately. Because they have shown an incident report of what has happened with the 7 people and added, they didn't even mention in their that other document of which is there. They have not mentioned his name. They have just listed his properties. Now, you tell me, judge, he will give you a warrant basis on the description. He will see only prima facie evidence and he'll give you. Now, it's the police's job to list the right properties. Even if they think that those properties also have to be raided, उसको सेपरेट रिपोर्ट बनाओ, नहीं तो ये रिपोर्ट में ऐड करो और एक कॉलम और बताओ कि हमारा पहले का इन्वेस्टिगेशन ये बंदा मिला था, वो अभी नहीं है ये सिचुएशन में, पर वो भी इंक्लूडेड है इसमें. ये बताना था ना, नहीं बताया वो लोग कुछ. Absolutely, I agree. अच्छा, छोड़ो वो बात को. I think whatever is taken from his this and all this should be given back, yeah. All those things, because we can't, we cannot reverse the whole law or something, but yes, we can see that this thing never happened. So I think the cops, whatever they recovered from his properties right now, should be given. That should be not even a part of the case. They should be written back, because the cops has done a wrong way of presenting them in the court. The crime must be done, but presentation also important in the court under the law, which they didn't do. So that guy, what's his name? उसका नाम क्या है? Officer who made the report. हाँ, जगेश कुमार का जितना भी रेड हुआ है वो अभी केस से निकालना है, उसको देना है वापस सब कुछ. That should be not aided first. That should be returned like without even being a part of the case. Otherwise, we can. They have already pleaded guilty in some things. What they are not pleaded guilty right now, I will go through that. Y'all give me a closing statement, both of y'all, and then we can go ahead with that. But right now, from the case, जोगेश कुमार का जितना भी जब्त हुआ था सब कुछ, वो ये केस में इंक्लूड नहीं है, तो उसको वो वापस मिलना मांगता है. कॉप शुड गो एंड रिटर्न दोस थिंग्स बैक, एवरीथिंग. Alright, sir, I'll instruct them to do so. Do that. Tell them to give everything back of that. Okay, so you all can start with your final statements. Prosecution, you can start.
मैम केस के बाद में थोड़ा सा बात कर लेंगे बाहर आके प्लीज आप। ये कहाँ गया? फाइनली दे पनिश पीडी नहीं नहीं पर उनका गलतियाँ हैं, इस बहुत गलतियाँ। मैं बताता हूँ आप लोग बाद में, केस खत्म होने दो। That's how law works, Wildstorm. You don't know that. You don't understand. You cannot take anything of somebody's if your procedures are not proper. Everything comes back to normal. Remember that. That's how this is RP. अगर वो परमिशन किया ना, लोग मेटा करके करेंगे चीज़ें। मेटा करके सबको मालूम है किसके पास क्या है। पुलिस घुसेगी विदाउट प्रोसीजर, पहला पकड़ेगी और बोलेंगे मिला ना मेरे को। ऐसा नहीं होता है आरपी में, वो रियल लाइफ में भी नहीं होता है एनीवे। तो रियल लाइफ में मेटा करने को कुछ नहीं मिलता है। आपको कोई दिखता नहीं उसके घर में क्या है, उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो वो सही होता है। ये आरपी है और मेटा का पूरा एक गेम होता है, तो वो संभालने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती है, सो दैट पीपल डोंट मेटा एंड डू थिंग्स। Electro, that's a different thing. My that character is different and this character is different. Don't RP है, दोनों कैरेक्टर एक नहीं है। वो बकचोद कैरेक्टर, वो पॉलिटिशियन है, वो कुछ भी कर सकता है। ये लॉ, ये चीफ जस्टिस है। This guy is a law abiding citizen. This is RP guys, remember that. In RP में नहीं होता है वो चीज़ें, और रियल लाइफ में होता है तारकुर, आरपी में नहीं होता है। आरपी में अगर रियल लाइफ में इवन उसने रेड मारा था विदाउट अ परमिशन, यू नो समथिंग यू ऑल डोंट नो, आई थिंक सो। इन रियल लाइफ इन अमेरिका दिस ऑल्सो हैपन, नॉट इन इंडिया। इंडिया में नहीं होता है, अमेरिका में होता है। एक गन भी मिला ना इलीगल, वो इलीगल उसको आप चार्ज कर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं किया है। फर्स्ट थिंग विल कम, हाउ डिड यू नो दैट ही हैज अ इलीगल गन? उसको सर्च कैसे किया आपने? ये पहला क्वेश्चन आएगा कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट में। नाउ यू नीड टू शो योर 911 वॉट एवर इट इज हु गेव यू दैट इंफॉर्मेशन टू डू सर्च देयर। अगर वो नहीं मिला ना, उसका गन जो मिला है वो भी वो वापस मिलता है, प्लस he gets away from that section. That's how it works. That's how law works. Remember guys. I don't know. Yeah, prosecution, let's finish the case. Let's go ahead with the case. Give me a final this. Yes, Your Honor, will do that. But the officers who were involved in the situation right That guy is come with a cycle. What? Wait. The police, what all are doing? That guy is come with a cycle now, just now. Just arrest him and detain him and bring him here. हाँ, तो officers side bench मांग रहे, Your Honor. Yeah, please. But Okay, anyway, you want to for side bench for what? They want to give more witnesses, evidences, or something? I explained them the fact that we can't give the second date, we just want to give the justification for the fact that why the primary officers are available and why their statements are very necessary for this case. So they are not available is a big blunder of theirs, first of all, because this is the Sir, third time when the officers have done this to me. I get this. You are just Anyway, have a side who is- bench and you can talk to them. Okay, I will ask them to come forward, sir. Thank you. You all want to adjourn the case and keep it for tomorrow continuation or something? नहीं. Ash, go talk to the judge. Sir, Yeah, can I tell me. have a word in the side bench? Yes, sir. Be loud, be so loud. I can't hear basically you. the Just be primary- loud. Am I audible? Yeah. Yes, so basically, the primary officers involved in this whole scenario where the wheat plants were destroyed and the officers investigated and everything. Most of the leading officers, the commanding officers, the one who created the report, the one who were commanding the whole situation, they're unavailable for various different reasons. One of them is down with fever. The other one, there's electricity in a city, so you can't come No, using it's gas okay. in the city. No problem. We understood Yes, sir. that.
No, but what you are trying to Yeah, tell so us is to postpone the case, or you are trying to say something else? What you are like actually asking the court? no, so I'm asking for next date for the trial so that the officers can also know what mistakes were made so that we can improve future as well. Plus, we can I don't also have a put in problem, our but the voice. charges which have already been accepted, and they will finish those, and the remaining charges which they have not pleaded guilty will be the trial based this. Okay. Yes, yes, of course, no worries about that. That's totally Uh, fine. Ranvijay Singh, can you please come close? Yes. The police wants to get their officers who are part of it, and they want to allow them to give witness in the courtroom. So we should allow them, actually. But this is last warning. Huh? This is the third time the officers have done this to me. So this is last warning. When one officer has to come anyway. So what we'll do, no, Ranvijay Singh, is that whatever they have pleaded guilty, they let them, finish their sentence of that, whatever it is. The persons whose by mistake the raid was happened, that person's things will be removed out of this case. That because he will be not part of this case, and plus his things will be given back by the officers. That will be not can happen with a fresh raid. We don't know, but those things will be not part of this case. But remaining, which they are not pleading guilty, that we can continue. Sure. When the officers will be present? Sir, I believe tomorrow or day after tomorrow should be fine. Just Okay, to be on so the safer side, let's do it day after tomorrow because no, the problem is once there's other there are a lot of issues with other people also. They have other things to do and all this. I think so. Tomorrow, at least 2 officers of that situation can come. What's the problem? Yes, I think they might come, but I think tomorrow most of the people will be busy. Like not just the officers, like a lot of people. Like We'll keep it early. What's the problem? What time your clients can come in the city, Ranvijay Singh? Sir, I'll be able to come after 8. After 8, then I think so they will be not there. But then we can have it at 10 o'clock if it's possible. Is it possible for the prosecution? For me, it's 10 p.m. is fine, but if you're keeping it early, we can also keep it around like 5 or 6 p.m. Is that fine? No, the defense lawyer cannot make it. He can come only after 8, he's saying. Okay, my bad. Yep. So that's the reason I think suppose 10 then 10 o'clock p.m. we should can be have. fine. Okay, so That's I'll fine. adjourn the Tomorrow? case to 10 o'clock tomorrow, okay? Only thing I'll tell about today's thing, what exactly it is, and we'll adjourn it for tomorrow. Done? Sure thing, sir. Sure thing. Okay. Sure. Thank you, So sir. Thank the you court is so much. right now will adjourn this case for tomorrow for the charges only which are not pleaded guilty. The charges which are pleaded guilty, that those can be processed now. And what's his name? Ranvijay Singh. What's that guy's name who was raided wrongly? What's उसका नाम क्या है जो जिसका raid wrong जिसका नाम नहीं था? Jagish Kumar. And this Mr. Jagish Kumar, the raid which has happened on his apartments, whatever was recovered from those things has to be returned back, and that case won't be a part of it. But still, the police will have a chance to further investigate that person if they have evidences and ask a raid or whatever arrest warrant or search warrant on a proper procedure from DOJ. The case is urgent, guys. Justice for Huggies. My warehouse is still under lockdown. यस कल का आज नहीं बताएगा मैं क्या रॉन्ग था अभी कल केस वापस से मैं बताएगा तो आप लोग मेटा करेंगे तो कल बताएगा केस के बाद ओके गाइस वेल ठाकुर मैथ्स मैं आऊं हाँ फाइनल मैच है हाँ आ जाओ बैठो 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 हाँ जी बहुत देर खड़ा रहा जी बस हो गई हाँ मेरे को 1-2 मिनट दे दो मैं थोड़ा चिंतन में हूँ थोड़ा पीस ले रहा हूँ मेरा माइंड का ओके 2 मिनट दे दो ओके गाइस आई विल कम बैक आई हैव वाटर एंड कम
या आई एम बैक। हाँ चलो अभी अभी विस्तार में बताओ मेरे को क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ ये चीज़, ये बीमारी कैसे स्टार्ट हुआ? बीमारी बीमारी मैं आपको बताया था ना, मेरी आंटी मर गई थी थोड़ा दूध की लाउड थोड़ा पिचकारियों लाउड वाली। लाउड 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 गले का। मैं आपको बताया था ना, मेरी आंटी मर गई थी दूध की पिचकारियों वाली। हाँ 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 सही है। तो उनके बाद से उनके बाद से ही बीमारी स्टार्ट हुई? हाँ। कुछ हुआ ऐसा चीज़ें जैसा आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ, आपके टेस्टिकल्स को कुछ डैमेज हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को बस मेरी आंटी जो थी ना, आपको बताया था ना जी, बड़ा वो होता था उनके साथ मेरा। जब भी कमरे में जाता था पिचकारियां मारती थी। तो बस फिर उनके बाद से मेरा किसी पे मन नहीं आया। मन तो बहुतों पे आया है, लेकिन फिर डर लग जाता था। मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ। अच्छा तो इसकी वजह से हुआ। बस फिर आप आपने ये नहीं ट्राई किया कभी भी और किसी लड़की से प्यार करो, नहीं तो सेक्सुअल अर्जीज के लिए आप किधर किया। ब्रोथेल के लीगल प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाओ, कुछ ऐसा? मेरे को इस चीज से याद आया जी, मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ आपसे। हाँ बताओ। मैं थोड़ा पास आ जाऊँ? उधर से बताओ, क्या है, कौन सुन रहा है इधर? अच्छा, आपको याद है जी, आप आप एक बारी आए थे और आपके चेयर दही भल्ले गिरे हुए थे। हाँ हाँ। वो दही भल्ले नहीं थे, क्या था? वो था, लेकिन उसके पहले जो मैम साहब है, आप फोटो लगी ना उधर, है जी, आपकी वाइफ की फोटो है ना जी उधर। जज साहब, आपकी वाइफ की फोटो है ना जी उधर। मैं साफ करता करता मेरी देखी नजर पड़ गई और मेरा मन हो गया, मैं हिला दिया। आपने मेरे वाइफ के इस, ये क्या बात हुई? माफ करना जी, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया था। अच्छा अच्छा। आहो। हाँ बाद में लेकिन उसके मेरे को बात उसके बाद आपका सब कुछ गया, फ्यूज उड़ गया? उसी टाइम पे मेरी आंटी मर गई थी। तो फिर अच्छा डर सा भी लग गया था कि मैंने मुठ मारी और मेरी आंटी चल बसी। फिर उसके बाद नहीं उठा कभी। अच्छा वेरी बैड। नो प्रॉब्लम। आपने कभी उसको सांड के तेल से मतलब मालिश करने को ट्राई किया है? किसको? जो उठ नहीं रहा है उसको। अच्छा नहीं, कोई तेल नहीं आया आज तक। अरे सांड के तेल से होता है, वो सांड का तेल मिलता है आपको हिमालयन रीजन में, वैसा मिलता है, उसे ट्राई करना मांगता था आपको पहला। ठीक है, फिर मैं करूंगा, मेरे को क्या है। और ईएमएस से बात किया आपने? ये तो कुछ नहीं हुआ जी। वो लोग ने क्या किया था आपके साथ? उन्होंने थेरेपी सोची, मतलब मेरा वो किया, वाइग्रा दिया। ते क्या बोलते हैं, मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन सांड कुछ का नहीं तेल हुआ। का डिफरेंस? हाँ अच्छा, वाइग्रा से भी कुछ नहीं हुआ? ना। बैठो 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 जान नहीं बैठो रही। बैठो बैठो, मैं कुछ देखता हूँ। हम्म, तो अभी जब आप पेशाब पेशाब करते हो तभी तभी सही होता है? ऐसा होता है पेशाब सही होता है, वो उसमें भी तकलीफ होती है? नहीं, वो तो नॉर्मली निकल जाता है। अच्छा वो नॉर्मल निकल जाता है, तो ऐसा पत्थर बत्तर वैसा वो प्रॉब्लम नहीं है, किडनी स्टोन्स का वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं नहीं। ओके रुको, एक मिनट रुको। उधर ना जी एक कैबिन डॉक्टर भी था, बड़ा दल्ला।
आपको तमीज नहीं है, नॉक करके ही नहीं आ सकते। दोबारा आप बोलेंगे प्लीज। हंस क्यों रही हो? हाँ नेस, कैन यू वेट फॉर सम टाइम? थोड़ा पर्सनल है उसका बात इसलिए। अच्छा मैं कुछ देता हूँ आपको, उससे ट्राई करो, होता है तो। ओके। एक बॉटल के बाद दूसरा बॉटल मत पियो, थोड़ा नशा भी होता है उसमें। ट्राई करो। एक दिन को सिर्फ 2 ही बॉटल का इस्तेमाल करो। अच्छा देखेंगे, कल तक देखेंगे, कुछ हुआ तो उसका चेंजेस, नहीं तो मैं बाद में। और एक चीज़ है जो वो जाके करना पड़ेगा उधर, आपको उधर लेके जाना पड़ेगा मेरे को। कभी कभी वो लोग का क्या करते हैं, वो लोग वो गरम हथौड़ा होता है उनका, गरम ऐसा कास्ट होता है आयन का, वो ऐसा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, पर उसको वो लोग प्रॉपरली कवर करके आपका ऑर्गन को लाइक यू नो कवर करके वो लोग क्या करते हैं, उसको मेटल के इसमें डालते हैं, गरम मेटल के इसमें, और ऊपर से वो लोग ना। हेलो प्लीज को सुनाई नहीं। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा था ना, ऐसा एक अगर ये अभी जो टैबलेट देगा मैं, वो दिन को 2 खाओ, कल तक देखेंगे होता है तो। अच्छा नहीं होता है ना तो, और एक जगह है जो नॉर्थ में है, उधर जाएंगे हम लोग। उनका एक ना एक उनका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है ये चीज़ों के लिए, जिसमें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स नहीं यूज़ करते वो लोग, मैकेनिकल थिंग्स यूज़ करते हैं। और पहले के सॉरी यस सॉरी हाँ, पहले के ज़माने में ना ये चीज़ें होती थी, जब वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स नहीं होते ना, तभी वो ये चीज़ों से करते थे। यही बीमारी को क्या होता है ना, एक मेटल का एक ये होता है, क्या बोलता है उसको, एक मेटल का ऐसा पाइप जैसा होता है, पर ऐसा नहीं कि आपका जो बीमारी है उसको डायरेक्टली वो नहीं, वैसा है कि आपको प्रॉपर बैंडेज लगाते हैं वो लोग, सही उसको ड्रेसिंग करते हैं आपका जो बीमारी हुआ है उसको, और उसको एक मेटल के पाइप में डालते हैं, और बाद में क्या करते हैं, मेटल पे पाइप को ना ऊपर से ना गरम वाला लोहा उस पर डालते हैं, लाइक हॉट मोल्टन आयन उसके ऊपर गरम ये करते हैं ऊपर से। फिर गया। हाँ ऊपर से गरम ये डालते हैं और उसको हीट देते हैं, सो वो हीट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होता है अंदर का आपके जो वो पार्ट को आपके इसको। और वो लोग क्या करते हैं, जो आपका टेस्टिकल्स है ना, उस दोनों को उसको क्या करते हैं वो लोग, उसको उनके पास ना एक हथौड़ा है, पर वो मेटल का हथौड़ा नहीं, वो जैसा रबर फाइबर का जैसा है। अच्छा वो लेके वो लोग उसके आपके टेस्टिकल के ऊपर मारते हैं, जैसा बस मेरे को नहीं करा था ठीक। नहीं वो अच्छा नहीं, वो आप समझे नहीं, उससे तो ठीक होता ही है, श्योर वो होगा ही ठीक, डर मत। पर अभी अब टैबलेट से ट्राई करो। देखो ये ले लो, मैं कुछ देता हूँ आपको, ये ले लो, ये भी सस्पेक्ट है। आ जाओ, ये ले लो, ये वाली ले लो। ले लिया राइट? हाँ एक बाद में खाओ, अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद जब आप अभी चाहेंगे ना तभी एक खाओ। ओके, और दिन को 2 खाने का मैक्सिमम, कल तक देखेंगे होता है तो, नहीं तो बाद में वो करेंगे दूसरा वाला। अगर उससे भी नहीं होता है तो और एक है ज़बरदस्त आइडिया है, वो डिफरेंट है। वो क्या करता है, वो और एक आइडिया है ना, वो भी उसको कुछ बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, फ्लाइंग डिक बोल के वो थेरेपी है एक। उसमें क्या करते हैं जानते हैं, आपको हवे में हेलीकॉप्टर से लेके जाते हैं, और बाद में आपके वो जो आपका लर्न एंड ऑफ इट, उसको ना एक नायलन थ्रेड बांधते हैं। अच्छा, और वो टेस्टिकल के साइड में पूरा ऐसा ग्रिप से बांधते हैं, और क्या करते हैं उसको हेलीकॉप्टर में एक जगह उसको टाई करके रखते हैं और आपको नीचे उड़ाते हैं। तो आपका पूरा सपोर्ट उस पर होता है, पूरा बॉडी का सपोर्ट आपका उस पर होता है, तभी क्या होता है, इतना जोर से उधर ब्लड रश होता है और एक्टिवेट भी हो सकता है वो वापस। ओके, तो वो बाद में। और अगर उखड़ गया? नहीं उखड़ता है, वो उखड़ता नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, वैसा डर मत। ऐसा क्या है बहुत लोगों ने, पर वो चीज़ नॉर्मली उनको देते हैं जो एल्डरली एज भी ज़्यादा होता है ना, उनको थोड़ा वो चीज़ होती है। पर मेरे को लगता है पहले वाले इसमें मेरे को लगता है टैबलेट से होना मांगता है, अगर नहीं होगा तो हम लोग को दूसरा वाला देखेंगे, उससे तो होना ही मांगता है, क्योंकि
नॉर्मली होता है, पर नहीं हुआ तो ही बाद में वो करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ चीज नहीं चला तो बाद में भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपके लिए एक लड़की देखी है। लड़की? मेरे को कहाँ लड़की, मैं शादीशुदा, डिवोर्स। वही तो, डिवोर्स हाँ। हो गया आपका। अच्छा नहीं लगता ना मेरे को आप हो। मैंने एक लड़की देखी है आपके लिए। ओ बीबी चैन। चैन? वो तो हमारे डीए है ना। कोई बात नहीं, क्या हो गया। अच्छा। बहुत अच्छी है, मैंने उनसे पूछा आप नहीं वो मेरी छोड़ो, मम्मा बनोगे। अभी अभी हम लोग सिर्फ अच्छा। फोकस करेंगे आपका उसको सही करने के लिए। देखो मेरी बीबी ओके। देखो उधर थी, उसके ऊपर आपने कर दिया क्या करना है। वो तो मरी तो बहुत टाइम हो गया, और आपने उसका है? हाँ, शी इज एक्सपायर्ड, शी इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड लॉन्ग टाइम बैक। तो ऐसा मालूम मेरे है को ना, पता 5 नहीं साल था। पहले एक्सपायर हुआ वो। मेरे को नहीं पता था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ एक्सपायर। अभी वो जिंदा होती थी तो आपका, अभी वो नहीं चल रहा है, वो होती थी तो उसको काट के उड़ा दी थी, उसको मालूम पड़ता था तो आपने ऐसा किया है बोल के। अच्छा है, अच्छा। क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव थी, वो बहुत डेंजर थी। ओके। वो पहले गैंगस्टर्स में भी थी, ये जो साउथ साइड गैंग होते हैं ना उसमें थी वो पहले। ओहो। बाद में मेरे साथ शादी होने के बाद वो कोर्ट में ही मिली थी मेरे को, ऐसा ही चोरी करते टाइम पकड़ के अच्छा। लेके आए थे, तो मैंने उसको सही रास्ते पे लाके वो बाद में शादी हुआ था हमारा। वो डेंजर थी, बहुत डेंजर थी, लोग डरते थे उससे। अगर उसको मालूम क्या पड़ता था बात आपने है। ये चीज़ किया है बोल के, वो तो काटती थी, मैं श्योर जानता हूँ। अच्छा हुआ वो नहीं है अभी। अच्छा आ जाओ। ठीक है, फिर तो अच्छा ही है। हमारा ओल्ड आरपी बैक। पीडी लेकर गया, फिर उसका सीनियर आया, मैंने लॉयर बुलाया। पीछे आ जाओ, आ जाओ, इधर से आ जाओ। उसको बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जितने भी वो है ना, क्या बोलते हैं। जज साहब पहले मैं आता रहता था, पहले डैनी सर होते थे, अब डैनी सर भी नहीं होते, पता नहीं कहाँ है। डैनी सर थोड़ा छुट्टी पे है। ओके। डैनी सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा हेल्प की है। हाँ वो बहुत अच्छे आदमी है। उसके लिए लड़की देखो ना, वो अभी भी शादी नहीं किया है। अरे मेरा साइकिल है, इधर आ जाओ। हेलो योर ऑनर, आई नीड टू आस्क समथिंग। Ask अब something. मेरा प्रोसीजर, या वो प्रोसीजर क्या होगा मेरा? आ जाओ, चल के आ जाओ। और हाँ बताओ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा वेयर हाउस अभी भी लॉकडाउन पे है, और मेरा सामान कहाँ से रिकवर होगा? आप कौन है वो बताओ पहला। जगेश जगेश कुमार द गेम चेंजर। हाँ तो जाओ डीए को मिलो, आपके लॉयर कहाँ है आपका, लॉयर को लेके जाओ, डीए को मिलो और उनको बोलो है कि अनलॉक करो आपका सब जो सामान उन लोग ने लिया है आपका, वो वापस देने का है उनको। कांगड़ी पहलवान कौन है? हेलो पाजी। हेलो। अरे मेरा साइकिल कौन लेके गया? दीपक दलाल। आ जाओ। मेरे पास है जी, मैं लाता हूँ झाड़ी पे। सर आपको हम गाड़ी में ड्रॉप कर दें, साइकिल में क्या जाना आपने? नहीं नहीं नहीं, साइकिल अच्छी होती है, एक्सरसाइज होती है साइकिल से। हमारा लॉयर का पता है किस ओ एमजी का फ्लैग देना है गाइस, गुड रिमाइंडर, वी विल डू दैट नाउ। तो करेंगे अभी। आर्किड सेटअप में नहीं, आर्किड का कॉइंस डालना है ना, वो डालेगा मैं रात को आज। वो लोग ने आज ही बताया देखो कॉइंस जी। का, तो रात को डालेगा मैं। आपकी सवारी। अशु द कॉइंस आई विल पुट एट नाइट ओनली। आ जाओ, आपके पास साइकिल है ऑलरेडी? ओके। हाँ जी, मैं झाड़ी में छुपा हूँ। झाड़ी में छुपाते हो, बहुत स्मार्ट है आप। आ जाओ चलो जाएंगे। चलो जी। जज साहब मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 मिनट। अच्छा जी। हाँ आ जाओ। हाँ बताओ। मैंने ना अभी वो दवाई खाई। आई दवाई? हाँ जी। क्या हुआ? सॉरी, थोड़ा कुछ आया? मेरे को एदम तो आया जी, लेकिन पीछे से आया। पीछे से आया बोला तो? मतलब मेरे को लेने का मन हो रहा है किसी का।
नहीं, वो 50 पॉइंट ब्लॉक नहीं करना है आशु, हम लोग ने सोचा वो चीज़ को। लोग 2000 में क्यों लेंगे, यार लड़कियों 1000 से जैसे खरीद सकते हैं। तो जो लेगा वो मुल्क के, वो बंद करके फ़ायदा नहीं है। हाँ बताओ क्या हुआ, पीछे से आया। अब टॉयलेट जाने मेरे को को ये कर रहा है क्या? नहीं, मेरे को अपने पिछवाड़े में कुछ लेने का मन करने ऋषि लग गया है डोंट अभी। यूज दिस वर्ड्स एवर हियर। पिछवाड़े पे क्या हुआ? मेरे को किसी का लेने का मन कर रहा है ओ ऐसे में। वो क्या बोला, तो किसी को देने का मन कर रहा है? क्योंकि अगर लेने का मन कर रहा है बोला तो आपका कड़ा हो गया ऑलरेडी। नहीं, लेने को, किसी का लन लेने को। आपको एक एक प्रॉप लगाएंगे जरा शो। लैंड क्या क्या क्या, वापस बताओ, आपका सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। किसी का, एक मिनट, किसी का क्या? किसी का लन लेने के लिए मन कर रहा है। तो ये दवाई आपको पीछे इफेक्ट की, आगे नहीं। हाँ पीछे। ओ तारे जमीन पर। डेंजरस है हाँ ये चीज, ऐसा है तो। हाँ जी। हाँ तो आपका अभी पिछवाड़ा ओपन हो गया, आगे से स्ट्रेट होना तो अच्छा अच्छा, ये दवाई पिछवाड़े के लिए, तो नेक्स्ट टाइम संभालो। हाय गाइस। तो ये आपने दवाई मेरे मत को ले लो गंडवा नेक्स्ट, बना दिया। दूसरी दवाई ले लो। कुर्सी मैं नहीं दूंगा अपने किसी को। क्या नहीं देगा? बुंड। हम लोग एक काम करेंगे, डर मत, कोई नहीं लेगा आपका बूंद अभी। और याद रखो ये दवाई आपको मत पता खाओ। है, आपको पता है आज क्या हुआ? आपके क्या आने हुआ? के पहले ना कोई बंदा आया कोर्ट में। अच्छा। उसने गन पॉइंट किया मेरे पे, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया ओए अरे अरे सॉरी गाली मत मार, गाली क्यों मार रहा है उसको? सॉरी वो बोल रहा है आई एम सॉरी बोल के। 4634 क्या? ठीक है ठीक है। यस यस नो प्रॉब्लम। पैसे की जरूरत नहीं है, रख ले कोई सी नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं क्या मेरे पास ये। Hello sir, welcome to cafe. Yeah, good Hello, evening. sir. Can I have a meal? Yeah. Two How meals. Two meals for me हाँ, and बताओ। Deepak. Yes, sir. So मेरे give us पास, 2 meals. Any meal. Give us a good meal. I have, yeah. Yes. Swipe your card, sir. सर पे कर दो इधर। सर आप मिस्टर टाओ हो क्या? या सर आपका ये आज का कोर्ट का केस कैसे गया? ये लो केस सर, का बात प्री पे बाहर नहीं रखा। करते, वो सिर्फ कोर्ट रूम में करते हैं। ओह माय गॉड, माय बैड सर, माय बैड। ये जजमेंट नहीं आया, जजमेंट आया था तो बोल सकता था। ओह नहीं, एक्चुअली मैं पूछने वाला था, लाइक मेरे को एक्चुअली पता नहीं है किस बारे में केस था, तो मैं बस ऐसे ही पूछा था। हाँ सर, ट्रे पे रखा है, ले लो। ओ दीपक वो ले लो, ट्रे पे कुछ खाना है वो ले लो, आ जाओ बाहर। See you later. Have a good day. Yeah. Have a good day. पापा क्या हो रहा है अंदर से, कुछ इमोशंस आ रहे हैं क्या? इधर आओ। आप इधर खड़ा रुक के गाना, अरे इधर का माइक कहाँ गया? माइक गायब हो गया, अंदर रखा होगा। नहीं तो आपको मैं ऐसी आपको गाना गाने को आता है? हाँ जी। आपको गिटार बजाने को आता है? हाँ जी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इतना नहीं बजाता। आप बजाओगे?
आ जाओ, तो मैं डीजे बनाता हूँ। ओह, मैं क्या करूँगा इसका? डीजे बनो ना, म्यूजिक बनाओ। हाँ, आपको गिटार मांगता है, आप गिटारिस्ट है। म्यूजिक बनाओ। अच्छा, हाँ, गाना मैं गाओ। बनाता हूँ। हाँ, चौक 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 चौक। मैं सिर्फ गाना गा सकता हूँ, मेरे को आता नहीं कंट्रोलर का। हैं जी बाजी? आप बजाओ, बजाओ, बजाओ। अच्छा अच्छा। बिजली की राह है मैं हूँ आई, बिजली की राह है मैं हूँ आई, सब मुझसे कहते हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई अच्छा, मैं हवा ड्राम बजाता हूँ हवाई। आपके लिए। अच्छा ही। कैसे पची है पिटन तेरी मारी, साडे लन ने भी किसी तैयारी, खुद तेरी अच लेके जाऊ, जे मैं लिटी ना ता छड़ना कहाऊ, कैसे पची पिंडा ने तेरी मारी, साडे लन ने भी किसी तैयारी, खुद तेरी अच लेके जाऊ, जे मैं लिटी ना ता चटना कहाऊ, वो आज तेरी चूत मारू, तेरे सर से चूतने का भूत तारू, आजा 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 तेरी बुद्धि करा, आजा 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 तेरी बुद्धि करा। ए ये और गाना गाऊंगा। अच्छा, और कौन सा गाऊं मैं? दूसरा कौन सा भी गाओ। अभी अभी मैं गिटार लेके बजाएगा। ओके, रोमांटिक गाना है मैं। मैं सोच रहा हूँ जरा गाने का नाम, गाना कौन सा गाऊं? टिंग टोंग, टिंग टिंग डंग डिंग 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 डंग 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 डंग। जल्दी गाओ। डिंग डिंग हाँ। डंग डिंग डिंग डंग डंग डंग। अच्छा, डिंग डंग एक मिनट। डिंग डंग डिंग 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 डंग डंग डिंग डंग डिंग। गाना कहाँ है? गाना गाओ। मैं सोच रहा हूँ कौन सा गाऊं। हाँ, याद आ गया जी। बलम, आपका फोन आ गया जी। उसका छोड़ो, आप गाना गाओ। ओके। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, ओ सीटी थेरापी हो गई, ओ बीन्स पहन के जो तुमने मारा ठुमका, ओ लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। आवाज उठ गई। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गांठों से, बेबल बहारों से, जाटों की पत्तियों से, ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल मैं सोने दी। गोरे गोरे टट्टे में चुभे। आओ आओ। चलो अभी हम बैठेंगे, टायर्ड हो गए ना हम लोग। चलो बैठेंगे। हाँ जी। वो डीजे वाला उठाओ, नहीं तो और कोई लेके जाएगा। मेरे को एक और गाना याद आया है। हाँ तो मैं नहीं कर सकता, इसको मैं नहीं उठाओ ना। उठा पाता, नहीं उठा पा रहा, भारी बहुत है ना। ग्रैब कर सकते हैं तो क्या, जब हम लोग कुछ पियेंगे। टायर्ड हो गया अभी। ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मेरे को एक, मैंने ना जी एक गाना लिखा। अच्छा, सुनाऊं? ना सुना। हाँ, मैं एक मिनट लिरिक्स खोल लूँ अपने फोन में, हाँ है हाँ, ना। खोल। हाँ, बाकी मेरे को बड़ी देर होगी वो गाए हुए को, पता नहीं। हाँ, मिल गया। हाँ, ए देखो, ओ मेरी बूंद थले दो बड़े बड़े काले बाल है,
ते काले बाला दे नाल मेरे चांद लाल ने नी माली बने पए मेरे चाटा दे नाल ते नाल है कि दो मेरे चुन में यार नी असी आई उत्ते आए ते मार दिए पद कोका कोला दे नाल असी खा लिए झट चांद लाल दी Arthur जिंदगी Sai, हुन thank हो you गई very है much. झंड Thank you very much. चांद लाल दे मुंह ते मारे सारे घुसन नी मेरी बूंद थले तो वड्डे वड्डे काले बाल ने बूंद थले तो वड्डे वड्डे नी मेरी बूंद थले तो वड्डे वड्डे काले बाल सब है आपके लिरिक्स बूंद काली काले बाल लंड इस पे क्यों जा रहा है? और कोई लिरिक्स नहीं मिल रहा है क्या आपको? वो पता नहीं हाँ? मेरे को और लिखना नहीं आया जी। अच्छा, नो प्रॉब्लम, समझता हूँ मैं चीज़ों को, समझता, राइट। हाँ अब वैसे बात कुछ नहीं है। हाँ। जैसे आपकी शादी होगी थी, ये आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं। मैं बन जाऊँ जी पापा? नहीं नहीं, आप मेरे को दिख रहा है बहुत फनी आदमी है। नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा तो जी अच्छा। खड़ा भी नहीं होता। कल आपने किसी लड़की को टच किया, ऐसा किया, और बाद में कोर्ट में आवाज आएगा कि जज का बेटा है वो ऐसी चीजें करता है। नहीं जी नहीं, देखो Thank you, आज Azri. तक मैंने Thank कभी you, ऐसा thank गलत you नहीं for किया lifting जैसे आपने मेरे को 15 wishes. समझाया था। Thank you very much. आप जो भी मेरे को समझाते हो ना, Oh, मैं मेरे Vishwanath, दिमाग में thank रहती you. सारी बातें। आपने एक बार बताया था कच्चा है वो हमेशा डालना है, तब मैं कच्चा नहीं डालता था पहले जी, उसके बाद से मैं अंडरवेयर डालना शुरू हो गया, क्योंकि आपने जैसे Thank you, बताया thank you था वो very much. टट्टे लटक जाते हैं। अच्छा, आई स्वेयर जी, मैं ठीक घर है, में भी विषय। कच्चा डाल के रखता हूँ। हाँ जी Thank you, Adizai. Thank you very much. Thank you very much. 15 हाँ, वो कच्चे कच्चे डालना मांगता है, नहीं तो हाँ वो आपका प्रॉब्लम कच्चे की वजह से भी हो सकता है। माइट बी यू आर नॉट वेरी कच्चा एंड देन योर टेस्टिकल्स आर हैंगिंग लाइक बेल्स, नहीं और वो नहीं दोनों एक दूसरे को हीट होके फ्रिक्शन होके अब इसलिए प्रॉब्लम हुआ होगा। नहीं जी, आपने जैसा बताया था डालना, मैं उस दिन का हमेशा डालता हूँ। अच्छा, आप डालते हो अभी? हाँ जी, हर रोज घर के अंदर भी। अच्छा, सही है। सोने टाइम भी डाल के रखता हूँ। सोने के टाइम पे भी डालते हो? सोने के टाइम नहीं डाल सकते तो चलता है, उसको फ्री रखो, थोड़ा ब्रीदिंग के लिए छोड़ दो। अच्छा ही। पर हाँ, पर डालना मांगता है नॉर्मली कि बाहर जाते हो सब कुछ। आप अभी नहाते हो ना? पहले तो आप 4-5 दिन के बाद नहाते थे। नहीं, अब एक एक दिन छोड़ के। ठीक है, अरे रोज नहाना है ना, नहीं तो आपका पूरा बॉडी को स्मेल आएगा। अभी देखो, अच्छा नहाया, अच्छा परफ्यूम मारा तो लड़की भी, कोई लड़की बड़की फंसेगी, वो भी बोलेंगी फंसेंगी, बाद में फंसेगी एनीवे, वो पर वो भी बोलेगी कि कुछ अट्रैक्शन होता है ना। अच्छा, आपने किसी लड़की को ट्राई किया है? नहीं, मैंने ट्राई Hi तो रोज guys, करता thank you. हूँ। मैंने वो सोनम गुप्ता नहीं है जी, हाँ सोनम गुप्ता, वो हाँ जॉइंट्स वाली, उनको भी आज लाइन मारी। ये बोलते हैं मेरा प्रोफेशन वही है, क्या बोलते हैं उसको, वो मारेगी ये आपको। काम। अरे आपको मालूम नहीं, उसके पास बहुत चीज़ें हैं, वो दूसरी दुनिया से तलवार भी लेके आई है। वो एनीमे हाय। मैंने सुना है लोकल को पीटती है, आपको भी लोकल बन के पीटेगी वो। ज़्यादा बात मत करो उससे, वैसी चीज़ें। अच्छा, वो हाँ, हाँ, वो मैं आपको डेंजर है बताना बहुत। भूल गया। हाँ। आज क्या हुआ, मैं जब कोर्ट के अंदर था, जहाँ पे वो नहीं है चेकिंग होती है, जहाँ से हाँ हाँ सामान ले लेते हैं इलीगल, है ना, तो हाँ। उधर मैं खड़ा हुआ था, एक बंदा आया, बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मैं कोर्ट क्लर्क दीपक दलाल, बहुत प्राउडली बोला जी, मैंने बड़ा अच्छा लगा। उसने गन निकाली, मेरे पे पॉइंट कर दी, मैं डर गया। अरे ये क्या हाँ, हुआ? ऐसे गन अब मैं अच्छा, आप ये स्लाइड में गए? ये स्लाइड देखा है आपने वो की? इसमें कभी नहीं गए आप? नहीं, आ जाओ आ जाओ, ट्राई करेंगे। आप चलो। ऊपर से स्लाइड करो, मैं नीचे रुकता हूँ आपके लिए। ऊपर से स्लाइड, ऊपर कहाँ से जाना है? आ जाओ आ जाओ। इधर से हाँ जाना पड़ता है, वो पीछे से कुछ। वो देखो वो देखो देखो, सीढ़ी है ग्रीन कलर, देखा? हाँ जी। हाँ, ऊपर जाओ, मैं नीचे रुकता हूँ आपको।
दीपक उधर बीन मैक्स भी लगाया ये लोगों ने। क्या हुआ दीपक? स्लाइड से आना है, जंप नहीं करना है। मैं स्लाइड भी करूंगा। हाँ हाँ आ जाओ जल्दी। किधर है दीपक? गिर गया आ रहा है स्लाइड से। जब किधर है? जब किधर गए? क्या पता। अरे तुमको एक चीज दिखाता हूँ, आ जाओ। किधर है जब किधर है? वो रहा झाड़ी हिल रहा है। ये रहा। ओह माय गॉड। हेलो देखो हमने झाड़ी हिलते हुए देख लिया। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं डर गया था, मैं कहा छोड़ के चले गए मेरे को। साफ कर रहा था। साफ कर रहे थे आप? हाँ आपको करना है, देखो ऐसा क्यों? मैं साफ कर लूंगा, आप क्यों करोगे साफ? मैं क्लर्क हूँ जी, आप थोड़ी। ये ले लो। आ जाओ, हम लोग ऐसे ही खड़े रुकेंगे कहाँ भी। ओके यहीं पे रुकते, मैं तो बोलता हूँ एंट्रेंस पे। आप उस साइड रुको, मैं इस साइड रुकता हूँ। ये तो झाड़ हिल क्यों रहा है? इंटरेस्टिंग। कोई आएगा तो बोलना नहीं। किसी ने नहीं देखा। बैठ जाओ। बैठा तू। कब आएगा कोई? बैठो चाचा। आया नया बंदा आया। उसको लेट हो रहा है, वो भाग रहा है। आ जाओ, उसकी गाड़ी के पैसे चल के जाएंगे। आ जाओ। हाजी वो उधर वो बंदा खड़ा है।
मैं तो बोलता हूँ इधर आ जाओ। जज साहब क्या किया ये आपने? क्या किया? ये क्या किया आपने? मैंने नहीं किया कुछ भी। नहीं, आपने अभी कुछ पाद मारा, कुछ किया। पैंट देखो, चेक करो, पैंट देखो। ओह मेरी गिल्ली है थोड़ी सी। क्या खाया था आज? मैंने जी आज बाहर का खाया सारा। शी, सब आया बाहर। और थोड़ी म्यूनिस की खुशबू आ रही है। ओ तेरी मादा पोता पैच चोटा पागल है। हारना नहीं मांगता था, उसको मालूम नहीं था झाड़ी है बोल। बैंड के लोड़े मारा के तूने फिर को दिख नहीं रहा था क्या? आजा आजा आजा। टैक्सी। अरे मेरा प्रॉप कैसे क्लियर करना है? यूआई से होगा प्रॉप क्लियर? मैं क्या सोचता हूँ जी। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? मैं नहीं कर रहा कुछ भी जज साहब, आप करा रहे हो। वापस कर रहे हो? नहीं, इतना बहुत करा भी बहुत क्या गंदी आपका? वो है। मैं बताऊँ आज मैंने क्या क्या खाया? आज मैंने सुबह सुबह चीज हाँ, चिली बताओ। खाया जी। क्या क्या खाया? चीज कोई और है ही नहीं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। आज चीज मतलब चिली खाया। ब्रेकफास्ट मेरा ब्रेकफास्ट मेरा 4 बजे हुआ जी। ट्राई करेगा तभी मैं तो उठ सीखेगा 12 ना। बजे गया था। ते उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले लाइक इजी है। मतलब आने से पहले मैंने बर्गर किंग खाया जी, बड़ा मजा आया। पापा सांप है क्या आपके पास? नहीं चावाज है सांप का? अरे गोलियां हो रही है, गोलियां। गोलियां चल पड़ी। आप इधर रुको झाड़ी में छुप के। उय, उय, उय। मार दिया। लाइव विटनेस। आ जाओ, झाड़ी लेके जाएंगे स्लोली। अभी this server I brought NoPixel. बेटा 80,000 के जूते बेटा। बोल बोल। अरे नहीं अभी मंडे से आऊंगा, मंडे से। किधर? मंडे से एग्जाम है? अरे ये क्या है? ये क्या है? ये कौन है? चल मिलता हूँ मैं, बाद में खेलेंगे। अभी मंडे से ईद है ना, जाना है मेरे को। अरे हाँ हाँ, सुना है डिस भी आ रहा है ईद के दिन। ऐसा क्या? देखेंगे चल। फॉर द विन बाय। मादरचोद बात कर रहा था मर कान मारता बेटा मैं। साले ने आखिरी में बगावत कर दी। झाड़ी में झाड़ी रहते भाई, इंसान थोड़ी रहते हैं। चल कैसे रहा? एक्सक्यूज मी झाड़ी, झाड़ी तुम बात करते हैं? घर से चल के उसे बात करते थे। ओए झाड़ू। नहीं ये लोग बात कर रही है झाड़ी से। हेलो हाँ वो तो बोलो। हक दिया रे, हक दी। झाड़ी आगता है। 30 झाड़ 30। कौन है ये? What the fuck? ट्रिमर चला रहा है?
क्या पेड़ लकड़ी काट सब तुम आरी से बात कैसे कर रहे हैं? अबे पहला तो हमको खिला, ये भूत भूत का सिस्टम है लगता रुक जाओ रे, रुक जाओ रे, थकने जा रहा हूँ झाड़ में, ठीक है? झाड़ मार रहा है, झाड़ मार रहा है। थोड़ा हटना है झाड़ी इस जगह दे। गोली था ना वो, गोली था वो। मैं क्या बोलता हूँ जी, जरा साइकिल पे चल, झाड़ियाँ लगा के। झाड़ियाँ लगा के साइकिल पे कैसे जाएगा? बड़ा मजा आएगा। चलो भागो भागो भागो। आ जाओ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर। मैं गाना गा रहा हूँ। हाँ गाओ गाओ। तेरा साथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर, तेरा साथ ना You will become the छोड़ेंगे। judge that time. You will understand how you don't get it. Police नहीं आता है। You'll get it, man. पुलिस, अच्छा सुनो सुनो। हाँ जी। पुलिस स्टेशन के बाहर जाके झाड़ी में बैठ के देखेंगे वो लोग क्या करते हैं। स्लोली स्लोली हाँ। अंदर जाएंगे, आवाज मत करो पर। ठीक है जी, डन है। चलना है जी, चलो चलो जी। मेरा फॉरेन ड्राइव से और ये कैरेक्टर से क्या संबंध है? रेस लगाए, रेस। ऐसा नहीं, आपकी स्टोरी में किधर भी जाने का किधर भी वैसा नहीं होता। दत्त साहब। क्या रेस? हाँ जी रेस। रेस लगाना है? चलो रुको रुको, हाँ। इधर आ जाओ, इधर इधर नहीं, उस साइड नहीं, इस साइड, रास्ता इस साइड, इधर आ जाओ। सॉरी। ये लाइन पे खड़ा रुको, ये लाइन पे खड़ा रुको, ये लाइन पे। ओके, मैं नंबर हाँ बोलेगा जी। तो देखो, मैं 1 2 3 बोले, मैं एक, सुनो पीछे आओ पीछे आओ, मैं Sorry। 1 2 3 बोलेगा, स्टार्ट होगा रेस। थोड़ा दूर रुको, थोड़ा दूर रुको। इतना? हाँ बस। ओके, 1 2 और रुको रुको, रेस कहाँ खत्म होगी? रेस पुलिस स्टेशन के बाहर खत्म होगी, राइट? पुलिस स्टेशन के गैराज पे जब पहुंच जाएंगे। कौन से गैराज? मतलब जो गैराज नहीं, ट्रेसपैसिंग बोलते हैं जहाँ पे। अच्छा हाँ। ओके, सो स्टार्ट। 1 2 3। चीटिंग चीटिंग। क्या हुआ क्या हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं आपको ओवरटेक करेगा। जल्दी जल्दी। आह,
टाइट हो गया मैं। आप कैसे कितना पहुंचे देर लिया आपने? तेज? मैं अभी ऑलरेडी आधा घंटा हो गया इधर पहुंचा, तो इतना स्लो चलाता है क्या बाइसिकल? पता नहीं जी, मेरी आंखों पे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। आधा घंटा पहले पहुंच गया था मैं इधर, मैं रुका हूँ आपके लिए, नहीं आ रहा। मैं भी सोच रहा हूँ अरे रेस लगाए किधर गए, कितना मेरे टाइम को से लग आता रहा है ही नहीं। डॉक्टर को चेकअप कराना पड़ेगा। चेकअप हो अभी मेरे को दिखता है, अभी वो जाने के बाद आपका मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, करना पड़ेगा कुछ। आ जाओ बैठो बैठो, नीचे बैठो नीचे बैठो, नहीं तो मालूम पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ जी, और जहाँ पे अंदर गिराज है ना, उधर जाए तो उधर वाली झाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पे कोई होता नहीं। इधर नहीं होता है, चलो उधर जाएंगे। ओके। गराज में अंदर जाके रुकेंगे। ओके। See you, Abhi. I'll see you soon. You take care. Come often whenever you're free. उधर है, उसके पीछे जाके खड़े हो जाए। स्कूल ही जाना पड़ेगा, आप थोड़ा दूर से जाओ, दूसरे साइड से जाओ। हेलो सर। सर अच्छा ताऊ सर आप ओके? हेलो सर आपका सर बाहर आ रहा था ना, इसलिए। कैसे सर आप? दीपक आ जाओ भागेंगे ये। अरे नहीं, गाड़ी मत चोरी करो, पकड़ेंगे वो लोग। आ जाओ सर, ये दीपक को समझाओ, बहुत पंगे लेता है ये बेचारा। मैंने नहीं लिया। आप लोग जा रहे हैं। मैं नहीं लेते पाजी, मैं कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं किया, तुम और कुछ। वो पागल बंदा सीगा। ओके। इधर ही रुकेंगे, उनमें कोई ना कोई आएगा। वो देखिए बंदा जा रहा है, आ जाओ। इसकी गाड़ी पे ना रुके। वो देखो देखो 3 पुलिस ऑफिसर बाहर है, उनको स्कूल ही जाके पीछे उनके। ओके, मैं आपके पीछे पीछे ऐसे। चलते चलते नहीं जाते, थोड़ा 2-3 स्टेप लेने का, रुकने का, वैसा। ओके। यो हेलो। साला एक कड़ा रुकता है और फक करता है पूरा। कैरेक्टर फका पे मेरा। भागो भागो, वायलेंट। Is it a bush in the middle of the road? Why are you dressed up like a bush? What the fuck? What's your problem? Who are you to ask me how I'm dressed? हाँ सर, हेलो सर। भागो। ये नूब है, नूब है। नहीं नहीं, सॉरी। वापस रेस लगाना है क्या?
लिस्ट लगाना है. What the fuck are you doing? Okay. Sex. Wait, officer, wait. Discipline. What the fuck बोला तो? Batch number बताओ. It would be 266. 471 is your call number. 260 batch number. No, Firing actually bad words to I'm a civilians? HSAS. Firing bad words to civilians? Sir, actually. Are you a gangster? Sorry, sir, for that. Yeah. No, sir. Then? Sorry, sir. Actually, I was doing Wasting some petrol? HSAS. I was refueling the Wasting vehicles. petrol also of the I vehicle was without refueling. any important thing? Just following No, sir. strangers? Actually, I was going for the Actually, I was refueling the vehicles, sir. You can do. So I was confused that this could be. It's okay, you can do. I'm sorry for that, sir. No, Really it's sorry. okay. No problem. ठीक है, आ जाओ. सुनो, अभी वो दूसरा टैबलेट ले लो. अच्छा, हाँ. मैं ले रहा हूँ. 1 मिनट. वह कौन सा वाला लूँ? 3 है बचे. एक है, एक हरे वाला है, एक ब्लैक वाला है और एक कौन सा भी लाल ले लो. रंग का. ओके, मैं काले रंग का लाल रंग का ले रहा हूँ. ओह, कुछ हो गया मेरे को चक्कर आ रहे पाजी. पापा ओह, ये कैसे जाएगा? कुछ क्लियर तो हो रहा है मेरे को. मैं तेज भाग सकता हूँ. नहीं होगा इसको. मेरे को UI रिफ्रेश से भी नहीं होगा. मिस्टेक हो गया. प्लीज मेरे को सब RGB दिख रहा है. सब कुछ क्या दिख रहा है? RGB बोला तो क्या है? रंग बिरंगा. अच्छा, नाचो. देखो नाचो. देखो हिलता है तो देखो. एलियन मेरे सामने. इसके हाथ में कुछ है. इसके सामने, मेरे सामने एलियन. मारा मैंने उसको. अरे एलियन मेरे सामने. भागा, दिमाग से मेरे गया. सामने एलियन. सॉरी, दीपक भी दिमाग से गया. नहीं, अब उनको क्या खिलाया है? मेरे सामने एलियन है. अभी आपको मेंटल हॉस्पिटल में लगाना पड़ेगा. नहीं, मेरे सामने एलियन है. कुछ तो हो रहा है मेरे को. मेरी माँ ने कूदी. ओह माय गॉड. जो भी है जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है. मेरे को दो दिख रहे हैं सभी. आप भी दो. हाँ, तो पैंट नीचे उतारो. अच्छा, लाने खड़ा होने की शक्ति का कुछ हो रहा है मेरे को. नहीं, अभी ये क्या पकड़ा है? 2 हथौड़े. नहीं, पैंट निकालो. वो हथौड़े नहीं, वो ये एक गैजेट है. वो सही करता है चीज. देखो. टाइट पकड़ो. ओके, टाइट पकड़ो. हाँ, टाइट. क्या हुआ? नहीं हुआ. रुको, वैसा रुको. और एक बार ट्राई करेंगे. अभी होना मांगता है. हुआ कुछ इफेक्ट आया? और एक मारेंगे. अभी हुआ कुछ? हो गया. सही हो रहा है. एक और एक जोर से. हो गया. नहीं, और एक मारेंगे. हो गया ना? हो गया ना? ठीक हो गया. देखो. ये तो कुछ रहा ही नहीं. पकड़ने लायक भी नहीं रहा मेरा. इतना क्या कर दिया आपने? ऐसा हुआ? मैंने तोड़ दिया सारा. नहीं, तोड़ा नहीं होगा. सही हुआ होगा अभी. मैं देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसको. देखो सही हुआ होगा. देखो, देखता हूँ. चेक करो. लेट मी सी. चेक कर. EMS को बुलाया क्या आपने? पिचका दिया यहाँ पे. नहीं आया ना. देखो, अच्छा है अभी. सही हुआ ना? लेकिन खड़ा हुआ थोड़ा सा. खड़ा हुआ. अच्छा, थोड़ा रुको. एक मिनट रुको. नहीं, पूरा खड़ा हुआ. पूरा हुआ? नहीं हुआ. वो सामने वाला खड़ा
निकाल पेंट निकाल, पेंट नीचे डालो, वापस दिखाओ। नहीं मैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं पूरा खड़ा हो गया। वो नहीं, वो सामने वाला आपका कूड़ा नहीं, देखो आगे का पॉइंट कड़ा नहीं है आपका, वो पीछे का सही हुआ है, आगे का सही नहीं हुआ है। क्या? नहीं नहीं कोई डाउन नहीं हुआ, टेंशन मत ले लो, आपको फोन मारा तो ही आओ, आपका टाइम वेस्ट मत करो। हाँ वो आधा ये हुआ है, पर सामने अभी भी वैसा ही है, वो कड़ा नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, उसको भी करेंगे। आप मारते हो मेरे को ऐसे? कौन मारता है, इलाज करता है कोई ऐसे? रुको अभी इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, इधर वापस इधर साइड में आ जाओ, इधर आ आप जाओ। मारते हो? नहीं 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 मार रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ, दूसरा इलाज करेंगे। इधर मत, इधर साइड में आ जाओ, थोड़ा निकालो, वापस निकालो, अच्छा वापस निकालो। आलू। हाँ देखो 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 देखो, पीछे सही है, आगे थोड़ा बैंड सही नहीं है, देखो रुको। वाह आगे बेंड पड़ गया है। हाँ क्या करूं एक मिनट। इसका? पाजी 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 नहीं, पापा पापा हुआ ना, थोड़ा रुको, मैं वापस करता हूँ उसको, ठीक। अभी देखो वो बैंड आ रहा है, सही हो रहा है, वो सही हो रहा है, रुको रुको, और एक मंगता है उसको। इससे लन का फुद्दी बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, और एक वो साइड का जो आपका लेफ्ट टेस्टिकल है वो थोड़ा अभी सूजा है, अभी वो अच्छा नहीं दिखेगा, एक साइड सूजा तो दूसरा भी सूजाएंगे, रुको। अभी सही हुआ है, देखो देखो, अभी चेक करो, सही हुआ है, देखो। ये देखो कितना अच्छा हो गया, पूरा खड़ा है जी, पूरा अच्छा एकदम टिप टॉप हो गया। सही हुआ है, टिकटॉक है सही, देखो पूरा। हाँ आ जाओ, एकदम अभी साइकिल बेस्ट हो गया जी। चेक करेंगे, चेक हाँ करेंगे, जी। अभी भी चेक नहीं हुआ, चेक करेंगे, साइकिल पे बैठो, जाएंगे। आप एक बारी कूदो। साइकिल पे बैठो, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, इस साइड, इस साइड। अभी सही आया है, वो सही जगह पे आया है और सब कुछ सही है अभी, और बड़ा भी हुआ है, एक मेरे को दिखता है उस लंबा भी हो गया कुछ, अच्छा, पर उस माइट भी तो पी। हाँ लंबा हो गया, लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। हाँ अभी तो आपको तो, हाँ थोड़ा अभी उसको टेस्ट करना पड़ेगा, रुको टेस्ट करेंगे, आ जाओ। टेस्ट क्यों करना है, किस पे टेस्ट करेंगे हम? दिखाता हूँ, आ जाओ, जो टेस्ट करो। अरे अरे इससे जाम मत मारो, अभी सूझा है वो, अभी उसका मरम्मत किया है। हाँ अच्छा। उसको धूप लगेगा बहुत आपको, स्लोली उधर, स्लोली चलाओ। मेरे दर्द हो रही है। हाँ हाँ स्लो 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 चलाओ। वो आपने जो एक खाया था, जो दवाई खाई थी, वो अभी उसमें कुछ इफेक्ट है उसका? हाँ जी। हाँ इफेक्ट कुछ है उसको? हाँ जी। हाँ जो दवाई खाई थी उस पे कुछ इफेक्ट हुआ? आ जाओ। हाँ जी। जो दवाई खाई थी उस पे कुछ इफेक्ट है, वो अभी भी इफेक्ट है, वो खत्म हो गया? ओह नहीं, खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी थी जी दवाई। हाँ पर वो दवाई से अच्छा था मेरा ट्रीटमेंट। देखा आपने वो ट्रीटमेंट कैसे ठीक करता है चीजें?
आपने मेरे टट्टे बांध दिए। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा ही ट्रीटमेंट है। अभी सब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए वो सब कुछ हो रहा है आपका। अभी पहला वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ था, वो कट गया थी अच्छा। नस। अभी उसको सुजा सुजा के अभी वो अभी सही बन गई है। अभी आपका ब्लड पूरा अच्छा। आएगा। हाँ देखो वो अच्छा। सही आएगा। हाँ हाँ। जो HOA लिखा है साइड पे ये मिटा दे क्यों? ऐसे ही। कान में डंडा मांगता है इनका। नहीं जी ऐसे ही। हाँ, लोगों के इसमें हाथ डाल के आ जाओ आ जाओ। आपका पहला टिक करेंगे सब कुछ, पहला आपका चेक करेंगे चलता है वो तो। You are so wise to pursue that path. It's totally good आजा karma. आजा। ये क्या है? I'm That's so all with right. you. It's kind of how I feel अभी about आ your जाओ ना। art these days. I'm so over. वो ये औरत देखिए अपने, देखो सही तरीके से देखो, तलवार लेके खड़ी हो। उसका भी एक आपकी ट्रीटमेंट, पत्नी? उसका भी ट्रीटमेंट होता है। वो पूरा वो डायरेक्टली काटती है, पर मैंने आपका टिक किया ऑलरेडी। ओए दारू। सब कुछ सब। ऐ जगह मैं पहली बार आया। हाँ बहुत जगह है ये शहर में जहाँ आप पहुँचे भी नहीं है, दुनिया भी नहीं पहुँची है। अच्छा। हाँ ख्वाब है उनका पहुँचने का। ओके। हमारा तो क्या है जी, हमारा काम अच्छा अच्छा। बाथरूम, अच्छा किचन है। ये लिक्विड लाइब्रेरी का इसे दिखाना है आपको। हाँ, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। बाथरूम। रुको रुको 1 मिनट, इधर ही रुको। मैं लॉक एक्चुअली लॉक करता हूँ, नहीं तो कोई आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप एक काम करो, आप ना ये वाले इसमें अंदर जाओ, इसमें अंदर जाओ ना, ओके। और उधर साइड में एक होल है, उसमें देखो डाल के देखो, वो कड़ा जाता है तो अंदर। मैं इस साइड से देखता हूँ, अगर जाओ जाओ चेक करो। देख लो फिर। है होल है। हाँ ये होल में डालो, ये होल में डाल के चेक करो, अंदर जाता है तो। इतना बड़ा नहीं है मेरा। अरे डाल के देखो ना, कड़ा जाता है तो भी मालूम पड़ेगा हो रहा है नहीं हो रहा है आपका कड़ा। देखो डालो। ओके। गया अंदर? एक मिनट। आह, जा रहा है? आह, गया गया। गया चला गया गया। ना? हो गया गया। हो गया। हो अभी गया। तो आपको एक 5 मिनट देता हूँ मैं, आप रुको उधर, करो आपका कुछ करना अच्छा है जी। वो। ओके। आप हाँ अंदर नहीं आना। नहीं नहीं, हम होने के बाद में नीचे आने का। अच्छा ओके। ओके, करो करो। दिस इज लिक्विड लाइब्रेरी, इज HOA बट इसको HOA का रियल मालूम है, उसका उसको मालूम है इसको कैसे चलाना है, सबको दिमाग नहीं। ये वाला बंद हुआ दिखता हैंग आउट प्लेस। This is the HOA's live. The Park Liquid Library. Yeah, Pedro mostly will come 4.0, but we'll do Sabrasari. But I have to talk to him. I cannot guarantee he will come, but तो बात करना पड़ेगा उससे, तो usually आएगा पड़ेगा। But because Keg and I were speaking today and we have decided 4.0 पे हम लोग पहले दिन से ही सबरस के RP स्टार्ट करेंगे। We'll be handling that. वो बात कहाँ से आएगा? राइट, एक्चुअली वी आर करेक्ट। तो ऊपर करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, रियली ब्यूटीफुल।
पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ये कंप्लीट हुआ क्लॉक इन पूरा रेस्ट ही है, वो बार है प्रॉपर क्लॉक इन है ना, ये अंडरग्राउंड है उनकी जगह, अंडरग्राउंड एरिया ऑल्सो। दिखाता हूँ कसिनो भी दिखाता हूँ, उनके अंडरग्राउंड एरिया। लॉगिन कंप्लीट। क्या गिर गया ऊपर से? गिरा जी मैं पानी में। मैंने कम कर दिया, बड़ा मजा आया। हो गया ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एम्प्टी हो गया ना? एम्प्टी हो गया। अच्छा है, अभी भी काम चल रहा है लिक्विड लाइब्रेरी में। देखो ये वाला बुक रीड करो, देखो ये वाले बुक पे लिखा है, वो जो मैंने आपको दवाई दी थी ना, वो ये बुक पे है, किस टॉपिक पे है? ये वो आपको दवाई दी थी ना, वो उसका बुक है। ये जो आपको बीमारी हुई ना, उसके ऊपर ये बुक है। देखो ये दो बुक है, ग्रीन वाला और ये रेड वाला। और जो दूसरा मैंने वो जो आपका इलाज किया ना, जो आपको मालूम है वो सुजा के, वो ये बुक पे लिखा है। देखो वो वाले ब्लू वाले बुक पे लिखा है कि अगर वो नहीं सक्सीड हुआ तो वो करना मांगता है, वो वाला। वो सब इधर ये लाइब्रेरी में है सब उसका, इसलिए लेके आया था मैं आपको दिखाने के लिए। ये लाइब्रेरी में सब कुछ लिख के रखा है। हाय हाइब्रिड, हाउ आर यू? लेकिन अगर इनमें से कहीं पे गलत लिखा हुआ तो? नहीं, ये पुरानी बुक है, टेस्टेड फॉर्मूलाज है, कुछ गलत नहीं, सब कुछ सही है इसमें। हाँ डेंजर। हाँ, ये पीछे का दरवाजा है। जब आपका एक बार सब कुछ ठीक करने के बाद इधर से पीछे से निकालने का आपको, और गाड़ी में बिठा के भेजना है। भाई कभी क्या होता है, फेल भी होता है। थोड़े लोग ना उतने ये नहीं होते, क्या उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, विल पावर प्लस उधर का पावर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो वो ट्रीटमेंट के टाइम ना उनका वो जो बल्ले है ना, वो उनका पानी हो जाता है। आपका सही है, आपका प्रॉपर हो गया अभी। हाँ सही हो गया। अभी चले सोने जाना है आपको? बहुत रात होगी। हाँ आ जाओ, और एक कुछ दिखाता हूँ, बाद में सोने को जाएंगे। ओके। और नेक्स्ट अपडेट में होगा लेजेंड, there's a bug of the old pillbox so they can't do RP there. People fall out of this, like you know, आप मेरे लिए कोई लड़की देखो ना। लड़की अभी आप लोग किसी लड़की से पूछ सकते थे। पहला आप तो पहला आप पहले तो ये थे ना, क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट लाने बोल रहे हो मेरे को? नहीं इम्पोर्टेंट है पहले, क्योंकि कड़ा भी नहीं हो रहा था कुछ भी। लड़की के साथ बात कैसे करेगा? अभी तो आप ये हो गया, रिफ्रेश हो गया। अभी वापस देखो आगे देखो, मस्त लड़कियां आ रही है। देखो हेलो बोलो, हाय। पीछे वाले को हेलो बोलो। हेलो। वो ये देख रही है, इसने देखा, लास्ट वाली ने देखा आपका गाना। ये क्या कर रहा है? वो केस डालेगी मोलेस्टेशन का। भाग गई आपसे। अरे अब बहुत हॉनी हो। अब डायरेक्टली उसको ये करते हो। देखो वो भाग गई। आपने बोला हंसी वो। आजा चलो दूसरी जगह चलो। Sorry wouldn't kill you. सॉरी बोलने को बोला है उसने आपको? सॉरी बोला क्या आपने उसको? अच्छा, किसको? वो लड़की ने अभी बोला ना, सॉरी बोला तो आपका क्या जाएगा बोल के उसने बोला। अच्छा ओके। कभी लोगों को सॉरी बोलने को इतना तंग होता है कि उनका ईगो हर्ट होता है ना। देखो लड़की ने आपको मुंह पे ही बोला, सॉरी बोला तो क्या जाएगा आपका? मैं बोल दूंगा सॉरी। हाँ चलो साइकिल लेके आ जाओ जल्दी।
चलो जी। I'm hoping to do yoga outside this weekend. Hopefully it'll be nice out. आपको पता है मेरी हाँ। 4 गर्लफ्रेंडें बन चुकी है। 4 ते- गर्लफ्रेंड है। हाँ उनको पता है कि वो आपका निन्नू काम नहीं करता था बिल्कुल। नहीं, तब तो काम करता था जी, उसके बाद से बनी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी चांस है आपको, आप अभी ट्विटर पे भी डाल सकते हो मेरा नुन्नू काम करता है, कोई भी किसी को भी इस्तेमाल करना है तो आके चेक करो बोल के। मैं अभी जो मैंने वो हथौड़ा ट्रीटमेंट दिया है ना आपको, हथौड़ा ट्रीटमेंट, बड़े हाँ जी। हथौड़ा ट्रीटमेंट, उससे अभी आपका जो एक 5-10 किलो भी उसको टाई करके ना आप उसको उठा सकेंगे, इतना उसमें पावर है अभी। हाँ ओ माय गॉड, फिर तो मैं बड़ी बड़ी बुंडे लूंगा। हाँ पापा पापा अभी आप पापा पापा क्या कर रहे हो, अभी वो खड़ा हो गया, आपको पापा बनने का टाइम आ चुका है। मैं अच्छा, क्या अब पूछना चाह रहा हूँ? देखो एक काम करो, अभी आप साइकिल पे हाँ बैठो। जी। अच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब आप जवान होते थे आपको भी तो होता होगा ना अंदर से कि- एक मिनट, ये ले लो, अच्छा ये ले लो, और आपके GoPro। साइकिल, हाँ ये ले लो, साइकिल पे बैठो, GoPixel। साइकिल पे ओके, बैठो और उसको इसको अभी यूज इस्तेमाल करूँ? करो। किया क्या क्या आया? लिखूँ इस पे? नाम लिखो आपका, लिखना है? लर्न, सॉरी लर्न नहीं, कड़ा लर्न। लिख दिया जी। हाँ अभी आप जाओ, एक राउंड मार के आओ, घूमने को जाओ, 5 मिनट के बाद आ जाओ, घूमने को जाओ अभी। ओके हाँ ओके ओके ओके। ओ मैं नहीं कर सकता हूँ ये, ओ फक, बैड लक गाइस। Anyway, I'll do some. क्या हुआ? हाय होगा। Hi guys.
देखेंगे। अरे क्या हुआ इसका, क्यों नहीं आ रहा है कैमरा? आना मांगता था इसने। इसने लॉग आउट किया क्या? ओह फक, दीपक ने छोड़ दिया क्या सिटी? दीपक ने सिटी छोड़ दिया दिखता है मेरे को। होने के बाद भी आना मांगता था। ने सिटी छोड़ दी क्या? नहीं नहीं, साइकिल पे है वो अभी भी, तो उसने वो नाम सही नहीं डाला है। ये तो साइकिल पे नहीं लगता है, वो मिस्टेक किया हम लोग, गाड़ी पे लगाना था। पानी दो वापस, पानी दो। नंबर नहीं है मेरे पास। Casino वापस जा। Casino is open now, but you cannot do any transactions. इधर बंद रखा है। Hello. Hello, sir. I want to ask about something. So there is my friend Kali Rao. He's not coming into the city, and we shared a house. He purchased, and he shared a key with me. Yeah. Right. And now he's not coming. So he didn't pay the taxes and all of his car and all the stuff he bought. So that house I can't access anymore, and the parking also. So I want to remove the key of that house No, you can't. from What my you side. need to do is meet Mr. Nez from DOJ. Tell him which everything. He will tell you the process of it, how to do it. Okay. Thank you, sir. Thank you. ए इधर आ जाओ, साइकिल उधर रुको रुको, इधर आ जाओ। साइकिल उधर ही रखो, आपके लिए देखो कैसी मस्त गाड़ी लाया मैंने, बैठो इसमें। वाह, बड़ी अच्छी गाड़ी है जी। बैठो बैठो। सेक्स। आवाज हुई हुई हुई। चाबी मिला? हाँ जी मिला, मैं चलाऊं? हेलो। वाह जी वाह। हाँ अभी आ जाओ, गाड़ी चलाओ, राउंड को जाओ अभी। ओके आप? हाँ जाओ। अब साइड पे बैठू ना? नहीं आप जाओ, घूम के आ जाओ। तो मैं वापिस आ रहा हूँ, मैं अभी नहीं आया। घूमने को जाओ अभी पूरे सिटी। जाओ पूरा सिटी घूमो, स्टाइल मारो, दिखाओ सबको। अच्छा, घूमने के बाद मैं सो जाऊं या फिर आना है? घूमने के टाइम सोने को जाता है तभी ना, अब एक 5-10 मिनट घूमो, उसके बाद सोने को जाता है तभी मेरे को फोन करो, और गाड़ी को इम्पाउंड करो, सो दैट इम्पाउंड लोग आके लेके जाने के लिए उसको, वो लोग मेरे गराज में रखेंगे उसको बाद में। ओके याद से इम्पाउंड करो उसको, पर मेरे को फोन करो जाने से पहले। अभी घूमने को जाओ, घूमो। कोई लड़की को उठाए तो which most of the people Rahul you are talking about? NoPixel we have people. Now we have 119 people. Otherwise there are more than 119 people. We have our people. Which people left us? Most of the people. I don't know which most people you are talking about. NoPixel server is open for everyone. So people who go, people come, people go, people come. So what's the problem? Which people you are talking about? हाँ अभी आया उसका लर्न। आरामी गाड़ी कैसे चलाता है देखेंगे।
So this is the thing, guys. For racing, this will be the thing. Because all the racing cars will use the cameras. People will watch from here and they'll bet here. जा रहा है कहाँ जा रहा है देखो किधर जा रहा है काफू आ गया थोड़ा लोडिंग का कुछ हो रहा है मैंने अभी कसिनो का रोल लिया ना चुप कोर्ट हाउस गया fuck इधर रोड इज लोडिंग Okay, anyway, we'll finish this now only. But this is what I wanted to show you all. That ऐसे बहुत चीज़ें हैं ये कुछ नहीं और बहुत है दूसरे भी है also the drone last time then there is motion sensors सब कुछ दिखाएंगे वो लोग अभी digital then virtuality knows it very well they'll push it like you know those things will be seen anyway guys we'll finish the stream for today we'll have a chat for 5 minutes दीपक फोन मार रहा है क्या तो बाय बोले फोन भी नहीं लग रहा है यस गाइस तो पूछो अभी कुछ पूछना है तो 5 मिनट है हमारे पास विल डू सम टॉकिंग आफ्टर दैट आई एम गोइंग गाइस आई हैव टू कुक फूड नाउ खाना बनाना है I'm good, Atul. I'm good. Today we had a good time. SI Bakshudi. Full time Bakshudi. Gangs. The new things for gangs. Yeah. There's a new thing coming for gangs. That yes, we are reducing the gangs and picking the gangs which doesn't do good RP. That's the new thing. No, guys. There's an update coming for them. There are new heists and new bank robberies. नए अपडेट में बहुत कुछ आ रहा है उनके लिए वो चीज़ बट सिविलियन के लिए भी आ रहा है उनके लिए वो चीज़ें हैं 6 new heists are coming. EMS has a lot of things inside it. You all know at least you all have empty syringes and all those things. The heroin is filled and all those. But many things for EMS. And there's a new RP for EMS which is come is insurance RP. The insurance now the insurance company will be launched. They will be sending people to do checkup and all. Your reports are very important now. So they'll be claiming insurance and all those things. They both EMS के लिए एक बड़ा RP आ रहा है. And we are going step by step. First, take care of the police, the gangs. नहीं सावंत ये क्या सबर वैसा नहीं है तो 3 दिन मैक्सिमम बंद होता है 2 दिन शिफ्ट करने के लिए टेस्टिंग के लिए 2 दिन बंद होगा 4.0 लॉन्च 4.0 ऐसा नहीं बंद करके काम नहीं करते 4.0 का काम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी वो नेक्स्ट 5 महीने में रेडी करेंगे वो लोग इसको ख़त्म करेंगे और 2 दिन में 4.0 आएगा ऐसा चीज़ ज़्यादा टाइम नहीं कोई रुकता है नो पिक्सल है उनके 25-30 डेवलपर काम करते हैं नहीं आती है
Kyle doesn't have. New PDF the outfits are also coming. Civilian RP gets everything. I'll be cooking. I have some. I have to cook rice, main thing. Curry, and I have some nice kingfish curry. Some chicken. I have to cook rice only. I'll check the DMs. Regular streamer. I don't know when they are coming, but I think every day there are updates coming, guys. हमको ही पता नहीं होता है क्या update, हमको बाद में पता चलता है. Every day updates आते हैं. But बड़े updates हाँ वो announcement पे आते हैं, वो बड़े updates है. But वो पिक्सल एवरीडे 10-15 अपडेट आते हैं सर्वर पे. किधर 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 वो किसका हमको भी मालूम. वो जो आरपी करता है उसको मालूम होता है, हमको भी मालूम नहीं होता है. वी आर नॉट लाइक अदर सर्वर्स. एक अपडेट आया और बड़ा अनाउंसमेंट करके उसको बड़ा करके बेच दिया, वैसा नहीं है. जो आते हैं हमारे अपडेट्स वो बड़े ही है, पर हमको मालूम किसको मालूम भी नहीं होते. बट जो बड़ा अपडेट आता है तो बहुत बड़ा अपडेट होता है. जैसे वो like you know like NoPixel is completely different with other things. No, Rust server I don't think so we'll get here. Why we should get NoPixel Rust server? Rust server anybody can. Like, there are better Rust servers also might be. Yeah. Army? नहीं वैसा कुछ नहीं. Connection failed. That is not of NoPixel's problem. That is your ISP problems. You cannot download the resources. इन दोनों ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से इंटरनेट लाइन्स ISP से फक अप है. बट कम EMS का भी आ सकता है आउटफिट. जैसे उधर फॉरेन सर्वर पे अगर EMS अच्छा आरपी कर रहा है और उनका कुछ है ज़्यादा कुछ वो आएगा. सोलो आरपी तो आएगा. माइट भी नेक्स्ट अपडेट में कस्टम स्प्रेज आएंगे, बट वी वोंट गिव देम. वी आर डन विथ ऑल ऑफ देम. नाउ वी विल गिव द स्प्रेज ओनली इन 4.0 एंड दैट आल्सो व्हाट विच गैंग्स आर सिलेक्टेड फॉर 4.0 उनको ही मिलेगा. DOJ आरपी चल रही है ना. आज नहीं देखा क्या प्रंशु? पूरा टाइम DOJ आरपी चल रही थी. SVRP count. Very nice, very good. PD कैरेक्टर फोकस उस पर होना होता है. DOJ का एक केस खत्म होने तो by this weekend I will get the new character of mine. I'm good at SSP. NPI मैच है ना, कल देखेंगे, फाइनल देखेंगे. मैंने देखा भी नहीं वैलोरेंट का क्या चल रहा है. लेट्स सी हु विंस वैलोरेंट. गाइस वी वांट फीडबैक्स फ्रॉम यू ऑल. वी आर टेकिंग फीडबैक्स. देखो हम लोग 2 फीडबैक्स ले रहे हैं आप लोगों से. 4.0 पे हमको बहुत चीज़ें चेंज करना है. तो हम 2 फीडबैक. एक है इफ़ यू ऑल नो एनी बिग स्ट्रीमर्स हु आर नॉट प्लेइंग आरपी. हाँ देखो याद रखो, ये आरपी नहीं खेल रहे हो. वो आरपी खेलता था पहला कुछ भी, पर आरपी नहीं खेल रहा मोस्टली. हु इज प्लेइंग अदर गेम्स, कंटेंट क्रिएटर,
वैसे कुछ लोग हैं तो आप लोग हमको फोरम पे बता सकते हो कि ये लोगों को मौका दे दो, हम लोग उनको अप्रोच करके बोलेंगे आ जाओ नो पिक्सल के लोग, उनके लिए कुछ जगह बनाएंगे इधर. So we want to get fresh people into RP. Whatever, they might be playing other games, so they might be just influencers, vloggers. वो लोग जो भी आप लोग को कुछ मालूम है तो फोरम पे हमको बताओ कि ये आदमी को आप लोग अप्रोच कर सकते, उसका चैनल का नाम दे दो. वो कुछ आप उसको पहचानते हैं तो भी आप उसको बता सकते हो, वो भी कर सकते हो. पर नहीं पहचानते हैं तो भी आप हमको उनको डिटेल्स दे दो, सो दैट वी कैन अप्रोच टू दैट पर्सन. इफ यू थिंक दैट गाय कैन बी अ गुड आरपी गाय, हम लोग सिखाएंगे उनको. We will teach them, give them opportunity to become good RP players and all this and everything. DOC RP में स्टार्ट हुआ है ना, पर मेरे को मालूम नहीं वो लोग आते नहीं आते, वो देखना है. Yeah, you can even put Hydroflix thing. Yeah, we were thinking to talk to Dynamo also, telling him to join. If he wants to continue RP, we can't force him to join. We can invite him also. We were thinking to tell him to come and play here and all this. To do that. Pedro will come later, guys. Pedro won't come now. Yeah, we're thinking to. If you all have ideas, please put it into forum. You know, we can invite people who have never played RP and who wants to try RP and all this. Correctly. MG नहीं आ रहा है, वो मिला मेरे को मुंबई में. जब आप लास्ट टाइम हम लोग मुंबई में आया था मिलने को हथौड़ा के लिए सबको. ही इज बिजी इन रियल लाइफ दैट, हैंडलिंग हिज बिजनेस, ही ट्रैवल्स ऑल ओवर. वी शुड हाइड्रा, वी कैन कॉन्टैक्ट. नहीं, डैडी कूल, पोटैटो, ये लोग सब ना वो 4.0 पे हम बुलाएंगे उनको, क्योंकि वो अभी नहीं आएंगे, क्योंकि दे हैव प्लेड आरपी बिफोर ऑल्सो. So they have already taken break on RP. They are RP players also. So उनको हम लोग बुलाएंगे 4.0 anyway. पर अभी हमको like you know we want to get more people influence on RP. Because इतनी चीज़ें शहर में वो लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं. Because these other people are not bothered to you know explore RP. So we want new guys to come and explore RPs on those things. Yeah, Tanmay but also is a good choice. But he's you know he's a big content. He won't come simple like that. He will but give him invitation. 6 Warrior को भी 4.0 पे बुलाएंगे. फोरम पे टिकट खोलो, @ मेरा नाम डालो उधर. Forums, you all will have to join forums guide. I'll give you the link of forum. आप लोगों को लिंक देता हूँ फोरम का. You all have to join that. I'll give you all the link. No, we don't want RP players, guys. Understand that. We want RP players also, but we are focusing right now is non-RP players. जो RP नहीं खेलते कि लाइक कभी भी और कुछ नहीं, पर बड़े क्रिएटिव लोग हैं जो लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, so that they can show more people in India, the viewership increases, और लोग देखेंगे RP को. वो है पूरा ये.
Yeah, you can give feedback also on forum. Yeah, correct, Fred. Those things. Just give us the suggestion forum. इधर इतने भूल जाएगा ये चीज़. उधर फोरम पे बताएगा तो हम लोग एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे उनको अप्रोच कर सकते हैं विद प्रॉपर यू नो बात करके उनको समझा के भी, सो इट बिकम्स बेटर फ्रॉम दैट साइड. Yeah, anyway guys, now let's finish our stream. Love you all, take care, be safe, be good boys and girls. As excuse you, say Rishabh. See you guys, take care, and thank you for watching a great stream. Hope you all learned some things from that, and see you all tomorrow night. Mostly I'll be streaming again for tomorrow's case also. Good night, good night, good night, good night. RR mat karo, Fonchi, good night, good night, FS, good night, Hybrid, good night, everyone. And be good people. अरे मेयर का आरपी अच्छा याद किया गौरव ने. I also have to give a press to the LSBN about mayor's RP, and I have to sit and start structuring it. Good night guys, good night, love you all, good night. Right in front of me, I wonder why you look me up and down. You got my head spinning round and round. The girls want what you have, but I want it real bad, yeah. You don't know the things that I do to you, and bring your other friend, 'cause baby he'll get it too. Push my head down, take me by the throat now. When I'm all done with you, you forget all about her. Right here, go turn your ass around. The door is right over there. You know he wants me. You're looking crazy. I got the things he likes. He wants to buy. Yeah, I'll get him right. You don't know the things that I'll do to you, and bring your other friend, 'cause baby he'll get it too. Push my head down, take me by the throat now. When I'm all done with you, you'll